Madhu, sweetie, please get people inside. So all our dignitaries are here. So with all your permission, can we start now? Yeah. So good morning, everyone. On behalf of all the communities, you see many of them here, all our partners who are here, and all the experts who are here, and CIFA team. We are all here also. It is my privilege and honor to welcome each one of you personally because this journey would not have been possible without you. Today, we are not only culminating the 7-year project, which has been supported by Water for Women, Department of Foreign Affairs and Trade for the last 7 years on gender inclusive, climate resilient WASH. And you know, WASH is a very difficult issue. Leela Darji was telling me in the morning, we begin with WASH, but it is so vast. So I'm very happy that we are culminating today. But I'm happy not because we are closing the project or ending, but because this is the marking of a new journey. And that is why we have a very august audience and very esteemed panelists with whom we would like to deliberate today on. There are many things we've done over the last 7 years in both cities of Bhubaneswar and Jaipur. What are the key things which we should be taken forward? What are the key things which you will enable us and the communities to take forward? What are the opportunities and entry points in the government, in the private sector, we can all leverage together? And this project is very unique in one thing. This is a collaboration between the government, it has been a collaboration between the community, it has been a collaboration between technical bilateral partners and CSOs. There is a multi-stakeholder forum in both cities, which is which has a lot of members who basically are not only WASH partners, they are climate partners, they are government partners, they are disaster partners, and they have all enabled what we have been able to present today. You will also see a lot of photographs being presented. This is just a glimpse of the work we have done with the communities, and we have presented them just to share how the community has enabled itself. There are persons with disabilities, there are trans people, there are diverse genders, there are women's SHG groups who have actually led the way, and organizations like CFAR, WaterAid, and the partners have steered this process very, very gradually. I want to take this opportunity and just 2 more minutes to actually share 2 or 3 key things. And one is that with urban design, governance, and planning, we have also used digital technologies. If you go out of this hall during tea, you will see 2 kiosks where we have used the community radio for WASH. It has been used across development programs, it has been used for nutrition, it has been used for many things. But to enable the last voice to be heard, is that what matters? We have also done a lot of work on menstrual hygiene. All CSOs, all partners do. It's a big gender issue. The difference in what we have done is that we have also looked at the entire value chain and looked at waste management solutions, community led, government enabled, partner enabled, which can actually be replicated and taken forward. We also have a special thing which we have done, which is monitoring by the community of WASH. You'll see Sani Wall at the back. There is a big Sandy. It shows Sani Wall. What is Sani Wall? Sani Wall is a community monitoring system which has been a collaboration between the urban local bodies and the communities where they are tracking WASH services. These are some of the key elements which built this program. Everything has been enabled by each one of you. So as the day progresses, you will have 5 panels on different issues. We have panels on governance. We are looking at children. We have panels on livelihoods. We have panels on inclusive WASH. Everything what we have heard before. But the important part is that we all want to hear from you to immerse in this experience and to share what is it that we all should take forward as a group, as a collective. So do please treat this
dissemination as your own. Please help us. Please support us. Please listen to the community. Please dream together with us. Thank you so much. I will now request the panelists to come onto the stage. But before that, we have a small opening montage. It is a 7-year, it's a documentation of the 7-year of journey led by Meghna Sahu, who is the first transgender woman who has actually been a part of this project. I'm extremely honored to welcome her, but I don't think she has been able to come because she must be on her way given the Delhi traffic. But Meghna, I am thinking of you. Meghna is right there. So Meghna, I was just talking about how you have been the first person to start this project. And we are now going to showcase a small video. It's a almost 2.5 seconds. Danny, can we have the video, please? And can the lights be switched off? पीछे मुड़कर जब प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय को याद करती हूँ तो एक एहसास है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम सब लोग साथ मिलके खड़े होते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपने अधिकार को समझते हैं, सही सवाल पूछते हैं और उसको सक्रिय रूप से उसको तलाश करते हैं, तो बदलाव जरूर होता है। मैं गलत नहीं थी। 2018 में जब हमारे बातें सुनने वाला कोई नहीं था और ऐसा लगता था कि हमारी कोई वजूद ही नहीं है, तब ये स्थिति साफ तौर पर उस वक्त के हालात को दर्शा रही थी। पर निराश होने की बजाय हमने यानी मैं, सीफार, यहाँ तक कि सरकार से जुड़ी कई अन्य लोगों में सवाल पूछना और सोचना शुरू की और फिर हम साथ मिलकर कभी साथ और कभी कभी अलग अलग रास्ते पर एक बात साफ थी, हम सबका लक्ष्य एक ही था। यहाँ एक और सरकारी स्तर पर नीतियां और दिशा निर्देशिका जारी किया गया और फिर उसके बाद ट्रेनिंग, बेहतर नियम और टेक्नोलॉजी के अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर नागरिक समाज और सामुदायिक संगठन के लोगों ने ध्यान में रखते हुए अलग अलग ह्यूमन सेंट्रिक बदलाव लाने वाले प्रयास के उदाहरण प्रस्तुत किए। बदलाव लाने और कुछ कर गुजरने की इस भावना से प्रेरित होकर उनके बदलाव आया।
Thank you, Rani. So we now begin the day with a formal presentation on the endline evaluation of CFAR. But before we invite the panelists on stage, may I request Akhila ji to come onto the stage because she will be the anchor for this presentation with Mr. Amod Khanna. So may I please welcome Mr. Amod Khanna onto the stage just to introduce Mr. Khanna. He's a development professional with over 35 years of experience, an expert in water management, an expert in governance, and an expert who's working across 15 states. He comes from IPE Global, who has done the endline evaluation. May I also invite our esteemed panelists on stage, Dr. Debilina Kundu, from the National Institute of Urban Affairs. Dr. Kundu is an expert in development studies for over 25 years. She has been associated with CFAR since the last project. She has worked with many global organizations, and she's a prolific writer and editor, and we are very happy to have Debilina with us today. Miss Emily Mego, First Secretary, Development Australian High Commission, New Delhi. Miss Emily joined the Department of Foreign Affairs and Trade in 2022 and started as the First Secretary, Development at the Australian High Commission in April 24 in Delhi. Previously, she worked at international development contractor DT Global as program manager, and prior to that, Oxfam Australia in program management, operations, and fundraising. She studied Masters of International Development and has over 10 years of experience in the sector. Professor Jagan Shah. Professor Shah is the CEO of InfraVision. His previous role includes Senior Advisor at the World Bank and Senior Infrastructure Advisor in the UK's Department for International Development. As Director, National Institute of Urban Affairs, he co-created the Smart Cities Mission and incubated centers for digital governance, sanitation, and climate adaptations. He has designed AFD's city investments to innovate, integrate, and sustain program and CDRI's infrastructure for Resilient Island States facility and led the preparation of the draft master plan for Delhi in 2041. Natasha hasn't come. We are expecting Dr. Natasha Patel. I think she will be on her way. So Dr. Amod Khanna, would you like to sit there or would you like to? Yeah, presentation Danny will cue. Good morning, everybody, and thank you for inviting, for making this presentation. Before I begin, let me just make it sort of a disclaimer that in evaluating a 7-year project, which has got so many facets to it, which is the very nature of it keeps evolving. It keeps iterating, and with an organization which has a firm belief in its approach, it has been an extremely challenging task. So the disclaimer is, whatever is good is mine, whatever good is not mine. So we are trying to do our best. Thank you very much. Can you go to the next slide? Can you go to the next slide, please? Yeah, this is the layout of the presentation. I'll be talking about the objectives, the methodology, the key findings and learnings, and what we suggest as a way forward. So these have been our major areas of evaluation. Next, please. Let's look at the objectives of the evaluation. Next. The objectives, can you go to the next slide, please? Can you go to the next? Yeah, yes, this one. You see, the project basically was to provide universal access of wash to households in informal settlement. This is what the target or the objective was. And the approach was to
the pathway was that we'll go for a climate resilient wash. You see, the 7-year project, the first phase was largely in wash, and then we moved ahead and evolved into providing of a climate resilient wash facilities. The pathway was to build capacities of people, to improve wash governance, and to adopt the JETC principle, which is gender equality, disability, and social inclusion principles into this. So in a 7-year project, the challenge was then to make an impact assessment. So our remit was that we make attempt and how much has this project impacted these communities and these households. So that was the challenge to us. Can you go to the next slide, please? And how we went about doing it was, next slide, please. We had there was a mixed approach where we had both quantitative methods also, where we went for a survey, household survey, and also qualitative, where we went and talked to key stakeholders. We also conducted focus group discussions, and we adopted a framework which is largely accepted in evaluation, is relevance, equity, efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. So we would try to evaluate around these parameters. Now, this is a challenge because these can be, we can look at it from the evaluation point of view, whether then we have to see whether this is relevant or this goes into sustainability or this is part of effectiveness. So this back and forth on which part fits into which particular parameter was a real challenge, because things have evolved to such a level that was very difficult to say that this is efficiency or this is effectiveness. But we navigated this and we said, okay, let's try, and we pick up one stand at a time and do it. This was the challenge. Next, please. So we conducted a survey of 1,107 households. We conducted around 28 key interviews, and we conducted about 31 focus group discussions. This is divided into both the cities. And we had, if you look at the list, the people that we interviewed and people that we contacted, there's a large number of stakeholders, because that's the stakeholders the project worked with. The project also involved these stakeholders into decision-making processes. And this is how we came around to coming to broad conclusions and coming out with recommendations. Next, please. So this is how we did. And what did we find? Next, please. So I'll go for the findings are organized in the 5 parameters of relevance, equity, efficiency, effectiveness, impact, sustainability. So I'll take it one by one. So relevance for us was, what is the relevance of this particular project into the larger context? So the larger context was urban areas are growing, the urban growth rate is very high. As urban areas are growing, so are going the informal settlements. So that itself was the context, and informal settlements with overcrowding, with poor infrastructure for supply of water, with practices like open defecation quite a bit. So this particular project was rooted in that context. And not only that, we also found that the project is not only looking after water and toilets, it's also looking after drainage, liquid waste disposal, solid waste disposal. They're also looking at menstrual hygiene management. They're also looking at hand washing practices. So in one sense, the project was quite comprehensive in its scope. So it was not looking at one or few parts of wash, it was looking as the wash as in sector itself. We found the relevance to be high. We also found that, I can't read this. It's coming in white. Sorry, it comes in white, so I can't read it. Yeah, then we looked at how the project was implemented. So there was, and this is one of the many binaries that CIFAR in its project challenged, and also actually I would say they have gone beyond and pushed the envelope much beyond. The general belief is that there is a set of right holders, they are the ones who will demand, and there are a set of duty bearers who will supply. But the project actually broke this binary and said, no, the right holders are also duty bearers, and the duty bearers also have rights, and then tried to merge them. And then they said, this is the system that we are trying to strengthen. So as I'm speaking, it sounds very simplistic, but it's very difficult when you're out in the field, that the community institution also works as a duty bearer and is also a right holder, because it is also
engaging with the community and also trying to mobilize the community, also engaging with the government and placing their demand. Similarly, the the duty bearers are also supplying, and they're also being part of the decision-making process. So the whole thing moves on, and this is where we found the institutional framework to be very, very relevant, because there are not enough institutional frameworks within an urban setting which are dealing with wash sector as such. There are the number of institutions are very specialized and less. And here we have a network of institutions which we found to be quite relevant into the context of the wash sector itself. In terms of alignment with government policies, yes, we have a national urban sanitation policy. It was the alignment with the national urban sanitation policy. We looked at each component was high, and also government programs like Amrut and Swachh Bharat Mission Urban, and also Smart City. These were all part of the program that the project also addressed and also converged with at certain points. In terms of SDG goals, yes, there is SDG 6, which is to clean water and sanitation, SDG 5 for gender equality, SDG 11 for sustainable cities, SDG 13 for climate action. All these SDGs were being addressed by the project. So in the end, we found that the project by itself is very relevant, not only for the wash sector, it is relevant for the urban sector, it's also relevant for the climate sector. Can you move on to the next? Yeah. So in terms of effectiveness, how much did the project was able to cover? And we found that a lot of things, the way we looked at it, we said, okay, what has happened to the access? What has happened to, once the infrastructure is in place, is it being used? And is the service that we are getting from the infrastructure, is it of quality? And whether there is, what about the climate hazards? Are these being addressed as part of the project also? So what we found in terms of access of infrastructure, more than 90% of households, in fact, more than 95% of the households now have a piped water supply within their premises. 9 out of 10 households have a toilet within their premises. So that's two big, major parameters that have been covered. And that's also an indicator of the effectiveness of the project. Other indicators in terms of hand washing, more than 50% of households have got hand washing stations within their household premises. 8 out of 10 households said yes, there are in their location, wherever they are located, the drainage is made. That's another major achievement that has happened. In terms of solid waste management, more than 80% of households are covered with the some mechanism of collection of solid waste. And we also found that more than 96% of the users were using sanitary products, which are being made within which are organic sanitary products. One of the stalls you can see with part of the pad bank. So these infrastructures were created. In terms of usage, we found the usage also to be very, very high, since the water supply was to a large number of households was 24/7. All the households were getting at least water once a day, when compared to what just saw the water supply, which was once a day, that too in the evening for a very limited period of time. All the households, more than 90% of I think 92% of the households said the water supply is sufficient. So access was there, usage were also high. So all these factors were also coming in. In terms of quality, in terms of quality of water, yes, that was very high. 80% of the household reported it was good. There were also hand washing practices were also being practiced, because this availability of soap and water was there, along with the hand washing station. Solid waste, talked about it. During climate hazards, yes, there was an issue, because the infrastructure was getting damaged, which in terms of design and other factors had improved. The water supply was ensured during and post hazards. So was toilet facilities were also available during and post hazards. Those things were also happening. Can we go to the next, please? In terms of efficiency, what you see on this side are all the factors that we have been found doing quite well. So we have used the color green to say it's just a color, doesn't mean anything else, just to distinguish. When I say doing well, that means the coverage and its usage is above 75% of what we had surveyed. The yellow ones are where we found things have happened, but they need to be
slightly given a bit more push, which is largely in terms of desludging of toilets. Yes, it is happening, but it is not happening to that level. And also hand washing station are in the household, but it needs to increase much more than what it is. These are the red ones where we think we need to do a bit more. One of them is 24/7 water supply to all the households, which is really there. And the responsibility of community in household, in management of drainage management by households. That was one factor we found. More and more households should be involved in this. Next, please. If we look in terms of sustainability, we found the fact that access is there, the usage is there, and the way it has been designed for persons with disability and the way transgenders have been included is making it sustainable. Having said that, we're also saying that why do we first go for a toilet, then we break it, modify it, and then we make it for a person with disability, then we break it and modify, then we make it climate resilient. We are saying if we have universal designs, which are taking care of all these things, then the sustainability will be high, because for a household to go and modify it requires cost. And every time there's a cost, many households may not adopt it. So we are, in a way, also proposing very strongly for universal designs of toilet. That is where people will have to put their heads together and come up with that. We're also saying that in terms of the Sani-Clemmy wall that we see, it was identified as a game changer. We have also identified as a factor which has made a major changes in the way community looks at wash and the way community is doing it. But Sani-Clemmy wall is being facilitated and a lot of it is being, I would say, facilitated and supported by the project itself. The question is, what happens once the project starts withdrawing? Will the Sani-Clemmy wall will have the same level of intensity and the same level at which it is being now? Because the data here is being used to make decisions by the different community institutions that are there. So that's one issue that we have flagged up that we need to look at it in. We're also saying that in terms of benefits, yes, we are saying the community has recognized wash as an issue of convenience. Yes, it is giving them a lot of convenience. It is saving their time. But the understanding that it is leading to as a determinant of health, it improves health, it leads to dignity, it improves my livelihood. That connects need to be made, and that connect needs to be made by every household for it to be sustainable. Only then it will continue far. In terms of institutions that have come in, we see that there is a multi-stakeholder forum, there's a community management committee, and then there is a single window forum. All these are facilitated by the project. Question is, will they last after the project? Because these have not been networked. If they are networked and then there is also recognized by the mainstream formal system, then the likelihood of these institutions continuing will be much higher. In terms of impact, can we go to the next? Most of it I have talked about impacts. Can you move to? This is enhancing access to water, sanitation facilities. I have talked about this, and promoting hygiene practices. Can we go to the next? The drainage system, the waste segregation system has also been adopted by the households are doing waste segregation at the household level, and then its collection is by the municipal authority. And also the gender disability. I'll do a bit of on equity. Next, please. Just give me one additional minute. In terms of impact, we found the designs have been inclusive in terms of whatever infrastructure has been created, especially in terms of toilets and drainage. That's an inclusive design, and we've got lots of evidence to show it here. The institutions are also inclusive. The representation of marginalized groups, the representation of all genders, the representation of persons with disability in institutions and in decision making have made the whole process quite inclusive. Can we go to the next, please? The next. So what do we learn? Well, first, like I've said, breaking binaries. One example, I said you broke the binary between the duty bearer and right holder. Going beyond just two genders, we are talking about genders here. And not only that, we are also talking about intersectionalities, which is a real challenge, because what happens to a woman who belongs to a scheduled caste, who's also a person with disability? How does she is able to access wash services? That is what we have been making on. I just said Sani-Clemmy wall has been a game changer.
Another important factor was micro planning, which involved the entire community and was the single biggest factor in getting everybody involved, not only in designing, but also in executing these wash services and wash infrastructure. And which is also related to the community-led reliance, because these designs were localized, were contextualized, and led to developing infrastructure and methods of community resilience at each informal settlement level. And multi-stakeholder forums for convergence, because the choice before the project was either they run around different multi-stakeholders and try to bring coordination, or they bring everyone together and let's see if we can make a decision which suits the community and which suits each of their agenda. So I think the second option that was adopted for making these multi-stakeholder forums had been quite significant, have been quite actually a learning where it bringing different stakeholders into the same page and also getting them to work. Next, please. I'll not go through the recommendations because I'll just jump to the last slide, which is way forward. Yeah, can you just go to the next? I'll just explain the recommendations have been placed into three categories. Some are we called work. Work is where whatever you are continuing, please continue doing that because those are important. Second category of recommendations are related to intensity, where whatever you are doing, just bring more intensity to it, just in terms of quality or maybe in terms of coverage. And third is nurture, which we say are recommendations where we need to do some innovative thinking. So all the recommendations are placed into these three categories. I'll not go into details of it, but I'd like to go to the last slide. Go to the way forward slide. Next one. Yeah. So this is the last slide where we are saying, given all this, what is the way forward for CFAR as an organization? We find that one of the pathways that CFAR can take on is to provide knowledge and thought leadership on this entire issue of climate resilient, inclusive WASH. Because when I say climate resilient, yes, inclusive, yes, and WASH, they have got experience on all these three aspects, and they can bring it in together in terms of how to do it again and how to do it, and also generate training and modules which they can help other agencies, handhold them, take them forward, mentor them into other cities. So that is also, we also say they can also help the larger formal system in preparing a roadmap for WASH services in informal settlements. And I'm using the word roadmap very consciously because I'm not saying policy. We have the policy is there. But the point is, how do I implement a policy? And that's what we say, the roadmap for WASH in informal settlements. And also the CFAR to evolve as a capacity building or a capacity development agency for other agencies. They can't go. CFAR has got limitations. They can't go everywhere. They can't be in all the cities. They can't be with all of them. But they can train others with their own experience. It might require training their own people to become trainers now. So maybe that's the next step they need to take. And also replicate the same. When I say replicate, is meaning the same Sani clammy wall can be in other settlements, can be in other cities. So that's part of a replication. Micro planning can be replication. Another is scaling up. How do I make this part of a formal system? Which aspect can the design, can the universal design, or can the climate resilient design be adopted and be scaled up in all the cities for all the informal settlements that we have? Thank you. It has been, I have taken more time that was allocated, but that it's been because of you. You're a 7-year project. You're trying to make me do in 20 minutes. I can't do it. Thank you. Thank you, Dr. Khanna. I understand doing it because when we do PPTs and reports, we also have the same problem. So may I now request Akhilaji to make some observations on. Let me also introduce her. She doesn't like it, but I'll still do it. Akhilaji has led CFAR for 27 years. She has over 40 years of experience as a strategy and a policy development expert, developing community pathways, and this project would not have been what it is without her. Thank you, Juhi, and once again, a warm welcome to all of you, to all the sort of distinguished institutional leaders, benefactors, change agents, both from the government and the community, and of course, all our CSO partners and our community partners. Just taking forward, thank you, Dr. Khanna, that was a wonderful presentation.
really a good mirror to us as what has got done and what more needs to be done. But taking forward the presentation, particularly the recommendations which he ran through, and which they have classified as win. The first is work, where you actually, continue to do what you're doing and do it better. The other is your intensity, which is I, and that is about accelerating. It's not enough what you've done. Probably it will slip back or regress. So please intensify your action. And the last is nurture or innovate. And that is something that is, absolutely critical in the context of climate resilient wash. We can't do conventional, or adopt conventional solutions. Now, all of this, is reflected in our commitments to our core deliverables. And none of this is possible if we do not sort of, look at all the existing inequalities and not only acknowledge them, not only acknowledge the disparities, but actually actively work to dismantle the barriers. And that's where the big challenge lies. And the kind of work that the team and the entire community has put in dismantling barriers, which means it's like a 24/7 job. And therefore, in the next coming phase, I was just telling Emily outside that, we are not going to let up just because the project has come to a close. In fact, everything, the body of knowledge is there, people are there, the actual innovators are there in our midst. And, we actually sit in there on what we call it the master's feet and, disseminate. So we are going to use, as recommended by the evaluation, the entire body of knowledge on, let's say, something as complex as gender responsive, transgender, disability inclusive wash. All the work that we have done on what we call disability friendly features, the kind of, inputs we have put into building capacities of communities, both as change agents and as duty bearers. There's a huge load of responsibility on them, and in fact, there is some kind of thinking, even in the feminist movement, that we keep burdening the community. We add to the existing burden by, imposing so much responsibility. But there's no getting away, because that's the only way we can, fast pace the change. And of course, embrace technology, integrate those solutions, continue to promote decentralized solutions, all of that. All of this body of work that we have done, we do want to take it ahead. And we know that this involves multi-stakeholder involvement. It requires working with all the stakeholders that are as much invested in program and policy changes and fostering community engagement. We have to draw also a lot from the data and the insights that the evaluation has done to tailor our solutions in specific contexts if we want to meet the very marginalized section, the needs of the very marginalized sections. We realize that some of this is really at the current stage that we are on a learning curve, but there's still a long journey to go. And therefore, this dissemination meet assumes a lot of significance. We are really looking forward to the inaugural session, where, as I said, some prime institutional leaders are in our midst, will be sharing their insights. We are also going to be actively engaged with all the rich discussions that are going to take place. We are going to use this opportunity to dive or to actually go into deep discussions and reflections on what has been done. We are particularly hoping that all the 5 sessions will actually give us the pathway, and that what we have done stays and we continue to nurture that. But we are also opening new vistas for ourselves on all the aspects of climate resilient, GESI, urban planning from a children's perspective, the whole use of communication, digital communication to augment voice and agency, and last, or to deep dive into some of the best practices that have emerged, not only from CFA but from other partners and players.
So as we commit to all of this, to this kind of what we call a transformative agenda, the last point I want to say is that, we realize that we are equally accountable. We will have to monitor and track our progress. We just have to be responsive and accountable to all the partners that we are working with and the communities we serve. So we are going to take this entire meet very seriously. Each one of you will be, further sort of, shall we say, hounded for more insights and more advice and more support. This is not in any way, in any manner a closure. It is actually a serious, opening of a new sort of chapter in our work. Thank you very much. Thank you, Akhila. May I now request Miss Emily Mego to make her special address. So, good morning, distinguished guests. I'd like to acknowledge Ms. Akhila Sivadas, Mr. Amud Khanna, Dr. Debalina Kundu, Professor Jagan Shah, Ms. Natasha Patel, and everyone who has joined here today in the room as well as online. I'm very pleased to be amongst you all today. To start, I would like to congratulate the entire Centre for Advocacy and Research, or the CFAR team, on the achievements of their work through the Building Climate Resilient WASH for Climate Impacted Vulnerable Populations in Bhubaneswar and Jaipur project. I'm so pleased that this project has been supported by the Water for Women Fund, which is the Australian Government's flagship water, sanitation and hygiene program. Since 2018, Water for Women has promoted socially inclusive and sustainable WASH initiatives with a global investment of around 160 million Australian dollars. Water for Women has delivered over 40 projects in 16 countries in partnership with civil society, research organisations and local partners. This includes, of course, CFAR's work, which is why we're here today. And today marks the culmination of a 7-year effort by CFAR. CFAR's project worked to deliver climate resilient and socially inclusive water, sanitation and hygiene services in 2 cities in Bhubaneswar and Jaipur. Importantly, the project had a focus on women, persons of diverse gender, people living with disability, socially marginalised caste and tribal populations. Globally, urban water insecurity, environmental degradation, limited access and inequitable resource distribution present critical challenges for our rapidly growing cities. The impacts of climate change compound these challenges. Rising temperatures, unpredictable rainfall patterns, unseasonable floods, threaten water security, sanitation and livelihoods. So this initiative was implemented in 2 cities that lie on opposite ends of climate extremities spectrum. Jaipur, in a region which I understand has scarce water resources, and Bhubaneswar, in a region with frequently returning cyclones. It's therefore really important that we bring a climate lens to all our work, and why the climate focus of CFAR's project was critical. Australia has been actively pursuing its efforts on addressing climate change. Supporting our partners to take climate action is core to Australia's international development policy. We need to ensure that climate risks and associated responses are considered in all our investments. Indeed, we have a target that by 2028-29, 80% of all new country and regional investments valued at over $3 million will have a climate change objective. I'd also like to highlight the importance of the inclusive focus of this project and CFAR's work. It's well understood that climate impacts are not experienced uniformly or equally. Women and marginalised communities bear the brunt of negative impacts. Gender equality, disability and social inclusion is a key priority for Australia. Indeed, just in December, Australia launched a new international disability equity and rights strategy. Prioritising disability equity and rights is an integral part of our international engagement. And this new strategy introduces Australia's first ever performance target for disability equity in our international development program. Building partnerships and delivering through them has been a key tenet of CFAR's work. In both Jaipur and Bhubaneswar, CFAR have structured and facilitated successful collaborations of many stakeholders, cities, state governments, communities in informal settlements, civil society and the private sector,
And this collaborative approach is critical when we're doing development work in communities. Some of the key learnings from the project include how to go about designing climate resilient wash services with gender equality, disability, and social inclusion as key elements, creating inclusive solutions that meet the unique needs of community members in different geographies. Like I said just before, how collaborative collection action models safeguard and prioritise the needs of the marginalised, using platforms for dialogue and action, how global knowledge exchanges can help create locally customised solutions, ranging from rainwater harvesting systems to eco-friendly sanitation facilities. And importantly, stories of women breaking barriers, the resilience of individuals with disabilities advocating for their rights, and how local knowledge and experiences have contributed to this narrative. The following are some standout achievements that have contributed to the initiative's success and that I'm really pleased to learn more about today. Innovative tools such as the interactive voice response system, the mobile community radio. This facility enabled the elderly, chronically ill, and single individuals to have their voices heard. A response grievance redressal system and early warning systems. A ward-level public dashboard called Sani Climby Wall was developed for weekly monitoring of wash data and communicating progress of climate resilient services. This ensured accountability and public disclosure, and I look forward to having a more detailed look at the back there. I'm sure that the whats, the hows, the whys of all these achievements will get discussed across today's plenary sessions. Today, we celebrate these achievements, but you must be aware that disparities will still persist to access wash services. That's why the knowledge sharing and advocacy effort today is so important. And I'm sure during the day, we'll all be able to take away learnings and identify opportunities for applying these in our own respective work. Today's sessions will set the ball rolling with CFAR sharing their insights. I'm sure it will be an insightful and inspiring day. And importantly, I hope that participants here and online can work out strategies for scaling up such approaches. I wish you all the very best for the discussions today and contributions in supporting of building India's urban water security and climate resilience. Thank you. Thank you very much, ma'am. We really want to, immerse in this experience today and take these lessons forward with all your support and all the partner support. Thank you very much for enabling us to do that. May I now invite Professor Shah to make his special address. Thank you very much, Akhila, for including me in this program. I'm happy to be hounded later for any ideas. I'm really happy to be also part of the nurture phase, which Amodji has identified, because the work has already happened. I have not been part of delivering the work, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम है, लेकिन ये जो काम हुआ है पिछले 7 सालों में, ये एक बुनियादी काम है और इस बुनियाद के ऊपर हम आगे शहरीकरण जितना हो रहा है देश में, इसके लिए हमें बहुत क्लियर गाइडलाइंस मिलने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट के इतने सारे पहलू हैं कि हम किस किस के वखान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें अचीव हुई है ये है पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। ये नॉट ओनली एक कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेशन की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन सीफार ने भी अपनी काबिलियत बढ़ाई ताकि ये बहुत सारे अलग अलग पहलू के ऊपर काम कर पाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सरकार के साथ और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इनके साथ काम किया है। जयपुर और भुवनेश्वर हमारे देश के बहुत 2 इम्पॉर्टेंट शहर हैं, और इनमें अलग अलग किस्म के समस्याएं हैं। तो सीफार ने जो इन 2 प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सीखा है, ये हम चाहते हैं कि दुनिया सीखे इससे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट this dissemination happens, but also the learnings from the project are become embedded into the public policy that guides urban development. I wanted to just highlight as opportunities or as ways to take this work forward some of the points. I think greater awareness about what resilience really means, especially in communities that are living on the margins, so to speak, and who are economically more vulnerable. I think
the project should produce at least a white paper or something that informs policymakers about what this really means on the ground. Because resilience is not, ऐसा नहीं कि resilience बन जाती है कि आपके एक तरह से structures ज़्यादा strong हो जाएं. सबसे important चीज़ ये है कि resilience में you bounce back. And how quickly can you bounce back? And especially for the urban poor living in slum areas, their livelihoods cannot wait for the government to come in and do the actions necessary and so on. So it's very important that the community is able to bounce back quickly, because हर रोज आपको काम करना है, you have to earn money, and any delays in that are damaging to the entire household's income. आई थिंक द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे हमने अभी बजट में सुना कि एक तरह से पहले या पिछले कुछ 20 सालों से कम हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा, पब्लिक का जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट किया गया है, कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए. अब जो एक बदलाव आ रहा है सरकार की थिंकिंग में, वो ये है कि जो अब बना है इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से उसका ऑपरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए. तो जो बैरियर्स अखिला जी ने बात करी और अमोद जी ने भी इसके बारे में बात किया कि बैरियर्स हटाने का जो काम हो गया है, अब इसमें रिवर्सल नहीं आना चाहिए. ये ऐसा नहीं कि फिर से समाज में जो डिविजन्स वगैरह हैं वो ऐसे हो जाएं कि लोगों को एक्सेस ना मिले या उस टाइप के नेगेटिव आउटकम्स नहीं होने चाहिए. तो इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें चेष्टा करनी पड़ेगी. कैसे कैसे मेंटेन करेंगे कि एक तरह से एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया गया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए. दूसरा ये है कि अब हमें स्टैंडर्ड्स की बात ज़रूर करनी है. अमोद जी, आपने यूनिफाइड डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट्स की बात करी थी, लेकिन हम अक्सर, क्योंकि हम मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं करते. स्टैंडर्ड क्या होता है? मुझे जो टॉयलेट यूज़ करना है और आपको जो टॉयलेट यूज़ करना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. हम दोनों इंसान हैं, दोनों को वही लेवल ऑफ हाइजीन चाहिए, वही साइज चाहिए, वही दरवाज़ा चाहिए. तो क्यों हम पूरे देश में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते? क्यों रईस के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है और गरीब के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है? तो ये हमें बदलना है. मैं जयपुर में 20 साल पहले, इनफैक्ट मेरी अर्बन जर्नी वहीं से शुरू हुई थी. तो हम देखते थे कि परकोटे के अंदर गंदी गलियां हैं. अब गंदी गली जैसा, आई डोंट नो इफ एवरीबडी नोज, बट वहाँ पर भी सैनिटेशन सिस्टम्स, मॉडर्न सैनिटेशन सिस्टम्स नहीं थे. तो जो घर में से जो मल निकलता था वो एक गली, पतली सी गली जैसे बना होता था 2 घरों के बीच में, उसमें से फ्लो होता था और अल्टीमेटली जाके नाले में जाता था. तो मॉडर्न सैनिटेशन नहीं था उस शहर में, और अभी भी कुछ जगहों में नहीं है. और ये मैं स्लम्स की बात नहीं कर रहा, ये अच्छे जो रईस घराने हैं जो चौपड़ के अंदर रहते हैं, उनके घरों की बात कर रहा हूँ मैं. तो जयपुर की जो समस्या है और भुवनेश्वर की समस्या है, ये अलग हैं. और सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप कितने शहरों में कितने स्लम्स के साथ काम कर पाएंगे. इसलिए स्टैंडर्ड्स की बातचीत करना बहुत ज़रूरी है. और इस काम में से एक तरह से स्टैंडर्ड्स के ऊपर we get a much better understanding of that. And I think in terms of the nurturing phase, it's very important that we take the learnings from this, especially with regard to the जो अफोर्डेबल हाउसिंग, मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसको कैसे बढ़ाया जाए. क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के, उसमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, मगर इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत ही धीमा चला है. तो इसको तेजी कैसे दी जाए? क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि सभी के पास प्रॉपर स्टैंडर्ड का घर हो. हम चाहते हैं, माने हम प्रोफेशनल्स चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि सभी के पास हो, लेकिन वो बने कैसे?
तो ये जो कोऑपरेशन आपके इस कम्युनिटीज़ में एक तरह से आपने फॉस्टर किया है, इस कोऑपरेशन को अब एक एक बहुत ही एक सीरियस मैटर में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। माइक्रो प्लानिंग की बात हुई है, लेकिन हाउसिंग रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए पूरी सोसाइटी को लेके साथ में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और लेकिन इसका सोल्यूशन निकलेगा तो आप ही निकाल पाएंगे, और कहीं से नहीं निकलेगा। और सरकार इसमें सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगी। तीसरी बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो सिंगल विंडो से शुरुआत हुई थी 2018 में, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो तब मैं एनआईयूए का डायरेक्टर था उस समय। चेतन भाई मेरे से पहले डायरेक्टर थे। वॉश में एनआईयूए का काम काफ़ी सालों से चल रहा है वॉश सेक्टर में। तो हमने जो काम पहले हुआ था उसको बढ़ाया। अब देवलीना जी भी इस काम को और बढ़ा रही हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो आपको चाहिए सरकार के इंस्टीट्यूशन से और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, इसको ज़्यादा सिक्योर किया जाए। अब नर्चर फेज में फॉर्मलाइज आप कर सकते हैं, एमओयू बना सकते हैं, ताकि इस चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे आप ले जा सकते हैं। मेरा आखिरी पॉइंट, और एक तरह से मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था जब 2018 में अखिला जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और सिंगल विंडो बनाने की बात हुई। अब सिंगल विंडो के थ्रू आपने एक पूरी दुनिया देख ली है। You have got insight on the entire gamut of issues that affect people's lives, and either increase their vulnerability or reduce the vulnerability and self-reliance. Now I think that holistic picture you will have to try and articulate into a vision for maybe a future policy that helps low-income neighborhoods, slums, unauthorized colonies, all of these kinds of neighborhoods which are actually not very resilient and may suffer a lot of setbacks. You have to help them now devise pathways to become more resilient. But as I said, at the end of the day, नागरिक के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं कि भाई आप अपना रेजिलियंस देखिए? सरकार का काम है ये रेजिलियंट शहर बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को हम अब ज़्यादा एविडेंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस जिम्मेदारी को और हम एक तरह से उसको उसको सवार सकते हैं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ बर्डन, दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हमारी सोसाइटी में जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशंस हैं हमारे, जो हम सब काम करते हैं, हम सब अपने फैमिलीज के लिए अर्न करते हैं, इन सबको साथ में जोड़ के किस प्रकार के नए इनिशिएटिव्स और नई पॉलिसीज बन सकती हैं, इसके ऊपर हम ज़रूर थोड़ा विचार करें। और इससे निकल के आएगा एक तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से निकल के आएंगे। तो इसके लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ और आई लुक फॉरवर्ड टू बी हाउंडेड। थैंक यू। ओके। Thank you, Professor Shah. May I now invite our next speaker, Natasha Patel. Natasha ji, we had begun by introducing everybody, and since you were not there, we would like to take a second to introduce you. Natasha ji is a part of the India Sanitation Coalition. She's the CEO. She has over 30 years of experience as a banker. But more importantly than that, she also represents the private sector, and she looks at the intersectionality between not only with gender, but between wash, livelihood, and the private sector. And we would really like to hear from her. You have a presentation, Yes. Danny will please. Thank you. Good morning, and thank you so much, Akila ji, and all of you for inviting us here today. I think, first of all, I would like to congratulate all of you for the amazing work that you all are doing on the ground. I represent a part of the development sector, which is, if I can put it this way,
to be kind to us, more from the periphery. Y'all are actually on the ground doing the work. Our endeavor is to ensure that whatever you require, we make it available to you in very simple words. So my presentation today is actually going to help you to understand the kind of work that intermediaries like us are involved in to ensure that your lives become a little easier, a little simpler, and you can actually continue in a sustainable way to do the good work that you are doing. So just very quickly to give you a bit of background on the India Sanitation Coalition. We were an organization that we are part of FICCI, first of all. FICCI is the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, as you know, and we represent the corporate sector and, so the private sector in general across this country. Now, our role when we were created by Miss Naina Lal Kidwai and her erstwhile husband, who has passed away, was to actually ensure that the Prime Minister Modi's call for Swachh Bharat was not just about just the government, but was also about how the private sector could actually become part of it. As you know, this sector, water and sanitation, historically has always been supported by the government, right since independence, even before. It was the government's role to invest in this sector. But as as the world has moved on, as the decades have shown us, the government, with all the best intention in the world, cannot sustain this. And for several reasons, I can talk to you for hours as to why the government cannot really be the only partner in this. We've seen this actually evolve in other sectors, but not necessarily in water and sanitation, because it's always been considered as core. Some people think it's controversial. If you look at the Western countries, they think that, the government, this is necessity for the government to actually take care of this. I have a different view, and I'm more practical. And I realize that this country, India, is at a crossroads. The private sector brings today a lot of knowledge, a lot of desire, and a lot of, if I can say it, money to the table that they would wish to invest in this particular sector. Their skepticism arises from the perspective that they don't know how to work with the government. And that is really where organizations like ours come into play. So let me start. The project I'm going to talk to you about today is called Climate Resilient Coastal Cities. All right. And it arose because of certain priorities that the government has, specifically Mahua. So if we can just go to the next slide, please. Right. So all of you know that the budget that was announced yesterday gave us some good news. And reading it, I was very happy to note that there is an Urban Challenge Fund, which has been for about 1 lakh crore, which is encouraging states to think innovatively towards sustainable urbanization. And there are two words there which are very critical. One is saturation, and the second is implementation of redevelopment projects. The reason why these two words are important is saturation, I think we've all heard of. And in fact, I'd like to go back to your presentation, Akilaji, on climate resilience, where CFAR has focused on flood and cyclone-proof infrastructure, but overlooked heat stress. And I'll be talking specifically about climate change in correlation to heat stress. Increased temperatures raise water demand, stressing supply systems, and I'll talk about that as well. No provision for community-controlled loss and damage funds. And the last point was immediate access to funds is critical for post-disaster wash restoration. Now, these are some of the findings of your program. And these actually underline implementation of redevelopment projects and saturation. Let's be very clear. Capital infrastructure is the government's responsibility. Absolutely. It will continue to be their responsibility. And if I can put it in simple words, if a project in the urban sector costs 100 rupees, at least 80 of that has to come from the government.
20 of those rupees will come from the private sector. That is from an immediacy perspective, right? That is the work that all of you are doing. And we expect the private sector to continue to invest in that more and more so that your work can get done. However, because the corporates that invest in this through their CSR funding are actually part and parcel of those communities, they will never go away. And that is the hidden reality. They will always be part of those communities, helping them, giving them the motivation to continue to actually strive for further and further success. And that is the reason why we believe that that 20 rupees over a period of time, say 5 years, 10 years, whatever, will become far more than what the government has invested. And that is also where we will make our local communities far stronger as far as their own enablement is concerned. So, and I'll show you some, some of the examples. So as I said, the challenge is who, as in which state gets the funding. That's our primary challenge today. So there's a lot of money, but how do we actually direct the funding towards the right projects? Which, with so many infrastructure demands, how much is water and sanitation going to get? So that is the big fight that organizations like ours are involved in, because we want to make sure that this core sector actually gets the right amount of funding from the government fund that is going to be allocated. Next slide, please. Now, the correlation between climate change, waste, and coastal populations. I think your project has actually outlined this very, very clearly. I'll just very quickly give you some numbers. 18% of Indians reside along India's coastline, which is around 250 million of them are living very close to the coast itself, right? In the last few decades, this has shown a surge in population growth in these areas with a concomitant rise in economic activity. Why is it that we are always running behind? Why, a lot of people say, economists say, India is always running behind. Why? And it's not just a simple thing of our population, but there are many other things that actually also need to be looked at. Number one, everybody wants to get rich. Everybody wants to make money. Everybody wants to actually, food on the table for their families. So the move between rural and urban has become a huge shift. Even though a large percent of our population still lives in rural India, but we are seeing over the last decade or so, the move is becoming stronger and stronger. And that is putting a lot of pressure on urban cities. And that is really where our problems are arising. Now, that coupled with historic architecture, so even if you look at a city like Bombay, right, our biggest metropolis, Bombay today, 80% of Bombay is non-sewered. Now, when I say non-sewered, you do realize that it means, and you must be seeing all the examples in the newspapers about manual scavenging, a huge number of these issues are being led through our historic infrastructure. Again, this correlates back to civic society. It correlates back to how do we view, our infrastructure in the urban areas. I think one of the nicest things that I have always felt is when I go into a village, they own it. They own their infrastructure. But if I go to a city, nobody owns it. Everybody says it's the government's problem. But it's not the government's problem. Even in urban slums, it is our problem. And when I say our, I don't just mean the people who live in the slums, but all of us together. And I think that's really where the good work that all of you are doing is very, very critical. Next slide, please. Now, the impact of climate change on coastal zones. Only 2 minutes? Gosh, I have too much to say. Maybe I will very quickly go through this slide. GHG emissions, I talked about heat and the importance of heat. GHG emissions are actually what we look at. And the reason for GHG emissions is not just because of, automobile waste or in terms of the number of cars that we have on the road, but it also has to do with waste and sewage and how sewage actually impacts our coastal populations. I'm not going to finish this. So I'm just going to maybe quickly go on to
our project. So very quickly, the project that we have chosen is, and we've been asked by Mahua to actually do this as a 3-year study, is along the west coast of India. You may have heard that historically, again, the east coast was the one that normally got impacted by tidal waves and by hurricanes. It is now the turn of the west coast. And the west coast, the reason for that is because, as you know, economic activity along the west coast is very high, and that is leading to, and also because of rampant non-management of waste, which is consistently being pushed into the ocean and the sea. Essentially, that is what is creating tidal waves and very large heat signatures across the western coast. And that is the reason why we need to actually look at the impact on coastal populations, which is what we're doing. There are 4 states that we've taken. We've taken Gujarat, Maharashtra, Goa, and Karnataka. There are 15 cities that we are studying. So IIT Bombay and CDD are both working with us on this project. It is being sponsored by HSBC. Once the findings of this project are made available by the end of this year, that will be presented to the governments to be part of their policy decision-making going forward. Now, where can organizations like CFAR come into play? Let me go there. Right. So organizations like CFAR can actually come into play in working with us in the implementation across cities, which are not just the coastal cities, but actually cities which are with inland as well. Because as you know, once coastal cities get impacted, the same impact goes through the rest of the cities themselves. And we are looking very much for implementing organizations. There are ironically enough people to put money on the table, but there aren't enough implementing organizations who will actually do the work. And that is the ground reality. So we are challenged every time we go. I'll give you a very quick example. We are currently looking at a very large project, which is part of the government's SIP projects, the Swachh Iconic projects, which is called Devbhoomi, which is in Gujarat. 6 temple towns, no sewage system, all sewage being put into the Gomti River. You can imagine, with a 2 lakh footprint on a daily basis across each one of these temple towns. So effectively, we are looking at recreating the entire architecture there, but we need implementing partners. And that is really our big challenge. So this is across all our projects. We are open to any partners, large, small. Even if you're just beginning, we're happy to do capacity building with you, but we definitely need implementing partners across all the projects in India. So not just Devbhoomi. So do please come and talk to us. We have our office in FICCI in New Delhi, and I've got my colleague here, Dr. Sanjeev Jha, who can be contacted. I personally sit in Bombay because I look after the financial sector as well as the corporates, and Dr. Jha looks after our government engagement. So please do get in touch with us. We would be more than happy to work with all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Natasha. And before I take a moment to thank each one of you for the excellent insights you've presented and the way forward recommendations, may I request, my colleagues Divya, Rajat, Anmol, Indra, to Sweetie, to come onto the stage. उसके बाद anyway. Just 1 minute, and then we have the keynote speech. Dr. Kundu will just take 1 second for this. So the keynote will be given by Dr. Devolina Kundu, and Dr. Kundu is the director of NIUA. May I please invite her to? Madhu दीजिए.
Namaskar. A very good morning to all the dignitaries on and off the dais and the participants, friends, and colleagues. I think we are all aware of the current impact of escalating climate risk in our cities, which includes flooding, the heat waves, water shortages, and all these have multiple effects on livelihood, opportunities, aggravating the impacts on health and other vulnerabilities of one and all, but the impact is more on the marginalized communities. And I think we all are aware of this. And again, this calls for resilient infrastructure and sustainable environmental practices across cities to mitigate the adverse impacts. The importance of these sustainable environmental practices are more important in the low income neighborhoods and among the vulnerable populations where the impact of climate stress are manifold. I think we all are aware of the recent initiatives of the Government of India through various missions and ministries in localizing climate action and also in integrating the nature-based solutions into urban development. The Amrut mission, Amrut 2.0, now it has a canvas of all statutory towns and it looks in a holistic manner towards recharging urban aquifers using the strategy of sponge basins to turn cities into sponge cities effectively. We are talking about use of treated water, the rainwater harvesting to be done by all cities. Again, the urban river management plan developed by the National Institute of Urban Affairs and the Namami Gange mission are pivotal in guiding city officials to prioritize rivers and other water bodies in urban planning efforts aimed at safeguarding, revitalizing, and converging these crucial ecosystems. The Swachh Bharat mission endeavors to make Swachhata a Jan Andolan, and I think every citizen has an important role to play. I think we are also talking about convergence of the rural, the Gramin, and the urban, and looking at the peripheral areas, which is actually a no man's land, and where one of the recent World Bank reports did talk about Indian urbanization being messy and hidden. I think the report hints at that part, that segment of the urban trajectory. And again, given the increasing climate risk in our cities and the fact that the process of urbanization is inevitable, it is important to prioritize and adopt climate resilient WASH across cities with specific focus on climate impacted vulnerable populations. Rainwater harvesting, groundwater recharging, solar powered water filtration plants,
the reuse of treated water, climate resilient toilets, fecal sludge management are few of the initiatives which could be scaled up in all cities. In this context, it is important to learn from the impactful interventions of the Center for Advocacy and Research in select cities of Bhubaneswar and Jaipur, particularly highlighting the importance of synergy between the government and the communities, integrating technology and local knowledge, and the manner in which it has transformed the community representation into active change agents and made them an integral part of the development and decision-making process. I think taking the Honorable Prime Minister's vision of citizen-centric governance, it is important to sensitize various stakeholders in the urban space, which includes government officials, the private sector, and citizens, particularly about their roles and responsibilities in this regard. Sensitization of citizens is very important to bring their participation in urban governance and making them equal stakeholders in the process of development. There were references to various missions that are being run through the National Institute of Urban Affairs, and I suppose National Urban Digital Mission is one such, where citizen-centric urban governance is being construed to be implemented in all the 4,900 plus statutory towns and also the huge transitional areas which constitute 1/3 of the country and which is in the process of urbanization, although because of various reasons, the census does not acknowledge, the census does acknowledge them as census towns, but there are areas which are close to be census towns, but actually not census towns, and where all the development happens not in a planned manner. So I think the focus of the government currently is on this transitional areas, which are pre-urban, peri-urban, whatever you call it, or urban. And I think in this regard, the need of the hour is to scale up the commendable interventions of CFAR in all cities. Just 2 cities is not enough when we have around 10,000 cities, 5,000 census towns, and another around 5,000 statutory towns. And each city needs to have a climate city resilience officer, which is there in a few cities in Gujarat and Maharashtra and maybe in Orissa. But I think we need to universalize this across the country. Again, have a climate lens in all our infrastructure budgets, in our infrastructure projects, municipal budgets, and again, place citizens at the core of governance. And the concept of shared services, which came up in the 15th Finance Commission, I think that also needs to be encouraged. And finally, when we talk about inclusion, in the true sense, especially from a gender equality angle and also the social inclusion perspective in urban development with disabilities, I think they also need to be in the fore. And we at NIUA, we do have various research projects which looks at the gender aspects, again, we did complete a project very recently, which was financed by the FCDO that again looked at persons with disabilities. We work very closely with the government, rather we are an extended arm of the government working on Amrut, NUDM, Swachh Bharat Mission, the Cities 2.0, again, where we are looking at circularity, the PMAY, and program which we are supporting on behalf of the Government of India is the National Urban Learning Platform. I think through this platform, it would be an important area where you could, you were talking about improving the capacities of the cities at large. So this is one area through which, one platform through which you could really scale up your interventions across the country. Try and reach out to the 4,900 odd towns and cities in the country and see how communities could be taught how to engage with the government and to bring about inclusion in whatever they do and aspire. Thank you so much.
Thank you, Dr. Kundu. Before we close this panel, I'd like to extend a very hearty thank you to each one of the panelists who are here. Thank you, Mr. Khanna, for sharing the findings and to give us the way forward. Thank you, Emily, for all the support which has been given to us and for the suggestions to take this forward to other cities. Thank you, Professor Shah. Urban housing is an issue, and we will definitely hound you, as you have already said. Natasha, we will reach out to the India Sanitation Coalition. I always do, and we will continue to do that. And thank you, Dr. Kundu. This learning platform is something which CFAR will definitely leverage because there are community resource persons and facilitators we have trained. They need more training. They need more support from organizations like yourself, so that whatever we have done in these 7 years does not get washed out. It actually needs to get extended, replicated, learned from, and also strengthened further. And we are very grateful for all the support we've got from all of you. Thank you very much. We have some housekeeping announcement. We have a small 10-minute break. We're running a bit behind time. So 10 minutes, please. And we will begin the first plenary after 10 minutes. Thank you, everyone. हाँ, आप फोटो लीजिए. फोटो. Just for everybody's attention, you will see there are some young people who are wearing a blue kurta, and that is a team which is May I Help You team. Any support, anything you need, please reach out to them. There are also CIFA team members all around. In case anybody needs any support, please do feel free to reach out to us.
come in. Divya, please round up everybody. Sona, just get people inside. Please tell everybody we are beginning. Hmm. So I request all of you to take your seats because we are now going to be initiating the first plenary. सब लोग बैठ जाइए. So now we begin the first plenary of the day, and this is on climate resilient wash, opportunities and challenges. For this, we have a very esteemed panel. So may I please request Mr. Satish Jain, Superintendent Engineer, PhD, Jaipur, Dr. Arundhati Muralidharan, Menstrual Health Impact Alliance of India, Miss Anna Britas, WASH Specialist, National Institute of Urban Education, Urban Affairs. And we have two panelists from Bhubaneswar, Mr. Subhendu Sahu, who is the Additional Commissioner of Bhubaneswar, and Dr. Sadhna Mishra, who's an expert member of the Transgender Council and Government of India and a Social Development Officer with the KIT University. This panel will be moderated by my colleague, Dr. Rajiv Das, who he is an M&E consultant focal point for CFAR. So may I please also request Rajiv to be present. And Danny, can we have the Bhubaneswar Zoom on that screen, and we have one screen only for this presentation, because otherwise we won't be able to see the speakers. Not possible. राजीव आइए, आप इंट्रोड्यूस करेंगे? फोटो कर दिया, आप शुरू करेंगे? अच्छा ठीक है. Mr. Satish Jain, he is the Superintendent Engineer of PHED. He has played a very important role in ensuring safe drinking water in urban slums of Jaipur. He is an expert on water management, safety, policies, and his timely support to CFAR has played a very critical role in the work we have been able to do on water management. His entire approach is that data is very, very critical for planning. And when it comes to informal settlements, that data has to be presented from the ground to the government so that together they can develop water safety management plans. We also have Dr. Arundhati with us, who has been a technical partner with us on the work we have done on menstrual waste management. She is a public health practitioner and a qualitative researcher with over 15 years of experience on working on menstrual health and hygiene. She has designed many policies on menstrual hygiene from a gender and an intersectionality lens, so we welcome her as well. Ms. Anna Britas is a WASH specialist from the National Institute of Urban Affairs. Her interest lies at the intersection of public policy, equity, and sustainability.
She is presently engaged with a project on Climate Center for Cities at NIUA, which contributes to research and policy action in the water and environment sector. Happy to have her with us as well. Mr. Subendra Kumar Sahu is the Additional Commissioner in Bhubaneswar, associated with CFAR for a very, very long time since the inception of this project. And for the last 30 years, he has played a very important role in streamlining sanitation across urban slums. He has been a part of many trainings and he has many firsts to it credit. The disability signage, the Sani wall, everything was done under his leadership. So we are very happy to welcome Dr. Sahu here. And Dr. Sadhna Mishra is a founding member of Sakha, which is a transgender organization, and she has played a very important role in ensuring the inclusion of transgender across academic meetings, policies. So we also welcome and would like to hear from us. So now, Rajiv, over to you. Thank you, ma'am. So good morning, everyone. It's a privilege to moderate this panel on climate resilient wash, opportunities and challenges, a topic that sits at the intersection of urban governance, policies, climate justice, public health, and beyond. So to start with, from the initial session, every speaker almost covered like why wash and climate change and also the intersection of both climate resilient wash is important. So if I would like to start with like why wash is important, then added layer of climate. So अगर देखा जाए तो wash रोटी कपड़ा मकान के बराबर ही है. क्यों है? क्योंकि wash डिटरमाइन करता है आपका हेल्थ कैसे रहेगा. और जैसे हम लोग कभी भी कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक का नाम करें, चाहे वो कॉलेरा हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो कोविड हो, हर एक चीज़ वाश से जुड़ा हुआ है, जो वाटर सैनिटेशन हाइजीन. तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितना हम अपने खुद पे ध्यान देंगे, रोटी कपड़ा मकान का भी जैसे हक मांगते हैं, वैसे अपना ख्याल रखते हैं, वाश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए. So one of the cornerstones of public health, wash is critical in supporting transition from health vulnerability to resilience in the face of climate change. Threats to climate resilient wash infrastructure exist everywhere, across countries and across the world. So, and in respect to urban slums, it is much more because of constraints in resources and also the voice to reach at the system level. So I would not take much time, and I would like to invite speakers for their opinions, I would say, and also request them to use both Hindi and English because of the audience we have. So to start with Shubhendu sir, because he has a meeting there. Over to you, Shubhendu sir. So we would like to know from you, from the perspective of Bhubaneswar. So considering frequent climate interruptions there, climate hazards there, like urban flooding and cyclones. So how do you manage at the city level to manage climate resilient washing, to provide climate resilient wash infrastructures to the people and especially to the most vulnerable people who are living in slum areas? And also the if you could explain the role of existing community-led committees like SDAs and sanitation subcommittees, how they play a role in facilitating those services to the most vulnerable. And also we would like to know from you how public-led dashboard, that Sani Climbing Wall led to such active involvement of communities and community-led committees. Over to you, sir. Thank you. Good morning, everyone present here. I also welcome you all for the building climate and resilient wash for climate impact for the vulnerable population. I also thank to the CFA for including me and allowing me for this panel discussion.
Actually, I am the Deputy Commissioner and Additional Commissioner for last 6 years. I am working in Bhubaneswar Municipal Corporation, and my focus is on sanitation. Basically, health and sanitation. I am focusing for last 6 years. And the government of Odisha and government of India has allowed us for decentralized waste management system, one of the best practices in India. And our waste management system, everyone is praising for that, how we manage the waste through decentralized way. We include our vulnerable population and self-help groups, our lower workers for the management of the entire system. And for that, like government employees, their salaries, we are paying the salaries in 5th of every month, so that they will be encouraged to work in the waste management system. Another thing is that for the physically PWD disabled persons, we have a system during collection of the waste. We have separate vehicles for them, and if in regular vehicles we door-to-door collection is taking place for segregation waste, and the houses have been identified, and in their houses we allowed the vehicles to stop for little time more, so that they will come and give their garbages to our vehicles. And another thing, the CFR has helped us regarding the Sunnyval. That is a message in every ward. We have a Sunnyval, and all the sanitation messages regarding the sanitary inspector, the ward officer, the corporator, everyone name, contact number is there. Grievance redressal system mechanism also written there, and entire database of the ward has been mentioned there. And regularly we have a meeting with the local committee, the officials who are assigned them. In every Saturday we have a meeting to discuss the sanitation and other related issues in the ward, and then next in other days we take steps to redress their grievance or their findings. Another thing is that the toilet. I think in India, Bhubaneswar is the only city, all the toilet which we have allowed for the public are user fee. No one has to pay a pie for the use of the toilets, and BMC is taking all the burden and paying the for the use of the toilets. No public has to pay any pie to the use of the toilet. Another thing is regarding water supply system. I think Bhubaneswar, Odisha, and Bhubaneswar, we have 24/7 water supply system with drink from tap. In general water supply system, you can use as drinking water for the every the household can use it as a drinking water, and it is safe and hygiene. We also maintain that. Then regarding dislodging, and it is totally mechanized, and for use of cesspool vehicle, we have allowed the in slum areas, we are giving 50% concession for the use of the cesspool vehicle. BMC is taking the rate for which we are for other public, those rate we are taking. For slum people, we have
given small vehicles so that the vehicles can enter into the slum area. And next thing, we collect less than 50% user fee for the use of our cesspool vehicle. Regarding rainwater harvesting structure, it is also we are focusing on the rain water harvesting in all the households. We are encouraging for the rainwater harvesting structure. And this year we have adopted Miyawaki plantation, looking at the hot climate, and for that, from the National Clean Air Program and from BMC Fund, we have focused on Miyawaki plantation, and this year we have started in around 10 locations, and it from next years the number will increase. And you might be know that Bhubaneswar is also a green city, because if you visit the Bhubaneswar, everywhere you will see the plantation, media plantation. Every household is also having plantation, roadside plantation, and reserve forest. In this city, we have also reserve forest. So further, we are also to prevent dust, and in hot climate, we have encouraging the people, giving free of cost seedlings from the BMC. We are encouraging for the number of plantations. Sir, And sorry for interrupting. So we have limited time. If you can like sum up in. last one. My last one is about grievance redressal system. We have a dedicated 1929 system for grievance redressal. And this is all about me. And one thing is we have for every IC activities, we are getting cooperation from the CFR for every IC activity. And regarding that Sanniwal and service for the PWDs, they are cooperating us. That is all about. Thank you. Okay, thank you, sir. So, thank you, sir, for sharing really good insights from your work. So, when you talk about climate resilient wash, so it consists of three major things. So, sir also covered it, like the infrastructure, second, the policies, and also the governance part. So, and when we talk about the governance part, we are not exactly concerning about that initiatives government is taking, but it is much more than the initiatives, and it is also it actually about responsive policies, inclusive policies, and also the systems to adapt changing conditions. And it is also about recognizing that technical solutions that may be similar, but contextually wise, it is actually different from cities to cities and areas to areas. So now I would like to request Jain sir, who is a superintendent engineer of PhD in Jaipur. So I request you, sir, to talk something about the, the recurring climate challenges in Jaipur with the added challenges of aging infrastructure, and also how can we plan according to the to minimize the pressure on groundwater in Jaipur, considering scarcity of water, and also to minimize the pressure there on overusage of Bisalpur pipeline. That would actually help us. Over to you, sir. You can. Very good afternoon, all of you. And I'm really thankful to CFAR and all the dignitaries sitting in the dais and sitting off the dais for giving me this opportunity to once again join some work with CFAR. Thankful to Ravi and Madhu, the Jaipur team managers of CFAR project. Actually, we did a project of drinking water supply in a slum area. Jaipur faced a problem, not many critical problems as far as climate is concerned. 1981, we faced huge, means heavy rainfall. So people residing in low-lying areas, they moved towards local sand dunes and they occupied those places, including
a developed colony constructed by Rajasthan Housing Board. So they occupied constructed houses which are otherwise vacant. So it was very difficult for any government to desettle them, then to remove them, then they become potential vote bank for both the parties which were fighting in the elections. So almost 50,000 population was residing in a stretch of around 6 kilometers, and they were not getting adequate water. So what they used to do, they will always break the main pipelines going to other parts, means regulated urban areas. They will damage pipelines, they will do puncturing, and then they will do agitations, roadblocks, all sorts of administrative problems were also there. Besides, it was a major health problem for all of them. They were not getting adequate water, safe water, not no place for storage, no commitment for regular drinking water supply. So then we got a project sanction for complete area, not leaving any pocket or any block, irrespective water regularized or unregularized. I asked my bosses that water is right for everybody, whether it's a developed colony or undeveloped colony or with the municipal stamp or not. Then we started working in that. We actually did good work and homework for mapping of the magnitude, that how much water will be required, how many families are today, and how many may be added in a recent time when we start working. And then we the made bit IEC campaign also, that you will have also to share out a reasonable amount as your stakeholder, means to all minimum duties, government duties, meter charge and all. So they all agreed, and then we started working. In the middle, it became a political issue that we will not pay. We don't want to pay anything. Government has to do everything for us. So it was a big problem. Then we introduced a team of CFAR. So parallel to the political exercises to damage the project, to sabotage the project, we successfully completed that project, and all 50,000 people of that area are now getting adequate water, regular water, and their health index has also improved. And they're all thankful to CFA team more than me, that they agreed them, they convinced them to pay a small amount of 5,000 rupees, less than 5,000 rupees per family, and now they are all happy. So this is what we did as a project, and we reap the fruit for that. As far as climate resilient infrastructure is concerned, I think water, health, education are all integrated subject. Whatever we design, we should always design that it will sustain the normal climatic variations that we are supposed to face. I have Mr. Sharma sitting with me. He's Director, Indian Meteorology Department. And when I was maintaining Jaipur water supply for almost 3 years, we were in regular touch. So any major breakdown of water supply or any maintenance that we used to plan, I used to consult him first almost a week before, that how climate is going to be there, whether it's going to rain or it's going to be very high temperature. We should attempt any maintenance in that period or not. So actually it worked. So as far as drinking water supply, I have done a lot of work in drinking water supply, then drainage system also. We try to use good quality material, good design, workable design, and it has to be adequately planned for future demands also. Normally we design water supply for 30 years, but at the time of designing, if we do good homework, your project is going to run at least 30 years. And if you do some sketchy work, your project will get exhausted, your design capacities will get exhausted after 5 10 years, because organic growth, besides organic growth, there are some other growths coming in, schools coming, hospitals coming, educational institutes coming, floating population coming everywhere. So we try, and we take some floating population, we added those features in our design criteria which were otherwise not in practice in the government, that will have a floating population of say 10% of the entire demand, institutional population say at least 5 to 6% of the demand. Then we'll envisage that these many quantities will be in the waste leakage, 15% leakage permitted. Fortunately, earlier Jaipur city was based on groundwater supply, only tubes were there, so there was a limitation of how much you can extract, how much you can store, how much you can transfer, and there was a cost involved, manpower involved. So lot of breakdowns, means any surge of high voltage coming in one feeder, at least 50 tubes will get burning or pumping set problem. So you will face shortage of problem. So in 2008 or 2009, actually, we started getting water from Bisalpur Dam, which is a reliable surface source. And as on date, we are in a capacity to draw 800 million liters of water per day from Bisalpur. And I'm happy that I'm credited with two augmentations. Initial 200 MLD, I augmented
successfully from 400 to 600, and right now we are under final phase of augmenting 216 milliliter per day every day for Jaipur and en route villages also. So we have our Jaipur city water supply and all en route villages coming and totally dependent on Bisalpur. But we don't forget that rainwater, at least in Bisalpur, may not last more than 2 years. If dam is full today, if there are no rains next year, we can survive. But after second year, successive drought will not be able to do anything with dam. It will be zero. So we have maintained and conserved our ground sources, which were also very expensive. A lot of capital costs incurred by the state government. We have almost 5,000 borewells in Jaipur city alone. Besides Jaipur city, we have borewells in rural areas also, and we try to keep them in working condition. Try to have some recharge structures constructed around, so when we are not drawing water, they are getting recharge water. So our system is going to work, and this we have practically seen that in last 15 years or so, 2 years we have faced drought. That Bisalpur dam was totally on the brink of getting dry. 2010, just after commissioning of Bisalpur supply, precisely 15 June 2010, we stopped water supply to Jaipur city from Bisalpur dam. It was a very difficult situation that the whole of the city, which was getting 300 million liters of water per day, all of a sudden we have to say no, we cannot have any water. We have to give it to Ajmer, which is totally dependent on Bisalpur. They don't have ground source. We managed that. We revived all our tubewells in that time. We revived all our rising pipeline network, water transfer system, and we reversed the direction that without Bisalpur also we survived, and people also cooperated. We did good IEC campaign that water is really short. It will not be in that quantity, same amounts will not be available. So they all accepted. Again in 2019, same thing happened. 2018, there were no rains. So we cut off Bisalpur water supplies. We started cutting them 10, 20, 15% every month. So by the end of, say, March, we had whole 4 months of summers ahead to survive. And we maintained water supply at 50% of the previous year's water supply level. And it all worked with the help of our, definitely, our local sources. So I believe that we should always maintain our capital investments very well, whether it is your house, your personal property, or its public infrastructure. And we have to imbibe some ownership, some stake amongst users who are going to actually use it. Everything cannot be provided by government. They have to own it. I have seen in villages, right now I'm working for Jal Jeevan Mission. So Jal Jeevan Mission, again, will be benefiting almost 1.25 crores families in Rajasthan with drinking water supply, which was otherwise not possible. That every household in rural area in, say, desert, Badmer, Jaisalmer, they have to walk and travel 5 to 10 kilometers every day to collect 10 or 20 liters of water. And that basically was stressed upon females and children. They were the victims of this issue. So now they are getting quite relief. Wherever we have successfully implemented Jal Jeevan Mission in rural areas, people are really getting very, their level of satisfaction and their thankfulness to this government is really, really adorable. And they say now their ladies and children are getting enough time to devote for studies and for all other welfare day-to-day works. At the same time, we have to think about how we can maintain all such capital investments. Doing it once, whether it is a sewerage project or a water supply project, is comparatively simpler. That if funds are available, you can execute that. But you have to run this project for at least design life, say 25 years, 30 years. In that, the major challenge is going to come. Like all Jal Jeevan Mission schemes everywhere in the country will have water supply infrastructure rolled out. So we have to look for people who can take up the role of maintaining agencies, and we have to devise O&M policies that who is going to share what. Everybody would like to save his pocket first, whether it is government or public. So it has to be equitable sharing of operation maintenance cost and sustainable system for running that entire show. So I'm thankful again, and I convey my best regards and wishes to everybody sitting here for best of everything in life. And whenever CFR will need me, I'll be available for any issue. Thank you very much. Thank you, sir. You covered almost everything.
So moving to our next speaker, Dr. Muralidharan. So menstrual hygiene often remains underrepresented in wash systems when you talk about wash. So we'd like to know from you how we can integrate that menstrual hygiene part in a major policies and schemes the government under say flagship programs. So we'd like to know from you, and also are there any specific interventions perhaps from your work at WaterAid and also with CIFAR? If you can present something from that, particularly in context to the slum areas where resources are very limited. Over to you, ma'am. Yes, please. थैंक यू राजीव एंड थैंक यू फॉर द सीफा टीम और आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। तो आई थिंक दैट एक जो है कि महामारी स्वच्छता प्रबंधन या महामारी स्वास्थ्य के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है। इनफैक्ट हमारा देश जब हम बाकी देशों को देखते हैं कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एक जो है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, हमने काफ़ी काम ग्राउंड पर काफ़ी काम कर लिया है, चाहे वो सैनिटरी पैड या कपड़े का पैड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जानकारी देना, और आई थिंक जो कम्युनिटी ग्रुप्स बना के जो सोशल नॉर्म्स और हमारा जो सोच है महामारी को लेकर वो बदलना टू मेक इट मोर पॉजिटिव, ये हमारा काफ़ी काम हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 से इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है, नेशनल लेवल से और राज्य स्थल पर भी। आई थिंक वेरी हैप्पी टू सी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को भी काफ़ी सीरियसली लिया है और उनके उड़ान स्कीम के ज़रिए काफ़ी महिलाओं को सैनिटरी पैड, और सॉरी लड़कियों को और महिलाओं को सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ जानकारी भी दे रहे हैं। बट आई थिंक इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि काफ़ी हमें और आगे बढ़ना है। एक जो है कि जो भी महामारी स्वास्थ्य और महामारी स्वच्छता प्रबंधन का काम ज़्यादातर हमने लड़कियों के ऊपर फोकस किया है, और इसके दिस इज़ अ गुड थिंग राइट, क्योंकि जब हम बच्चों के जो आदत हैं उसको हम बदल सकते हैं, बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, तो वो मतलब लाइफ लॉन्ग ये फायदा हो सकता है। सो इट्स वेरी गुड कि हम एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर फोकस करते हैं। बट जो 20 साल की महिला हैं और 50 साल तक उनको महामारी होती है और उनको जानकारी की ज़रूरत होती है, उनको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट और हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस काम को लेकर, तो आई थिंक कि किशोरियों के साथ काम करना, महिलाओं के साथ काम करना और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आई थिंक सीफार के काम से सीखकर कि जो बच्चियां और महिलाएं कुछ भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, वॉट एवर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, हम डिसेबिलिटी इंक्लूसिव मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन काम कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली इसके ऊपर हमने कम काम किया है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्ट्स को लेकर हमें और काम करना है। हमारा प्राइमरी क्या बोलते हैं इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी ये रहा है कि हम लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड्स देंगे। यस, सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत है, बट सब लोग सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या उनको और भी प्रोडक्ट्स चाहिए होता है। कभी कभी वो सैनिटरी पैड्स लेते हैं पर निपटान की दिक्कत होती है। और ये भी है कि कंफर्ट की भी एक रोल होती है कि लड़कियों को और महिलाओं को अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़ा वो ज़्यादा सुविधाजनक लग सकता है। तो हाउ कैन वी टेक आवर फोकस फ्रॉम सैनिटरी पैड्स टू इन्फॉर्म्ड चॉइस, और इसका मतलब क्या है? हम लड़कियों को और महिलाओं को एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं जिसमें सैनिटरी पैड्स भी हैं, कपड़े के पैड्स भी हैं, मेंस्ट्रुअल अंडरवेयर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल कप्स हो सकता है, ताकि एक लड़की या एक महिला खुद चूज कर सकती है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है क्योंकि ये मेरी बॉडी को सूट करती है, जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे वो अर्बन स्लम है, चाहे वह हाई राइज बिल्डिंग है, चाहे गांव में है, कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए सबसे सुविधाजनक क्या हो सकता है, और इसका जो पूरा यूज़ है, मेंटेनेंस है, डिस्पोजल है, इसको मैं
सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये बास्केट ऑफ चॉइस प्रोडक्ट्स की तरफ हमें जाना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट सीफार का काम इसके ऊपर हुआ है, खास करके जयपुर में। दिस इज़ ऑल्सो एन इशू फॉर अस टू कंसिडर कि हम सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं, पर इसका सुरक्षित निपटान और पूरी पूरी तरीके से इसका प्रबंधन कैसे हो सकता है, ताकि जो भी अम, अ, इस जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होता है वेस्ट का, नॉट जस्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट पर सारा वेस्ट, उसको हम हमारे जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसको कैसे कम कर सकते हैं, और जो हमारा वातावरण का जो हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, उसको भी हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दैट नोट, मुझे एक्चुअली आई वांट टू हाईलाइट four things that I have, I've had the privilege of learning from CFAR on. एक जो है कि on menstrual waste, second on community led solutions for menstrual health and hygiene and menstrual waste, सस्टेनेबिलिटी को हम किस तरीके से देख सकते हैं, और क्लाइमेट रिजिलियंस से इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज एनजीओज, बट ऑल्सो रिकमेंडेशंस जो हम अपने सरकार को दे सकते हैं एट द नेशनल एंड जो स्टेट लेवल पे। तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट हम हमेशा सोचते हैं कि निपटान मतलब हमें अपना सैनिटरी पैड हमने यूज़ किया है, इसको हमें फेंकना है। पर जब हम मेंस्ट्रुअल वेस्ट को देखते हैं, ये काफ़ी लंबा चेन, मतलब इसका एक एक इस्तेमाल किया गया सैनिटरी पैड का एक एक यात्रा होता है कि इमीडिएटली जब मैंने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कहीं फेंकना है, तो एक डस्टबिन, कूड़ेदान, मुझे उसकी ज़रूरत होती है। बट उसके बाद इस सैनिटरी पैड का क्या होता है, कौन उठाता है, कहाँ ले जाते हैं, और उसका क्या होता है। तो क्या हम सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट को या मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जैसे हम देख सकते हैं, जहां हमें इमीडिएट जो निपटान है या इमीडिएट डिस्पोजल, उसको ध्यान में रख सकते हैं, और जो उसका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और जो अल्टीमेट जो एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा हमें सोचना है, क्योंकि इसका जो असर होता है ये महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, और जो हमारी कम्युनिटी है उसके ऊपर पड़ती है, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, क्लीनर्स हैं, वेस्ट वर्कर्स जो हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी हानिकारक मतलब इम्पैक्ट होता है। सेकंड की ऑनसाइट सॉल्यूशंस, कम्युनिटी लेड ऑनसाइट सॉल्यूशंस का क्या रोल होता है। आई थिंक हम सब ने जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम किया है, इंसिनरेटर्स, हमेशा वही हमारे दिमाग में आता है कि इंसिनरेटर लगा देते हैं, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट में है, पब्लिक टॉयलेट, स्कूल बेस्ड टॉयलेट, यूनिवर्सिटी में टॉयलेट, वर्क साइट में टॉयलेट, उसमें इंसिनरेटर लगा दो। बट इंसिनरेटर्स हम सब ने देखा है कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती हैं, धुआं निकलती है, बदबू निकलती है, सो मेनी इश्यूज वी हैव विद दैट। तो आई थिंक व्हाट सीफार डिड इज टू टेक अ स्टेप बैक कि ठीक है, हम यदि हम स्कूलों में काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, हम क्या ऐसा क्या सोल्यूशन हम ले आ सकते हैं जो जिसमें कम्युनिटीज को भी ठीक लगे, जो लोग एंगेज्ड हैं इन द इन द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, खास करके सैनिटेशन वर्कर्स, उनके लिए अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक कन्वीनियंट और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, दैट इज ऑन डीप बरियल पिट। ये आई यूज्ड टू वर्क विद वाटर एड, वी हैड ट्राइड अ डीप बरियल पिट। हमारा यही सोच था कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वी डोंट हैव परफेक्ट सॉल्यूशंस, ओके। इन द इंटरिम हम क्या कर सकते हैं ताकि वेस्ट को हम एक कंटेन्ड तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आर फोकस वाज मोर ऑन कंटेन्ड मैनेजमेंट टू रिड्यूस द हार्म्स टू द ह्यूमन हेल्थ एंड टू द एनवायरनमेंट, फ्रॉम बर्निंग, फ्रॉम शैलो बरियल, उससे हम कैसे उसको एक हद तक बचा कैसे सकते हैं, एज वी आर अवेटिंग फॉर द परफेक्ट सोल्यूशन। तो आई थिंक द डीप बरियल पिट का मतलब काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, हमने कुछ सीखा है कि इसको हम एक स्कूल में इसका रूप कैसे होता है, हु डू वी नीड टू एंगेज, इसमें बच्चों की भागीदारी कैसी होती है, हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद दिस, उनको कैसे लग रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सीफार हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो दीदी इसको देखती हैं, उनका इनपुट लेकर ये डीप बरियल पिट बनाया गया है। एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल ओवर द पास्ट 3-4 months, think
Divyan, do you be able to correct me कि कितना महीने तक ये चल रहा है? That it has had some, I don't want to say success, but I think कि एक process जिसकी वजह से safe, सुरक्षित, निपटान and to a certain extent menstrual waste का management या प्रबंधन हो रहा है. And that I think is a very big step for us to, or a process from which we can learn from. और इसमें I think Juhi and Divya can share more कि the level of community engagement just for a deep burial pit. And this links to the point of sustainability कि जब हमने स्कूल को इन्वॉल्व किया था, कम्युनिटी के जो ऑलरेडी सीफार के कम्युनिटी ग्रुप्स, एसएमसी ग्रुप्स, बच्चों को, सैनिटेशन वर्कर को, उनको हम सब एक साथ लाकर वी टुक देयर इनपुट्स थ्रू द प्रोसेस, डिजाइन में, सोच में, डिजाइन में, implementation में, and hopefully this will mean that we are able to continue this process. My last point, and I will stop after this, is on the issue of sustainability. Is on climate resilient wash. So when we look at climate resilient wash, we are looking at, as per this latest definition that is floating around, is the ability to respond, to adapt, to cope with climate shocks and what is coming to us increasingly. And that's looking very different. Jaipur में इसका अलग रूप है, भुवनेश्वर में अलग रूप है, दिल्ली में इसका अलग रूप है. So how do we begin to look at MHH resilient services इसमें? तो immediately जब हम menstrual health and hygiene और climate को देखते हैं, we immediately jump to products only. Products are a part of it, but we have to look at climate resilient menstrual health and hygiene services across this value chain. I can say more about this, but in the interest of time, I won't. But I think we have to look at it slightly more in depth. Products are a part of the puzzle, and if we want to be looking at it from a climate resilient lens, तो हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं. एक जो है कि product choice को यदि हम promote कर सकते हैं, तो लोग चूज कर सकते हैं कि उनको सैनिटरी पैड, जो सिंगल यूज प्रोडक्ट हम बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जो रियूजेबल पैड्स है जिसका क्लाइमेट इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, उसका भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं. बट जब तक हम उनके सामने ये प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट चॉइस नहीं लाएंगे, दे आर गोइंग टू बी एक्सपोज टू and stuck with only the choice that is given to them. So, or the product that is given to them. So how can we expand choice? Or isme, I think we all have a responsibility to provide information. We all can't give products, but to give information and to support governments in expanding their basket of products from just single use to single use plus reusable plus menstrual cups, etc. तो वो एक है. Second is कि जो waste management के लेंस से यदि सैनिटरी पैड्स हैं and they are going to be there, they are very much a part of our product use pattern in this country, especially in urban areas. तो उसका सुरक्षित निपटान हम कैसे कर सकते हैं? And as we wait for the perfect solution, what are these interim solutions like a deep burial pit, like burning chambers that are constructed in some schools by some organizations? उसको हम कितना safe बना सकते हैं and how do we ensure the safety of those engaging with that system? I think last is, I think we do need to link this with a climate resilient wash, absolutely. But I also think we need to link it with other climate resilient efforts, such as climate resilient healthcare systems and other areas of work that are being explored with relation to climate change. We should not look at MHM in isolation. We need to link it with other agendas for us to be able to address the various challenges related to menstrual health in the context of climate change. I'll stop here, but if there are any questions related to this, I'll be happy to share. Thank you. Thank you, Dr. Muralidharan. That was really a good presentation and primarily focusing not only on the challenges, but also on the action plans. So our next speaker, Anna Bitas. So we have not just the speakers from government or say the civil society, we also have views from academia. So to have your views, because you already worked with Odisha government and many other state governments and national government, so on, especially on water.
So if you can say, you share your experiences on how Har Ghar Jal in Puri you implemented, and also the success stories from there, and how can we, like, one size doesn't fit all, we know, but still how can that similar situations arrive in like multiple cities, and how can we take learnings from one city and we can implement some of those in other cities, those who have similar experiences. So over to you. Thank you so much, Rajiv and CFAir team for inviting me to be part of this panel on climate resilient wash. So I know that climate resilient wash and wash in general is a large sector, but I would like to specifically focus on water supply through the lens of climate resilience. And primarily, I will be using the example of our work, NIUA's work with the Odisha government on the Drink from Tap mission, जो सुवेंदु sir ने भी mention किया अपने first address में. So basically, just to give a background, in 2020, formally the government of Odisha, the Housing and Urban Development Department, initiated this project, this scheme called Drink from Tap or Sujal Mission. इसमें basically every urban household was to receive 24/7 water supply, uninterrupted water supply of drinkable quality, पीने लायक पानी. So in 2021, a year and a half probably later, they approached NIUA to do an impact assessment of the scheme. And we were very excited because this is one of the, even though we have had city experiments with 24/7 supply, but nobody has quite reached the success that Odisha government has reached, especially in the city of Puri, where they did 100% 24/7 coverage. So we were very excited to take up this impact evaluation. And I think in the beginning, Amod ji ne bola unhone bhi ek impact assessment kiya of this project, and it was very tough. But when we started, we were very excited and we thought this is very easy. It is very straightforward. हमें बस ये water supply scheme का एक proper evaluation करना है. And we already know because we've been working in this segment for so many years. हमारे लिए indicators और क्या करना है, methodology सब कुछ almost straightforward है. तो हम बहुत excited थे. One of the other things that was interesting is that ये मिशन का पायलट ही हुआ था. तो भुवनेश्वर में I think only 8 zones were covered and Puri में the whole city was covered. So we had that opportunity कि हम impact evaluation करें और जो भी हमारे findings हैं that will help Odisha government in their already scaling up process for their 114 odd ULBs. So we had this chance to actually contribute to the building of the policy. So when we started with this, हमने बहुत neatly हमारा assessment framework बना दिया था. तो 3 categories में. Because Odisha government was doing a complete rehaul of their water supply system, उन्होंने बहुत सारे ऐसे categories involve किए क्योंकि वो climate resilience और sustainability पे focus करना चाह रहे थे. तो काफ़ी सारे areas में like piping structures, the entire mechanism, governance mechanism and the institutional mechanism उन्होंने change किया था. And they wanted us to also assess on these parameters कि क्या sustainability है हमारे इस scheme का, what is the technically how sound is the system, consumer perception क्या है. तो we also did in that sense कि 3 categories. हम पहले अपना technical evaluation करेंगे जिसमें it's straightforward. We have a few indicators, कितना water supply coverage है, कितना per capita water supply कितना है, and NRW which is like leakages or water losses ये कितना हो रहा है. And what we found out was that Puri में जैसे कि 47% था NRW which is leakages, पानी बह रहा है because your infrastructure is poor, there are joints, leakage points है बहुत सारे. After the entire system, it had reduced to 15%, which is almost internationally comparable to, advanced countries. जैसे जापान का almost 4% है, सिंगापुर का 8% है. So for a city like Puri to kind of reach at 15%, anything under 20% is considered good. So that was incredible. So the kind of water, the quantum of water that you're saving through just this is also enormous. तो बहुत सारी टेक्निकल अच्छे फाइंडिंग्स हमें पता चले इस स्कीम के. सेकेंड इज आपका क्लियर है ONM और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. सो आपको पता होगा इसमें स्पेशली भुवनेश्वर से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जल साथी स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसमें, वेर इन कम्युनिटी पार्टनरशिप, वाटर सप्लाई इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम टॉप डाउन, you have a representative coming to collect your bills, to tell you about the water supply. So there is a direct connection. So
हमने FGDs के through और interviews के through and some data collection के through we also got some findings on how it's doing cost recovery wise, how it's doing energy usage wise, etc. यहाँ पे भी काफ़ी advancement हुए उड़ीसा का. Third जो point है, which is consumer perception, which is more or less because we're all research organizations and we work in this domain. हमें पता है कि household surveys कैसे करना है, हमें पता है कैसे वो design करना है, क्या kind of questions पूछने हैं. But here is where the most tricky part came for us when we got to the field, because we realized कि यहाँ पे एक clear chain of division है slum और non-slum में. The same scheme, same water supply, everything is the same. But when it reaches an urban household, which is a non-slum household, like, probably many of our houses like societies, and when it reaches to a slum household, how the impact is huge, like the difference of impact is huge. That is what actually opened our eyes, because जैसे societies में है, जब हमने उनसे questions पूछे, उनके लिए कोई difference नहीं है. जैसे कोई हमसे अगर पूछेगा कि आपको whenever you open your tap, आपको पानी आता है आपके घर में, तो how will you rate that? So we will just say it's convenient, obviously, because we have our underground sumps, overhead tanks. For us, even if it's an intermittent supply, all water is technically 24/7 because we have those storage mechanisms. So for us, it's convenient. Now, when we asked households कि आपको अभी ये pipe connection मिला है, हर घर में ये pipe connection है, how is it for you? Like आपका क्या health benefit हुआ है? We have multiple range of answers they could actually tell us. But what they told us was it's convenient, the same as what an urban, elite household would say. That itself is a huge achievement for, water supply and for any city, that your slum populations, जो आपके marginalized sections हैं, वो बोल रहे हैं कि this water supply is convenient. One of the very important questions that I would raise here is that जो हमने पूछा और हमारे findings इसमें also corroborated the same. We asked what was your previous source of water. आपको पहले इस नलके से पहले आप कहाँ से पानी लेते थे? तो they would say something like दूसरे वाले घर पे ट्यूबवेल था, हम कुएं से पानी लेते थे. All sorts of different answers. टैंकर आता था कभी, and there were multiple categories. So then we used to ask कि कौन जाता था पानी लेने, and it would always be either adult woman or young woman. I mean, at least in 70 to 80% cases. So then we asked that, okay, तो we also kind of drill down कि तो अब आपके पास आपको ये कितना time save हो रहा है क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ रहा. तो on an average, households were saving almost 15 to 20 minutes daily just because they don't have to go through the process of finding water. Especially seasonal variation. So a lot of the women said that summers में हमें बहुत problems होती थी क्योंकि कुआं जो है वो dry up हो जाता था, तो कभी कभी मिलता नहीं था. So अभी उसका वो नहीं है क्योंकि अभी पानी तो इस नलके में तो हमेशा पानी आता है. So what was the key difference is that though they may not be drinking this water directly, because of course that really needs a lot of community awareness and years of kind of establishing that reliability of that system, but for them to have this access of water throughout, that if other mechanisms fail, they still have this tap water to use as their drinking water. They may boil it, they may use it directly. There are many people who are now who've built that confidence to drink that water, and that is a key achievement of bringing about 24/7 supply. It's not to the urban elite जिनके पास already storage mechanisms हैं. It's for these sections of society जहाँ पे to have 24/7 supply, or at least supply which is reliable, कि आपको पता है कि सुबह 4 घंटे और शाम में 4 घंटे आपको आ रहा है पानी, which was not the case earlier. I think we still have a huge way leap to go for actually 24/7 supply, because that's an entire gamut of just having technical expertise. You need to have a very strong institutional mechanism, etc. But this itself is a huge वो for climate resilience, because पानी का shortage अभी बहुत हो रहा है. So for people to actually get access to water throughout the year is itself a great achievement. इसके अलावा, of course, there are many other facets that we need to look at from a technical point of view. जैसे कि every city, like Rajiv mentioned, has a different context. For example, in Cuttack, they're trying to, Odisha government is trying to use mostly source supply and not to kind of, degrade groundwater supply. And they're trying to find alternate sources of water as well. But जो source वो use करे, जैसे महानदी for Cuttack,
uska, because of climate change, the river is changing its course. So where will the city provide the water? Because they've drilled their intake wells in areas where now the river doesn't flow. So these are all climate challenges that the city itself is facing while, providing water to the citizens. So on one hand, on one spectrum, you have, cities kind of grappling with this climate change कि हम पानी लोगों को कैसे देंगे, ample पानी कैसे देंगे, हमें 135 LPCD पानी देना है, वो कैसे देंगे when there is a looming climate crisis. Then, of course, we have at the local level, we have citizens also, they demand, because if you're saying 24/7 water supply, so we should get, हम जब tap open करेंगे, तो पानी होना चाहिए. So you need to kind of have a very strong system to actually make this work. My final point, for consumer perception especially, now this is where I think I would like to end. CFAR's role, like, and organizations like CFAR, we need, even though you'll have very strong policies and schemes that target the urban poor, you need complete community mobilization. For example, when we are in awe that, oh, आपको 24/7 पानी आ रहा है, that's good, right? But some of the households are like, हमें नहीं चाहिए पानी 24/7, because they are of the mindset कि ये 24/7 पानी आ रहा है, मतलब हमें उसका पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा. They don't know that it's actually on usage, or somehow that disconnect is there where they're not able to understand that this is good for them because they've not been mobilized. So they're in fact saying कि हमें नहीं चाहिए, हमने बोला है कि हमें बस सुबह 2 घंटे चाहिए और शाम को 2 घंटे चाहिए, हमें नीड ही नहीं है, because they're used to storing water. So that's one thing that we need to really, where like the system needs to focus on, because when 3 years ago we went for ground survey, we had some of the people saying that this is good, but now they're like, okay, I think बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है अब तो, but they don't know कि हमें store करने की ज़रूरत नहीं है, you can just close the tap, it's okay. So that really needs a long-term strategy of community engagement. I would like to end there, but would be welcome to take any questions on this. Thank you. Thank you, Anna. Because of time constraint, we'd like to see like whether Sadhana ma'am joined or not. Okay, so to sum up in 2-3 lines. So first of all, thank you to every panelist. Thank you so much for your valuable insights. So to sum it up, we covered like how, starting from Shubhendu sir's speech, like to how we are managing waste management in Bhubaneswar. It is generating livelihood, and for continuation of that waste management, the livelihood actually feeds it. So and with Jain sir's comment on how to like manage water sources, available water sources, to like use consciously and to look for like future plans also, like how to manage limited resources in a manner so that they can sustain like 2 years or more than 2 years without even a rainfall. And to sum up Muralidharan ma'am's on like not only we have to look at the challenges but also on the action plans. And to sum up with Anna's presentation, like the plans can be replicated to other cities also, uh, beyond piloting and also on a scale. So thank you again to everyone. So because of again time, I would like to hand it over to Juhi ma'am for next parallel session. Ma'am, please. And for questions, if we have time after this next session, we can have questions.
Thank you to all the panelists. We now come to our next panel, which is on making WASH inclusive, integrating gender disability and social inclusion, sharing insights. And for this, I would like to request Akhila ji to moderate this session. I also want to share that we will need to shift the order of some speakers because Dr. Ashwini is available. So we will place her as number one. Yeah. So Dr. Ashwini Deshpande, she will join us online. She is the professor and head Department of Economics and founding director, Center for Economic Data and Analysis, Ashoka University. Welcome, ma'am. We would like to invite Meghna Sahu from CFAR and the Third Gender Welfare Trust onto the panel. Ms. Neelu Chaudhary, gender expert from Abhigyan, Udaipur. N. Ganesh Babu, Assistant Commissioner, Bhubaneswar Municipal Corporation, who will be joining us online. And Dr. Kajri Mishra, Professor and Dean, School of Human Settlements, XIM University, Bhubaneswar. We were also expecting Dr. Vinay Bharadwaj, but he will not be able to join us in person. He will join us online. And Mr. Atul Sharma will also be joining us online. And both these gentlemen are from Jaipur Municipal Corporation and Atal Bhujal State Groundwater Board. They will be joining us online. So we will begin with Ashwin. Thank you, जूही. ये वाला सेशन पहले वाला सेशन के साथ जुड़ा हुआ है. We are talking about climate resilient, but we are talking from a more human centric कि लोगों का मतलब क्या, उनका क्या भागीदारी है, उन पर क्या असर है. और जब हम कभी भी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं ना, so we tend to see community एक मतलब एक homogeneous, एक ही जैसे. और जब ग्राउंड में जाते हैं अलग अलग घर में भी लोगों का मतलब परिस्थिति बदलता है. The way you're located, where you're staying, everything makes a difference. So one of the issues that I'd like to pose to the panel, starting with Dr. Ashwini Deshpande, और जब हम लोग बस्ती में काम करते हैं और जैसे भुवनेश्वर में हमारा अनुभव है, अभी आना बता रही थी, आप पूरा फॉर्मलाइजेशन उनको मतलब औपचारिक रूप में मतलब वो स्लम को डीलिस्ट करके उनको मतलब लाना चाहते हैं, बाकी शहर के साथ उनको मिलाना चाहते हैं. पर वो जो प्रोसेस है ना, जो मतलब जो ट्रांजिशन जो है इनफॉर्मल से फॉर्मल, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. और उसमें भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए एक पॉलिसी का असर पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी उनके पीछे मतलब उनके साथ खड़े होते हैं कि आप गैर कानूनी नहीं है, आप कानूनी इस्लाम है, आप कानूनी लोग हैं, यहाँ पर जो आपका रहने हैं आपका हक है, पट्टा भी मिलने का हक है, सब उनको बताया गया. पर जब असली में जो होता है ना, बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस में चलता है, एंड पीपल देन स्टार्ट गेटिंग एंक्शियस कि पता नहीं क्या होगा, ना इधर का स्थिति ना उधर का स्थिति. पहले इतना तो पता था कि वहां पर रह रहे हैं, अभी कुछ उम्मीद है, पर उम्मीद भी मतलब जल्दी पूरा नहीं होता है, और बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं. इतना मतलब प्रोसेस फॉर्मल है that you can't compromise on that process. So the whole idea is to each of the panelists, how do we, and a lot of the policy makers, Dr. Ashwini, is so dependent on academia. वो मतलब जब बोलते हैं पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, उनका अपना अध्ययन से रिसर्च से वो बताते हैं, तो सरकार भी सीरियसली लेता है. So my whole thing is that when we are talking about vulnerable communities, when we are talking about marginalized communities, and we are talking about this very painful transition that is happening from informal to formal, how can the academia help us assist, particularly in shaping evidence, enhancing sensitivity on the issues concerning the vulnerable community, how to build this whole set of what we call trust. Ashwini, there's such a deficit of trust, and with a handful of people in closed rooms, you're willing to have a relationship with the community, but not in the wider sense of the word. That Shahari Manch has been part of the whole NULM.
The National Urban Livelihood Mission, they even conceived of something called a Shahri Manch, जहां पर लोग अपना बात रखेंगे, एक पूरा मंच बनेगा, but it doesn't happen. ये सब मतलब process में घुम हो जाता है. It just gets lost in the entire process. So how can an academic community help us, in building all of this through research, through evidence, and through study? Over to you, Ashwin. Thank you, Akhila, and I'm really sorry for not being there in person, but I'm in between classes. In fact, I'll have to थोड़ा see. हिंदी इंग्लिश मिक्स. नहीं, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया. मैं अभी असल में एक क्लास से आई हूँ और एक और क्लास के लिए जाना है पढ़ाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो मैं आ नहीं पाई, आज वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ आप सब लोगों के बीच में. अखिला, आपने जो सवाल पूछा, ये इसका एक कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि हर एकेडमिक रिसर्च किसी बदलाव को लाने के से प्रेरित नहीं होती है. और ये उम्मीद करना भी थोड़ा अनफेयर है कि सारे एकेडमिक्स को समाज में बदलाव लाने की ही कोशिश करनी चाहिए. कुछ एकेडमिक्स पूछेंगे क्यों अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ एकेडमिक्स पे क्यों पड़े. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात है, कुछ एकेडमिक्स डेफिनेटली हैं जो जिनका सामाजिक दृष्टिकोण ज्यादा इस तरह का है कि हमारे किस शोध कार्य से किस तरह से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है. लेकिन एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है. और ये भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरह से सारे एकेडमिक शोध कार्यों का जो नतीजे निकलते हैं वो सारे अच्छी तरह सुनती हैं. ऐसा भी नहीं है. कुछ कुछ नतीजे ज्यादा नेताओं के पास पहुंच पाते हैं, कुछ नतीजे नहीं पहुंच पाते हैं. दोनों होता है. तो ये एक बहुत जटिल समस्या है. और जो लोग शोध कार्य करते हैं और जो कम्युनिटीज में काम करते हैं, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से तालमेल बढ़ाया जाए, ये एक अपने आप में एक अलग विवाद का मुद्दा है. कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ जो अभी वॉश का आप लोग जो रिजल्ट्स मैंने पढ़े हैं थोड़े बहुत, जो अखिला जी ने मेरे पास वो भेजा है रिजल्ट्स, तो मेरे दृष्टि से पहली चीज तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन बस्तियों में पानी ही नहीं मिलता है नलके के थ्रू, वहां पे आप क्या बात करेंगे कि ये वॉश कीजिए, वो ये कीजिए, घर में टॉयलेट होना चाहिए. लेकिन जब पानी ही नहीं आ रहा है तो मुख्य मुख्य समस्या तो वहीं से आती है. तो आप जितने मर्जी बिहेवियरल इंटरवेंशंस वहां कर लीजिए कि लोग अपना कूड़ा इधर फेंके या उधर फेंके वगैरह वगैरह, लेकिन जब नलके से पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि किसी को घर से बाहर जाके पानी लाना पड़ेगा. और उस पानी लाने में कितनी दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें इस इंटरवेंशन में आप लोगों ने फैक्टर करी कि नहीं करी, ये भी एक सोचने वाली चीज है. तो मुझको लगता है कि जो खास तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल ग्रुप्स, जिस तरह के आवास व्यवस्था है, वहां पे सड़कें हैं कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, या अगर है भी तो कितना, किस किस क्या आसानी से ये मुहैया, लोग सब तरह के परिवारों को ये आसानी से मुहैया कराया जा सकता है कि नहीं. ये सारी चीजें जो है, ये मुझे लगता है कि इस पूरे वॉश इंटरवेंशन की सफलता को अगर आप देखें तो इसमें ये सबसे मूलभूत मुद्दे हैं. और जब तक इनका सुझाव नहीं, इनको सुलझाया नहीं जा सकता, तब तक इनका आप जितना मर्जी वॉश का ज्ञान आप बढ़ा लीजिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज्ञान बढ़ाना जरूरी नहीं है, डेफिनेटली जरूरी है. लेकिन उस ज्ञान बढ़ाने का फायदा क्या होगा जब मेरे घर में पानी ही नहीं आता हो. ज्ञान मेरे पास पूरा है कि मुझे कूड़ा इधर फेंकना चाहिए, मुझे टॉयलेट, लेकिन जब मेरे घर में पानी ही नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी, है ना. तो जो बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं वो लोगों को मुहैया की जा रही हैं कि नहीं, और किस हद तक की जा रही हैं, ये मेरे ख्याल से मूलभूत मुद्दा है. और अब तो दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं 5 तारीख को. तो सारी राजनीतिक जो पक्ष हैं
उनको ये इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हैं वो, कि दिल्ली में दिल्ली की जो आम जनता है या और अभी तो दिल्ली में है लेकिन और जगह में भी सवाल तो सब जगह एक जैसे ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जटिल समस्या है अखिला जी। और अगर एकेडमिक्स के पास इतनी पावर होती कि एक दो पेपर लिख लिए, कुछ रिजल्ट्स आ गए, उससे एक्चुअल अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो क्या बात होती। मगर हम उस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। एकेडमिक्स के पास इतनी पावर नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मैं इतना ही कहूंगी और आप लोग से जस्ट सुनना टू चाहूंगी। परसिस्ट अश्विनी, मतलब एक पार्टनरशिप बने, कम्युनिटीज जो मतलब अलग अलग तरीके से इंक्लूजन का पूरा पाथवे खुद बना रहे हैं, हम लोग जाके उनको सिर्फ या जस्ट गिविंग देम बैक एंड सपोर्ट, पूरा लीडरशिप कम्युनिटी में है। उस परिस्थिति में इज देयर द पार्टनरशिप बिटवीन एकेडेमिया, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज, वी आर नॉट लुकिंग एट व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड। अभी इसको आगे ले जाना है in general. I'm not talking about Ashoka University or a one set of academia. I'm saying, is there a scope for that kind of partnership? That's a very individual decision, Akhila. I mean, I don't think any group of Institutional. academics, because Okay. academics is a very lonely enterprise at one level. Okay. Each person is doing their own research in subjects that, I mean, some people are working on gender, intersectionality, availability of civic amenity. Some people are working on trade policy, macro policy. Some people are building theoretical models. I mean, there are all kinds of academics, right? Now, the inclination to engage with communities is varies from person to person. Okay. So there is a group of academics like Jean Dress or Ritika Kheda who have decided for themselves that they are going to be activist academics. So they will only do the research that furthers the cause of community advancement. So that is the only kind of research that they'll do, and all power to them for doing that. But not all academics are like that. I mean, it's at the end of the day, it's a job, it's a career. People have to think of, publications, getting ahead. And there is like in any, like it's a career like any other, right? You are thinking of that. So yes, some partnership is possible with some individuals, but not, I think, thinking of academics as an entire field, and for them to be always committing to partnering with communities, that's a little bit of a tall order, I would say. I mean, that's a little bit of an unrealistic ask, if I may be a little blunt here. So whatever you kept, whatever you stated now, community leaders, and right now I'm going to pass on the presentation to Meghna. So my appeal to her will be that, the communities, matlab, ek prayas karna padega to draw the academics in, like you're saying, select the people, draw them into the discussion, and then draw them within the framework of the policy deliberation also. We normally wait for people from the academia to approach us. Maybe the community should take the initiative now and, approach people like you and others, ताकि आपका support भी मिल जाए, So with that, thank you very much, Dr. Ashwini. Thank you, Akhila. Thank you. I now call upon Meghna. Abhi, should I call her? Please call her first because she has another meeting. Okay. Okay. Kajri, are you online? Can you hear us? Yes, Akhila, hello. Very nice. Good afternoon. Good afternoon. So we are, deliberating on this whole issue of Jesse and WASH, gender equality, disability and social inclusion. And we are saying that while some gains have been made, undoubtedly, no one is, कोई भी मतलब ऐसे हमारे जो स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे सबको मतलब पूरा सपोर्ट है ऑन दिस इशू. Nobody has said कि हम अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं, आपके साथ बात नहीं करना, वैसे वो वाला पोजीशन किसी के पास नहीं है. And yet there are systemic problems. Even system के पास जवाब नहीं है, because it's all been established within the precedence of that system. वो उन्होंने नहीं किया है, बाकी लोग ने किया है. So the whole question is, you are an expert in governance reform, particularly on public delivery, and you've done a lot of work. You've created a whole center of excellence in Bhubaneswar on that. How do we bridge the gap
and I'm talking about a real-time gap. I'm not talking about, in principle, there's no gap, but in transactions and in process, there is a gap. How do we, work with people like you in the coming period, in the coming months to come? How do we help, to bridge that gap between the community and the system as a whole, not just the service providers? Thank you. Thank you, Akila. I think that's a very pointed question. Helps to anchor my inputs here. And thank you for having me here in the first place. I think that is one of the key questions that actually emerge when we look at the wonderful work that is being done by organizations such as CFAR or UMC or CDD and others, who are working with communities and trying to bridge the gap between them and the service deliverers, so to speak, and the service delivery system. But there are some major questions, and I'm going to speak as an academic. मैं academic के हिसाब से तो जो देखती हूँ वही बताऊंगी, और फिर कुछ भी जो engagement है, जो actual organizations के साथ, जैसे कि वॉटको के साथ मेरी बहुत क्लोज फॉर्मल एंगेजमेंट भी है, तो उस नजरिया से भी क्या दिखता है। एक तो पहले ये है कि हम जो पॉलिसी के साइड से, गवर्नेंस के साइड से, एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल आल्सो, जो ट्राइंग टेस्टेड फॉर्मूले हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सवाल उठा है दिमाग में, और कुछ रिसर्च भी उस पर है, कि हम विमेन पर फोकस करते हैं बिकॉज वी नो that once women they are community engaged, they will want, and this actually affects their daily lives, तो हम उन पर फोकस करते हैं। लेकिन हम जो जेंडर पे काम करते हैं और वुमेन के साथ काम करते हैं, हमको भी ये पता कि विमेन सबसे ज्यादा काम करते हैं। वो 3 लोगों की काम करते हैं एक दिन में, घर के काम, taking care of elderly and the children, and plus livelihood work। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पॉलिसी और डेवलपमेंट की काम है वही उसको भार उठाए, एंड ये एक इशू हो गया है। आई मीन हम केरला के कुटुंबश्री प्रोग्राम इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो रिसर्च निकला है, बहुत लोग ये बोले हैं कि व्हाई इज द गवर्नमेंट रिलाइंग ओनली ऑन women? Are they not looking at women as to plug the gap in the delivery system, which they cannot actually plug? If you say, instead of women, if you say community members, I think that becomes actually, on one hand, more effective, on the other hand, less or more gender sensitive, because then you are reducing women's workloads, as well as more inclusive. I mean, inclusion does not mean only including those who are traditionally marginalized. Inclusion is across the board. And those who are traditionally marginalized should not be, I mean, I'm using a very strong word here, ghettoized, into cliques of their own. We have faced this issue in local governance in the rural sector a lot more. Meaning, जब हम ग्राम सभा की बात करते थे, तो महिला सभा की बात आई, जो बहुत यूजफुल है। I mean, वहाँ women can speak out, औरतें बात कर सकते हैं, खुले हम बता सकते हैं उनके जो तकलीफें हैं, और ग्राम सभा में आ नहीं पाते हैं, वहां बता नहीं सकते हैं, उनको बताना दिया नहीं जाता है, ये सब आपको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेल तो होना ही है। इनिशियली महिला सभा कीजिए, बट आगे जाके उनको ग्राम सभा में इंटीग्रेट तो कीजिए। सो वो एक मुद्दा है जो बहुत सारे कम्युनिटी वर्क में मुझे दिखता है, और ये एक थॉट मैं सबके सामने रख सकती हूँ। तो दैट इज वन। सेकेंड इज पॉलिसी पर्सपेक्टिव से जो बहुत अच्छा काम हो रहा है उड़ीसा में वाटर में, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो फर्क रहता है कि फॉर्मल सिस्टम्स में क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में और स्लम्स में क्या होता है, वो तो बहुत क्लोजली आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि द इश्यूज आर ऑल दैट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ। मैं ये बोल सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये वॉटको का एग्जाम्पल देती हूँ, 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप में। एक
very close or very key factor is the hygiene factor. कि drink from tap means you get pure water, you drinkable water. And health की perspective से ये बहुत important है. लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हैं वो वाटर स्टोरेज करते हैं. हम लोग अपने जो सोसाइटीज में अभी भी वो संप रखे हैं, वो 24/7 वाटर आता है, ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर आता है संप में, पंप किया जाता है ओवरहेड टैंक में एंड उसी से फिर 24/7 होता है. तो वेयर इज द huge investment in making it drink from tap is actually a very large portion of the resources, the technology, maintaining the chloral levels at all points, right to the tap end, within the regulations. ये सब करना कुछ आसान काम नहीं था और उस पर काफी अभी खर्च भी होता है, मैन पावर, ट्रेनिंग, सब कुछ होता है. लेकिन फाइनली एट द अदर एंड, एट द टैप हेड, आई वुड से ये सिर्फ स्लम्स के इशू नहीं है, ये सब लोगों के इशू है क्योंकि बिहेवियरल चेंज हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड एंड that is another issue. I don't want to take a lot of time, but I want to go to a big picture issue. जैसे हम ये पूरा जो research अभी we had Professor Ashwini who talked about research. हम research तो बहुत सारे मुद्दे पे करते हैं और across organizations and locations करते हैं. तो कुछ big picture questions निकलते हैं. जैसे कि एक ये है कि locations, there is locational difference as well as demographic difference and intersectional difference in terms of the challenges. तो ओडिशा में देखिए जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, द कोस्टल एरियाज, उनके जो इश्यूज है और भुवनेश्वर में जो इश्यूज है वो some of them will be the same, but बहुत सारे अलग भी हो सकते हैं. एंड जो काम जरूरत है कोस्टल एरियाज में कि जब फ्लड्स होते हैं पर्टिकुलरली और साइक्लोन्स होते हैं, उसको लेट्स से डिजास्टर प्रूफिंग and making the systems resilient, both sanitation and water systems, is going to be a different set of challenges. तो हमको I think ये जो differences निकाल के लाना है ताकि policy makers or governance systems can adapt accordingly. One size does not fit all, we know that, but one challenge is not, the same challenges are not there everywhere. That is another thing that we need to think. So policy, we always say that policy makers put cookie cutter policies. No, it is also because they have to be aware of the differences. And to a large extent, many can be taken care of. A similar question comes when, for example, when we look at the end-to-end solutions. जो पानी आ गया है, टॉयलेट भी है, लेकिन पानी कहाँ जाता है? Particularly informal settlements में जहाँ जगह नहीं है, the sludge, septic tank sludge, वो कैसे treat किया जाता है, कहाँ जाता है? And अभी तो in your previous session somebody talked about menstrual waste. हर एक चीज को वो पूरा end to end integrated way में देखना पड़ेगा. And उसके लिए ये सिर्फ एक institution, communities cannot afford to engage with only one institution. A single window idea is very great, good. That means municipal authorities. Of course, they are the first port of call and they have to be. But हमारे जैसे governance system है वो बहुत siloed है. Health के काम अलग करते हैं, water के काम और कोई करता है. State, WATCO is a state institution, not a municipal institution. So, अगर पानी का कोई मुद्दा है तो वाटर का माने वाटको के पास जाना पड़ेगा उड़ीसा में and it's there across our SPVs, our corporations, boards, they take care of many things. So, how do we enable, build capacities in our communities, that awareness of who to engage with for what kind of issue? I think in capacity building of communities, I think this is one aspect which is often missed out. Now, from the other end, we know our capacities at the municipal level, for example, are very variable, let me put it that way, but we know how poor it is. CFAR has worked in Jaipur and Bhubaneswar. These are cities with fairly good capacities at the municipal level.
But what about the smaller cities? Municipal capacities at those cities are really, really abysmal. And I don't mean capacities in terms of doing their own job, but thinking beyond, thinking of new systems, thinking of new ways to engage with communities or getting used to it. Now, ये सब जो चाहिए from the governance side, we have not been able to do. So Yeah. that's about the points I thought. Yeah. There are many Thank more. you. Yes, but yes. We are completely with you. I think what you're saying also, community is having a critical engagement with policy framework will be one more sort of, task we'll give ourselves in the coming period. Thank you very much, Kajri. Thank you for joining us. Thank you. Very welcome. Thank you for having me. Now we'll turn to Meghna, who's patiently waited. Yeah. I'm being told that everybody's just spent 3 minutes, Meghna. So in very short, 2 questions for you. One, given your experience, पूरा जो इंक्लूजन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको कैसे मतलब मजबूती से कैसे उसको आगे ले जाएं, ऐसे सिर्फ टोकन नहीं, पूरा मजबूती से. दैट्स वन क्वेश्चन. एंड ये पूरा मतलब in this entire process, what is the role of safe space? Is there a space जहां पर आपको लगता है बात करने में झिझक नहीं है, उस जगह में झिझक नहीं है? हर एक जगह में बात करने का हमारा मतलब we don't feel comfortable. Is there a concept in that inclusion? Do we also look at, what we call safe spaces? Yeah, both of this. थैंक यू सो मच मैम. जैसे कि आप लोग सभी को मतलब जो वीडियो देख रहे थे ये से, तो मैम की क्वेश्चंस पे आने के लिए मतलब थोड़ा सा जस्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मैम, सभी कोई बोल रहे हैं कि when we talk about sanitation, the same questions I raised when this project started, कि why we are talking about sanitation first. जब हम लोग के पास खाने के लिए फूड नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं, हमारे आधार कार्ड नहीं चेंज है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, हाउ विल गेट दैट सब्सिडी, हाउ वी विल मेक दिस टॉयलेट? Then the questions, like when I put it, then it comes to the single window where we'll give all the services, like सारे सर्विसेज आपको एक ही जगह मिलेगा ताकि आप आपके सैनिटेशंस के बात कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट हाउ वी डिड इट. लाइक मैम टोल्ड कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे होगा टॉयलेट. तो दिस ऑल आर लाइक ये सारा चीज़ रिप्लिकेटेड हुआ उड़ीसा गवर्नमेंट के काम पे, जब वो जागा मिशंस करके काम किए. वहाँ पे 5 कंपोनेंट में टॉयलेट करने से पहले पहले वाटर कनेक्शंस होना चाहिए, इंटरनल रोड सही होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, या फिर उनके पास फिर जाके टॉयलेट और सैनिटेशन ओपन स्पेस इस सब के बारे में बातचीत हुआ. और उसे जागा मिशन में ये 5 कंपोनेंट में हम लोग काम किए थे. एंड पायलटिंग पे जो सिर्फ के जो 20 स्लम्स लेने वाले थे गवर्नमेंट इन 2019, तभी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. तो उसके बाद फिर तो वहाँ पे हम लोग वो प्रोजेक्ट लेके वो स्लम में पहले दिस सर्विस वी प्रोवाइडेड, then we talk about the sanitations. After all, then we talk about the infrastructures जो हैं public infrastructures, वो कैसे accessibility रहेगा. तो then comes to the policy level की यहाँ पे हमारे पास बजट नहीं है. ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मेल फीमेल के लिए बना हुआ है. अभी इसको बनाने के लिए ट्रांसजेंडर फ्रेंडली, जेंडर फ्रेंडली, यूनिसेक्स लाइक सारे जेंडर्स कैसे करेंगे. देन हाज लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि पैसा कहाँ से लाएंगे आपका टॉयलेट बनाने के लिए. बोला कि इट इज़ नॉट अबाउट बजट, इट इज़ अबाउट योर माइंड सेट, इट इज़ अबाउट साइनेज. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करना है हर जगह पे टॉयलेट पे. जस्ट you change your signage, a male, trans male, women, trans women, so that that same construction can use. Or else you have disability toilet, you can make it universal toilet to that toilet, so that it could be easily accessible for anybody is like
not comfortable to use that as your toilets. So then it comes to the signage, but it is took a lot of time. And I will thanks Akhila ma'am and Sifa to giving me that when I came to like right question in right platforms. When I asked, I will thanks to G. Mathivatan sir, the Urban and Housing Department Principal Secretary, uh, who take this challenge to do all these things. And the signage changes का जो official order निकालना, signage change करना, और सबसे बड़ा बात कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना इन सैनिटेशन सेक्टर पे, क्योंकि जब हम सिर्फ बात करते हैं हमारे मुद्दे की कि हमें सैनिटेशन चाहिए टॉयलेट, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कम्युनिटी पब्लिक्स हमारे सोसाइटी के लिए. देन वी थॉट कि हाउ वी विल मेक आवर क्लाइमेट that eco-friendly, how we can like जो fecal sludge management plants के बारे में, how we will engage our transgender community to BOV vehicles चलाने में, garbage door to door collections पे, and how we will segregate that our waste to door campaigning पे, and how we have like हम लोग को इसको कैसे वेस्ट को मैनेजमेंट करना है, लिक्विड वेस्ट को, ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेशंस करना, ये सारे जो वेस्ट मैनेजमेंट था सभी में इंक्लूजन अबाउट माय किन्नर कम्युनिटी, माय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन दिस सर्विस. देन इट्स हाईलाइटेड इन गवर्नमेंट लेवल की हाउ हम लोग इसको और अच्छे से कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या चाहिए. जब भी हम लोग के बात आया फिर वहाँ पे फोकस आया, सारे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस आए, अदर स्टेट से लोग आए, आप लोग को रहने के लिए जगह, आई विल टेक 1 more minute ओनली, दैट्स इट. सो ये सारा चीज़ हुआ, लेकिन जब बात अभी मैम का क्वेश्चंस का कि ये तो सब हो गया, लेकिन ये इंक्लूजन सिर्फ इन ए सिटी लाइक भुवनेश्वर इट इज हैपन, बट how we will sustainable, like it has to be like government change, policy change. कभी कभार फिर से जो community partnership, it could be might maybe change, that the contractor will enter to the systems once again, might maybe. So for that reason the major things like we have to focus, like हमें एक एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, हमें नॉलेज शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ ही लाइक एजुकेट हिमसेल्फ, लाइक वो नॉलेज लेने के लिए एक्सेप्टेंस था, तभी इतना चेंज कैन बी मेड. So we have to share this knowledge, we have to advocacy, we have to start like education only not in the school. We have to talk to the education systems to our policy about gender inclusive policy, like education system should be there. And last my one interview I told why that women costumes in our school, like male बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, फीमेल बच्चे ऐसे कॉस्ट्यूम पहनेंगे, तो इट शोज इट सेल्फ कि हम सेग्रीगेशंस कर रहे हैं जेंडर पे. वाई ये मतलब एक कॉस्ट्यूम नहीं डिजाइन कर सकते हैं कि हमें वो जेंडर इंक्लूसिव का स्कूल में दे सका, तो ताकि वहाँ से ही हमारा स्कूलिंग में एजुकेशन में जेंडर इंक्लूसिव आ सकता है. मुझे बोले एजुकेशन मिनिस्टर कि हम लोग ये सेक्सुअलिटी का बात कैसे बात करें, जेंडर का बात कैसे करें, कौन से क्लास पे करें, हम +2 लेवल में करें, हायर सेकेंडरी में करें. तो बोला कि यू डू इन प्राइमरी सेक्शन. जनी जनी यस पापा ईटिंग शुगर, नो पापा के जगह बोलो कि रेस्पेक्ट ट्रांसजेंडर, डू यू पापा और नॉट, वहाँ पे डालो. हम कौन से क्लास में पढ़ाएंगे ऐसा नहीं, हम बचपन से भी पढ़ा सकते हैं जेंडर इंक्लूसिव, ऐसा कुछ नहीं है. जेंडर इज नॉट अबाउट सेक्स. तभी जाके it could be change our inclusiveness, and that way we have to input our sanitations. We should have give a project how to eco-friendly management. उनको बच्चों को सिखाना पड़ेगा ताकि वो लोग उनकी पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, रिलेटिव्स को, हर जगह वो कुछ ईयर के बाद जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. एंड साइमल्टेनियसली as like
CFAR has a lot of responsibility, a lot of knowledge in this 7-year journey. I also get it. So we should replicate it in centrally, in policy level, in ministries. We have to talk to them ki this kind of inclusive what we have done in Bhubaneswar in piloting or in Jaipur, it has to be replicated in all over in India so that it could be more inclusive and more sustainably we can go through Thank you. further. Thank you so much. Thank you. Be multi-pronged, take everybody into account, go beyond just the wash, go into all other systems too, and then take it forward. Thank you. Thank you very much. Can I, is Mr. Ganesh Babu there in the online? मैडम दूसरा मीट ये में Vinay है Bharadwaj, okay. नेक्स्ट मैम Okay. नेक्स्ट स्पीकर के बाद में Yeah, can I call upon Mr. Vinay Bharadwaj? आप हैं? Sir, can you hear us? Thank you. I think, is it mute? We can't hear you. Mute hai, sir. Please unmute. We can't hear you. Can you unmute him? Sir, सुनाई नहीं दे रहा है. We can't hear you. Can you speak now? Yeah, I am audible? Yes, totally. Thank you. Thank you. So, Thank you. please share with us about your waste management and Okay. that's in resource poor settings. Yeah. Very good afternoon to everyone. Or first of all, I would like to say thanks to C4, Australian Aid, Water for Women, for giving me this opportunity. And special thanks to Ravi sir. And I was very much interested to join this program at Delhi. But unfortunately, due to some assignments, I couldn't join. So it's okay. So being a hydrogeologist or you can scientist, I am associated with CFAR in Jaipur urban cluster for last 3-4 years, and they have done a wonderful job in terms of you can say wash. तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि everybody knows कि Rajasthan state is the largest state in the India geographical wise. If we will compare with the other states in comparison to country, so 10 to 11% area falls in the state, and where the population is about 5.5%, but the groundwater resources are very meager. So they are about, you can say, 2.7%. Maybe surface water, maybe groundwater. So I would like to express you कि in the present scenario, about 72% part of the state falls under overexploited category. So you can understand the severity, and the temperature is very high because due to an arid region, surface water is meager. So directly or indirectly, we are dependent on the groundwater resources for agriculture, for domestic and drinking, or for industrial purposes. So now this is a very big challenge ki how we can meet out from this problem and how we can provide the water in every sector. So this is a very big challenge to the government and as well as the administrator. And if you will see the impact of climate change on groundwater regime, so you can easily understand कि before last 1 or 2 decades you can see कि in the earlier time the rainy season were 4 months. Now the number of rainy days reduced, or they are about 30 to 35 days only. So number of rainy days reduce, while the pattern of the rainfall is low and erratic. अभी आप देखेंगे मैम कि दिल्ली में आप बैठे हैं तो किसी एक पार्ट में भी बरसात हो रही है और हाफ एन किलोमीटर या किसी दूसरी डायरेक्शन में आपको पता पड़ेगा वहाँ रेंज नहीं हो रही है. तो इस प्रकार का बिहेवियर, या अभी एक बरसात हुई तो उसकी जो इंटेंसिटी है कि 200 मिलीमीटर विद इन हाफ एन आवर में वो पानी एक साथ गिर गया, फिर 15 दिन तक कोई बरसात नहीं हो रही. तो इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रेनफॉल पे आया, उसके चलते एडवर्स इम्पैक्ट आया ग्राउंड वाटर रिजीम पर. तो ग्राउंड वाटर टेबल इज यू कैन से कि डिक्लाइनिंग डे बाय डे, and quality is also deteriorating.
So this is a very big challenge. So we can meet out from the so many solutions are there, short-term solutions are there, long-term solutions are there. But I would like to give one example of Atal Bhujal Yojana. Because in Atal Bhujal Yojana, the main, you can say the objective of the Yojana was the arrest in decline in water level, community participation, and important thing is women participation was very important. So this was done by the World Bank and Ministry of Jal Shakti कि in every policy and planning making regarding the groundwater resources management, there should be 33% women participation is necessary. Otherwise, no water security plan and no activity will be carried out in the field. So this is a very good sign in terms of the gender equity in especially Atal Bhujal Yojana. And I think, madam, ki with the community participation is a very important thing for the success of every program, or in CFAR, or you can see in the WASH program, the CFAR engage, sensitize, and mobilize the local stakeholders in the slum areas. So this is very important. So they can adopt the interventions, and we can ownership can be developed there. So without ownership, you can do one thing कि we can provide the structure and amenities and facilities. But important thing is कि after providing these things, Yeah. who will maintain the these structures or equipments, and who will manage such type of the interventions. So this is a very important aspect. And दिस इज अर्लियर जो मेरे स्पीकर्स थे, जैसे इन्होंने बताया कि जो ग्राउंड वाटर एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली आपके स्लम एरिया में। तो देखने में आता है कि मैम जो पॉलिसी और प्लानर्स हैं और जो हम लोग हैं, तो वी ट्राई ओवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि अनकंट्रोल्ड जो हैबिटेशन विदाउट यू कैन से कि सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज, बहुत सारी कॉलोनियाज बसती जा रही है मैम, डे बाय डे डे बाय डे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सब लोगों को किस तरीके से हम सेफ और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें। फिर भी एक कोशिश रहती है कि इनको टैंकर्स के माध्यम से, और इनको वहाँ पर अपने एक लार्ज टैंक्स है, अपने टंकियां हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो वहाँ पर को दखल रखता है, जिसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, वो लोग ही जो सोसाइटी के प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वो लोग बाहुबली के रूप में ये सारी चीजें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और रेस्ट लोग उससे पीछे वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए जो सीफार जैसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि इनका जो इंटरवेंशन और इनका जो इनिशिएशन है कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर लोगों को सेंसिटाइज करना, मोबिलाइज करना, और उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज और टास्क है। Thank you, sir. Thank you very much. Wonderful. And all your suggestions will be taken seriously, and we'll continue to work with you, to bring about this, what you're saying, both a mindset change and ownership. Thank you. दोनों मतलब जरूरी है. Thank you. Thank you very much. Definitely. Thank you very much, ma'am. Thank you. Mr. Ganesh Babu, आप हैं? You online? Can you hear us? Can't see. Should I move to Mr. Yes, ma'am. Just a minute, ma'am. Yeah. आ गए? सुनाई दे रहे? Yeah. Mr. अतुल शर्मा, आप हैं? सुनाई दे रहे? But can't hear him. मैम अतुल शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, thank you. Thank you very much. Can you hear us? Are we audible? हाँ बिल्कुल 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 audible. बताइए
please tell us, particularly all your, all the work you've done in building capacity, the roles that you've played in strengthening community engagement and their capacity. सर, आप अपना अनुभव बताइए और आपका सुझाव भी बताइए. सभी को नमस्कार. बिल्कुल जैसा मैम ने कहा, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ में मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा. मैंने लगभग 10 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के और इंजीनियर हूँ, and I am looking after all the machines and the vehicles of solid waste management and sewer maintenance of Jaipur city. Okay. सीवर लाइन क्लीनिंग, और इसी के रेफरेंस में सीफार से भी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. ये काफी स्लम एरियाज में वाटर सैनिटेशन वर्क जब कर रहे थे, इनको सबसे पहले एक प्रॉब्लम आई कि जहाँ कच्ची बस्ती या स्लम एरिया में जो उनके सेप्टिक टैंक्स बने हुए थे, उन सेप्टिक टैंक्स को खाली करने का, क्योंकि सीवर लाइन नहीं थी, थ्रू सक्शन मशीन इनको खाली करने का एक टास्क मिला. उसमें जो हम बीइंग मैं नगर निगम का मैं इंजीनियर हूँ, और हमारी जो बाउंड्रीज, हमारी जो पॉलिसीज, हमारी जो गाइडलाइंस थी, उसमें सक्शन मशीन पर ट्रिप या पर प्रॉपर्टी के हिसाब से ₹500 में हम अवेलेबल कराते थे. जब सीफा ने प्रॉब्लम बताई कि slum areas cannot afford ₹500 for the purpose of only the cleanliness of their tank, तो फिर ऑल्दो कि भाई इसमें हमारे रूल्स, हमारी जो गाइडलाइंस थी वो हमारे को मना कर रही थी, फिर भी हमने इसमें एक वे आउट निकाला बैठ के कि हम वो सक्शन मशीन ₹500 पर ट्रिप में ही सीफार को देंगे, और सीफार विल कोऑर्डिनेट विद 4 or 5 स्लम हाउस होल्ड, जिससे वो ₹100 चार्ज करके ही और उसको फैसिलिटी कर सके. और सीफार ने इसको किया, और काफी बड़ी एक प्रॉब्लम जो उनकी थी, उन सिटीजन्स की थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हमारी थी कि हमें विद इन गवर्नमेंट सिस्टम या उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे. उसमें सीफार ने काफी अच्छा काम किया. इसी तरह जब अभी जैसे मुझे इन्हीं के साथ हमने फिर कैपेसिटी बिल्डिंग जब इनसे इंट्रोड्यूस हुआ, वी आर आल्सो फेसिंग, हमारे पास में, मैं तो इंडिया की जैसे बात करूं, हमारे पास काफी अच्छी पॉलिसीज, काफी अच्छे सर्कुलर्स, फंड्स का भी मैं मानता हूं कि इतनी स्कैर्सिटी नहीं है किसी भी काम से. हमारे पास काफी अच्छे ऑफिसर्स, काफी अच्छे एनजीओ, सब कुछ है. इन सब को करने के बाद में सिटीजन्स भी बहुत कोऑपरेटिव है. हमारा जो परसेप्शन कई बार काम करता है कि सिटीजन कोऑपरेट नहीं करते, कोऑपरेटिव है. इन सभी एफर्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है, या वो हम कहीं ये कर सकते. अभी हम किसी भी सेक्टर में कटिंग एज है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड है, उस पे बहुत ही काम करना है. हमारा एक्चुअल किसी भी पॉलिसी, किसी भी काम को करने के लिए जो लगभग 500 मशीन ऑफ व्हीकल, वास्तव में उनकी किसी भी एक्टिविटी के लिए जो वर्क फोर्स है, उनकी ट्रेनिंग और उस पे बहुत ही ज्यादा का काम हम सबको करना है. अब मुझे बहुत लिमिटेड टाइम में कुछ बोलना है. मैं 2-3 एक जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है एक्सपीरियंस में, उसको मैं डील कर बताना चाहूंगा. हमारे को जैसे अभी मैं इंजीनियर हूँ, अभी बिल्कुल समझ सकता हूँ कि लगभग किसी भी सीवर लाइन या वाटर सैनिटेशन को हम डिजाइन करते हैं 135 लीटर पर हेड या पर उसके, या 120-150 लीटर. उसमें पोर्टेबल वाटर हार्डली 2 to 3 लीटर्स, और हमने दोनों को मिक्स करके हमने हमारे वाटर और सीवर सिस्टम को डिजाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड आगे भी मतलब ये जो काम है, ये तो छोटा सा झलक था जो हम लोग किया है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पायलट
we need to now scale up a lot of the, what you're saying, regulation as well as capacity building. दोनों हमको scale up करना पड़ेगा in the times to come. Thank you, Mr. Sharma. Thank you very much. Is Mr. Ganesh Babu available? Is he online? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much for joining us. बताइए, आप please tell us about all the sort of, particularly the circularity, the circular economy, what, the kind of contribution that, the last, and how do we take it forward? Yes, thank you very much for giving me this opportunity. We in Bhubaneswar Municipal Corporation are very much engaged with CFAR for last several years, and they have been very active as far as engagement with sanitation staff is concerned, providing of PP kit training and other awareness aspects. So as far as circularity of the sanitation is concerned, we here in Bhubaneswar on daily basis produce around 880 metric ton of the waste, out of which approximately 400 metric ton is of dry waste and the remaining is of the wet waste, and we generate wealth out of the waste. So we in Bhubaneswar, especially in Odisha, we have gone for a decentralized model of waste management. So thereby establishing MCC and MRF, and we have engaged around 67 self-help groups, approximately 1,000 women who are working on these aspects, and they are the main force behind the sanitation aspect. And through the engagement of these women into the sanitation value chain, we have maintained that gender inclusion in sanitation. And many of these women are not only the brand ambassadors of Bhubaneswar as far as our decentralized model is concerned, they are the actually the change makers as far as the social inclusion is concerned. By engaging or maybe by partnering with the BMC, they have not only brought the change in the society as far as their community is concerned, they have also brought the change in their families. See, any woman who is earning member in the family will get the respect as far as our societies is concerned. And many of these women are the success stories of this sanitation value chain. And they are the important and the catalyst of this circularity of the economy is concerned. And we are also equally emphasizing on disability friendly sanitation value chain also. We have engaged many staff in our toilet cleaning related aspects, and many of them are physically challenged. We can see they are physically abled person, not challenged. So they are actually doing their sort of contribution towards the sanitation as far as this wash is concerned. And majority and the most important aspect is social inclusion. The sanitation is not only related to particular caste, creed, or community. As far as these women are concerned, we can see the multitude of engagements from the different sections of the women into our sanitation value chain. BMC is actually feeling proud to be the partner with these women as far as sanitation is concerned. And the proof of the pudding is that, you're ranking some 30 in the, Swachh Sarvekshan or whatever. And that's a big sort of, gain that you have made in the last 4 years. And I think your communities are, your champions. Thank you very much. And we hope to continue the partnership with you and take it further. Thank you. Thank you very much. Thank you. Our last speaker, Neelu, I'd like you to just sum up some of the sticky questions and some of the promising, Thank you, Akhila ji. And CFA team, thank you very much. और साथ ही में आ रही आवाज? नहीं आ रहा है. ऑन है. हेलो. So आप सभी को नमस्ते, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को जो समुदाय से जो व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने मतलब मैं पर्सनल लेवल पे बोलना चाहूँगी कि मेरी समझ बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत ज़बरदस्त रहा है. सो ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अब मैं शायद लंच के बीच में आ रही हूँ सबके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं 2 मुद्दों पे बात करूँगी. बेसिकली यहाँ से जो सीख बनी थी कि इंटरसेक्शनैलिटी पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आ रहा है कि इंटरसेक्शनैलिटी
एक कॉर्नरस्टोन है, इस प्रोजेक्ट का कॉर्नरस्टोन रहा है। तो बट समुदाय के साथ में बातचीत करने के बाद में और स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद में मेरी एक समझ बनी कि इंटरसेक्शनैलिटी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है आगे भी आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में। तो मुझे लगा कि लाइक 3 तरह की एक मल्टीलेट मतलब 3 लेयर्ड अप्रोच हम इसमें लेनी चाहिए अगर हम जेंडर और इंटरसेक्शनैलिटी को इंटीग्रेट हम करना चाहते हैं वॉश के मुद्दों पर। 3 तरह की इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब हमने समुदाय से बातचीत करी तो हमें 3 तरह के लोग देखने में आए। एक तो सेंसिटिव लोग थे, जेंडर सेंसिटिव कह सकते हैं जिनको, एक इनसेंसिटिव ग्रुप था, और एट द सेम टाइम एक ग्रुप था जो रेस्पॉन्सिव हम जिनको कह सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों तरह के ग्रुप्स के साथ में मिलकर एक पूरे प्रोजेक्ट साइकिल में हम इन तीनों के ऊपर काम करते हुए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके अलावा लाइक जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, इस वॉश से रिलेटेड जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं उनमें उनके साथ में काम इस तरह से होना चाहिए जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो जो कि सीफार के प्रोजेक्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जब जब हम लोगों ने जब कम्युनिटी कंसल्टेशंस किए या स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस किए, तो ये निकल के आया कि प्रत्येक जो पहले भी हमारे पहले किसी वक्ता ने भी बोला कि इसमें जो ऑफिस बियरर्स ड्यूटी बियरर्स जो थे और जो राइट होल्डर्स थे, उनका उनका इंटरचेंज हो गया एक तरह से, लेकिन इनमें फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। तो ये काम सीफार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इस प्रोजेक्ट में करके दिखाया। इसके अलावा लाइक एक एक मुद्दा जो निकल के आया था पूरी उसमें, वो था एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को। ये मुद्दा सिर्फ सीफार के काम में ही नहीं निकल के आ रहा है, ये मुद्दा सभी जगह पे निकल के आ रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, बना तो बहुत दिया। अभी रिसेंटली हमने सीफार के अलावा एक स्टडी किया था जिसमें उदयपुर के 100 स्कूल्स में हमने जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, एंड इट वाज शॉकिंग टू सी दैट छुट्टियों के बाद में 2 महीने की छुट्टियां जो गर्मियों में होती हैं, छुट्टियों के बाद भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो मतलब पूरी तरह मतलब जीरो पे ही आ चुका था एक तरह से, किसी भी लायक से वो यूज होने के काबिल नहीं था। तो ये जो हम इतना जो पैसा हो रहा है, खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको एक बार खर्चा करने से बात नहीं बनेगी, उसके ऊपर हमें एक मेंटेनेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज की डायलॉग में जिसको हम एम बोलते हैं, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मेंटेनेंस। एंड अगर हम आगे क्या ले जा सकते हैं, किस तरह से इसको स्केल अप कर सकते हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग मेरी सीफार के प्रोजेक्ट को समझने में आई, उसमें एक मोटा मुद्दा ये था कि ये जो कम्युनिटी रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं देख के बहुत अचंभित हुई थी कम्युनिटी रेडियो के कॉन्सेप्ट को। एंड मैंने एक सेशन भी, लाइव सेशन में मैं रही थी वहां पे। तो जिस तरह से समस्याओं का हल हो रहा है इस कम्युनिटी रेडियो के थ्रू, इसको अगर हम स्केल अप करें और ना सिर्फ जयपुर की कुछ सीमित एरियाज में रख के ही हम काम करें, बल्कि इसको आगे भी ले जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है। इसके अलावा लाइक एक इशू, क्योंकि अब हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो और पिछले 2 महीने दिल्ली के ऊपर कितने भारी थे वो हम सब ने देखे हुए हैं। तो इसी तरह से लाइक हर जगह जब हम डिजास्टर और रिस्क की बात करते हैं, वो वॉश से अलग नहीं हो सकते। तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर भी हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे डेफिनेटली बात होती है, पर वो जो आप बोल रहे हैं जेंडर सेंसिटिव बात या जेंडर इंटीग्रेशन वाली जो काम है, वो इसमें अगर किया जा सके तो बेहतर रहेगा। अ, इसके अलावा लाइक कुछ ऐसा है कि डेफिनेटली जैसे पहले वक्ता ने बोला कि मतलब सिस्टम के पास में कोई जवाब नहीं है आपके सवालों का। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 7 साल का जो इंटरवेंशन रहा, ये उन्हीं जवाबों को खोजने की एक शुरुआत करेक्ट। थी।
Yeah. This was a beginning, in fact, a very profound beginning, and I congratulate the whole CFAR team for this. So I think I have not gone off the track and Yeah. tried to answer. Thank you. Thank you very much for all your suggestions and, thinking through the process. Thank you. There are some people who want to ask some questions. So I know it is late for lunch, but can we have at least 3 questions? आप में से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हम 3 सवाल लेंगे। हम 3 सवाल लेंगे, तो कोई Hey, it's working. Hello, hello, hello. जी, डॉक्टर आचार्य को दीजिए। जी। Yes. Thank you. I know the time is a constraint, but I just thought I'll flag this aspect. Thank you so much for bringing on board these many issues that we have on this connect that we are building between climate resilience and WASH. All this while, we've been talking from the perspective of the users. How can we make the populations, vulnerable populations, particularly accessible to WASH? I just thought it may be a good idea to also deliberate on the providers of WASH services. I'm sure there is a component in the work which WASH has done, but we probably need to go beyond that because they are the ones who are being impacted both by climate resilience and also with WASH. Just about a women sanitation worker. What are the provisions for when she's menstruating, for example? Disposal, of course, we've talked about. Thanks. I'll just flag this. Thank you, Dr. Asha. Session. A lot of that is going to be. Good afternoon. Please introduce yourself also. Myself, Ambika Tiwari. I am SYS member. I have one question from Coal Radio, ma'am. I was just asking, I think Coal Radio, it's only in Bangalore. So I want to ask, if I call in Coal Radio phone number, so it is provided in Delhi? ये जो कम्युनिटी रेडियो है, जनहित वाणी या जयपुर वाणी, ये टोल फ्री नंबर है। अगर आप जयपुर वाले नंबर को ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा दिल्ली में, आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और बाकी जो बाहर कियोस्क लगा है, वहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं, आप जाके एक बारी उनसे बात करेंगी तो आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा, और अगला जो सत्र है उसमें भी आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बताना पड़ेगा कि आपका समस्या दिल्ली में है, जयपुर में नहीं। Yes, ma'am. Any more questions? कनक? Yes. उनको करनी। जी। Urvashi, you'll have to speak up in your. Now it's on. नमस्ते सभी को, मेरा नाम उर्वशी तिलक है और मैं CSJ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा एक तो ये डिसेमिनेशन देख के, इस पे जो टॉपिक्स डिस्कशन हुए हैं, इट्स ब्यूटीफुल टू लर्न द अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक सवाल आ रहा था और थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी, क्योंकि हमने बात किया कि कितना महिलाएं और जो बच्चे हैं, स्पेशली फीमेल बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जब पानी की बात आती है, और कितना परसेंटेज टाइम भी बच जाता है, ये हमने पिछले पैनल में देखा। मुझे ये जिज्ञासा हो रही थी कि क्या रिसर्च के दौरान या फिर कभी जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते थे, उस दौरान कभी इस तरह का वाकया हुआ कि यौन शोषण से संबंधित कुछ बातें निकल के आई, क्योंकि सेफ्टी को लेकर के बहुत सारा कंसर्न आया है, बट आई वाज वंडरिंग कि क्या ये ओपनली आया और कितना हद तक हमने देखा कि पानी के वजह से जो सोल्यूशंस अभी हमें मिले हैं, कम्युनिटी तक पहुंच पाया है, उसकी वजह से क्या कुछ रिडक्शन हुआ, तो उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी थी। शुक्रिया। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि
जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और टॉयलेट घर के बाहर है, सो लेट नाइट में कोई जाना दिक्कत होना, ये सब इज कमिंग ऑन दिस थिंग्स। नॉट ओनली आप सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं हो सकता ये, इट्स अबाउट लाइक अगर एक ट्रांस women also using a toilet in outside, like this is a very womenization things, like अपने अंदर एक औरतपन है तो हर कोई उसका रेप का शिकार होते हैं। तो जैसे कि टॉयलेट पे हो गया, आप यू डोंट हैव साइनेज टू गो एंटर टू ए टॉयलेट एंड यू आर एंटरिंग टू ए मेल टॉयलेट, आपको नॉलेज नहीं है, एक ट्रांस वुमेन एंटरिंग टू ए मेल टॉयलेट, ए हार्श सिचुएशन विल कम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट विल तभी कम हो सकता है, तभी जैसे कि हमें टॉयलेट शुड बी इन ए सेफ्टी कंसर्न इज कमिंग, लाइक हाउ डोर इज, लाइक हमारे पास कितना मजबूत डोर है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, और वो घर के अंदर है कि नहीं है टॉयलेट, दिस all should be a concern area of giving safety sanitations, like not only giving sanitations, like the what our previous sir was telling, the quality, the हमें कितना अच्छा सर्विसेज देना है, नहीं कि स्लम में रहते हैं इनको 5-10 हज़ार सब्सिडाइज दे दो और उनको वो इसी में से कैसा भी टॉयलेट बनाए, सेफ हो अनसेफ टॉयलेट हो, इट शुड बी इन मैटर्स इन दैट वे। एडिंग टू दिस, ये जो बोल रहे हैं तो उन्हीं के साथ में एक, जब रिसर्च के दौरान एक बहुत ही अच्छी चीज दिखने को में आई, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हुए हैं जयपुर शहर में, वो समुदाय के एकदम मतलब बिल्कुल अंदर बने हुए हैं, कम्युनिटी के अंदर बने हुए हैं, ज्यादा दूर मतलब जो हम लोगों ने देखे खासतौर से, वो ज्यादा दूर ये पे नहीं है। बट फिर भी ये क्वेश्चन जब हमने समुदाय से बात करी तो ये क्वेश्चन महिलाओं और लड़कियों ने उसके बाद भी ये बोला कि हमें घर से बाहर निकल के जाने में अभी भी डर लगता है। तो मतलब ये मुद्दा डेफिनेटली आया है उठ के इसके इस रिसर्च के दौरान। बट इसी के साथ में एक मुद्दा, सॉरी बस एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला प्रोवाइडर्स के साथ में क्या, तो प्रोवाइडर्स का भी एक मतलब मुद्दा इस तरह से आया, बिकॉज ये जो गार्बेज वैन्स हैं उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, जब सफाई कर्मी उसमें है तो वो उसी के ऊपर सारा गार्बेज गिर रहा है, खास तौर से जब महिलाएं उसमें हैं। तो ऐसे कई बार हमने वाक्य उसमें से सुने, जब हम सफाई कर्मचारियों से बातचीत करी, कि कई बार तो मुंह के ऊपर भी आके गिर जाता है। तो इन एस्पेक्ट्स को, इन मुद्दों को भी हमें देखने की जरूरत है। Can I Urvashi, just also adding, अगले सेशन में Dr. Shruti Himani is here. She has done a lot of work on urban planning, design, and governance with children and young people. Some of them are actually here. You will hear a lot about issues of safety in public spaces, in toilets, in accessing sanitation in that session. And many of these people are here. You can actually have a first-hand information on this. And the community radio in both cities has actually responded to a lot of questions on कि कम्युनिटी टॉयलेट्स में जो अनसेफ एक माहौल बनता है महिलाओं और लड़कियों के लिए, तो सिस्टम ने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया है बाय प्लेसिंग टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स विद इन द कम्युनिटी। सो बहुत इश्यूज निकल के आए हैं, बट फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव इट हैज बीन डन इन व्हाट डॉक्टर हिमानी हैज डन। नहीं, और एक बात है जैसे कि मैम बोल रही थी कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, अब उनके लिए भी उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ ए डिफरेंट पॉलिसी टू गिव सैनिटेशन वर्कर इन प्रायोरिटाइज, लाइक उनका हाउसिंग, उनका हेल्थ, उनका इश्यूज, लाइक गारिमा करके स्टेट गवर्नमेंट का ओन एक स्कीम है, उसमें दे ऑल थिंग्स आर कवर्ड एंड द सेफ्टी कंसर्न, लाइक एक वुमेन पब्लिक टॉयलेट पे एक वुमेन एम्प्लॉय इज there to giving services, like women are giving services, trans women are giving the provider services, so we are more concerned about us, no, so that is the like आप community को engage करो वही public toilet पे, not a contractor, not a male person in a public toilet they are using, so these are all like आपको सारी चीज आपको मिल जाएगा। और ये सारा चीज now is like also Odisha government has been like through this knowledge sharing
urban Odisha Urban Academy. That was also things, and whatever the urban things, how it will be come under that knowledge also giving, sharing by other states also as well. A big thank you to all the panelists. And I am sorry, but we will have to cut down lunch a bit. We'll give you 30 minutes for lunch. And we request that आप लोग जल्दी से खाना खा के आइए, because हमारे पास बहुत exciting sessions हैं इसके बाद.
श्रुति का होने उसके बाद हाँ बिकॉज मैं सबको बोलूंगा और मुक्ता को भी बोलूंगा इसीलिए ठीक है छुट्टी बोलने के बाद राधे श्याम सर वो और जेटसी क्लब करेंगे Can I request everybody to please take your seats? We are waiting to begin the next panel. Can everybody who's finished lunch come in? May I help you, volunteers? Please get people inside. So we are now beginning our third plenary session. And for that, may I please request Dr. Shruti Himani, who is going to be moderating this session, to come onto the stage. May I also request Professor Chetan Vaidya, Urban Advisor, former Director, School of Planning and Architecture, New Delhi, and National Institute of Urban Affairs, to come onto the stage. There are two panelists who will be joining us, three panelists actually, who will be joining us online. Mr. Tanush Chandra from MNIT, Planning Department, Jaipur. Mr. Purandar Nanda, General Manager, Smart City Mission, Bhubaneswar. And we also in this session will hear from Dr. M.N. Roy, Sigma Foundation, Kolkata. So over to Shruti. You can call them or they can speak from the seat, whatever you can. We'll leave it to you. Hello, everyone, and welcome back. Can I also ask Manisha and Manu to come over on the stage? Yes, so before we open up the discourse and discussion with the panels, I'd like to take you all through a brief presentation on the Design for Change Urban Design and Planning workshop with young people in vulnerable settlements of Jaipur. So can we have the presentation, please? The next slide, please. The next one. Yes. So we conducted planning and design workshops, and the aim of the workshop was to empower young people from the vulnerable settlements with the knowledge, skills, and also their aid and build their agency to use urban design and planning as a tool to express their aspirations, as well as also come up with creative design solutions, localized design solutions for this settlement. And we hope that through the workshops, we can enable them to become thought leaders, supporters of their community leadership, as well as advocates of transformative change in their settlement. The next one, please.
The workshop also engaged young people to deepen their understanding about the role of urban design and planning and how that can address the challenges associated with climate change, focused on WASH, but also broadened to wider urban challenges and JETC. And it also provided a platform for young voices to design changes they would like to see in their settlement. And we engaged around 80 young people aged 20 to 21 from 10 different settlements across Jaipur. As you can see, the settlements were in two clusters. So we organized two-day workshops, 1 2-day workshop each in a cluster. Next one, please. And the settlements were selected based on a lot of detailed analysis of the slum profiling, which CFAR had already conducted during the course of the project. And the focus was given on the concentration of marginalized population facing multiple deprivation, also looking at the condition of WASH excess, as well as the percentage of households that were affected by climate change. The next one, please. Yes, and great care was taken that the workshop participation represented diverse genders, social economic backgrounds, as well as lived experiences. So we took particular care that we had children, schoolgoers, as well as dropouts, children representing households from sanitary workers, various others like individuals with disabilities, etc. Next one, please. And the workshop adopted a collaborative hands-on approach, and we engaged a lot of activities right from visioning exercises to also creative design activities, as well as mapping sessions. The next one. So the day one was largely on visioning for the futures. So it was more of a self-reflecting activity, but children did sit in groups and work in groups to discuss among themselves about their visions and aspirations for this settlement. And the two key activities that we focused on was Such a Khwab Ek Khwahish, where the children thought about one big challenge that they felt associated with climate resilient WASH and JETC in their area. And they thought about what is that one wish and one dream that they would like to see in their area. So it was a self-reflecting visioning exercise, and also sharing with the rest of the participants. And the second activity on day one was Bhavishya Se Aayi Ek Chitti, where they use design as a mode of expressing their aspirations and ideas of their future settlement. The next one, please. So these are some of the images from the workshop, and the key themes that came out was, of course, improved infrastructure for all. And as you can see in their drawings, they were concerned about disability access, as well as toilets that would include all genders. The other aspects which came out strongly were also safe and inclusive public spaces, spaces in their neighborhood that felt unsafe, or they had marked out as dark zones, how to bring about change in those areas that could become more meaningful places for the community. And second, integration of green spaces. That was one key element that came out. Inclusive, safe, green spaces accessible to all, particularly elderly and young people. And
sustainable community practices. They were quite aware and hands-on about discussing how community involvement or how, say, for example, waste segregation can begin from the community level, and how community practices can contribute to climate change impact. Again, these are some of the images talking about various aspects. The previous one, please. Can we have Aisha's video? This is Aisha, who envisioned a Pakka house for herself with an integrated water harvesting system. चार जने रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी अम्मी, और हमारे बकरा बकरी भी है जिसमें 3 बकरी और 1 बकरा है। और मैंने ये ख्वाब देखा है जिसके अंदर ये घर है जो 3 मंजिल का, और उसमें सारी चीज़ें जैसे और शौचालय, सबके लिए अलग अलग रूम होने चाहिए। अगर पानी की कमी आए तो मैंने इसलिए इसमें ये टैंक बनाया, बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है। हमारी बस्ती में बारिश के लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए सभी घरों में भूमि का टैंक होना चाहिए, ताकि भविष्य में पानी की समस्या आए तो बारिश के पानी का उपयोग कर सके। जल ही जीवन है, जल से ही हरी भरी हरियाली है। Yes, so we'll continue with the presentation. I'll be very quick. Professor Vaidya needs to catch a flight as well, so I'm going to be really quick. So the second day was about mapping, so using what they aspired for and bringing it and working on actual real world problems and how to incorporate their aspirations into workable plans. The mapping exercises involved 3 stages of work. Of course, we did have a lot of discussions and presentation on what is the role of urban design and planning, what are the different policies, and what are the different tools, planning tools that they can use for designing. They mapped resources in groups. They also mapped out the challenges in their area, and finally came up with design solutions. The next one, please. So I'm going to take you through a few proposals. This is Sandeep and his group, and they came up with a water collection and purification system so that they could provide water. Particularly their concern or their problem was the houses in the higher locations in their slums. So it had a steep topography in the area. Although the low-lying houses were impacted by the floods, but the houses on the elevated areas, they did face water shortages, particularly during extreme summer seasons. The next one. This is Preeti and Megha and her group, who identified waste collection as the major problem in their area. Why? Because again, a lot of steep, narrow lanes where the municipal collection van, which made it difficult for the municipal collection van to reach and provide service to every household. So they designed a trolley system and waste collection system. I'm not going into detail, but CFAR does have a report, detailed report. Anyone who's interested can please request the report. The next one, please. This is Manisha and her group, who from all the different challenges and issues that they identified in the settlement, the one that they worked on was on safety. So there was an area, there is an area in the settlement which is a sort of wasteland and underutilized place, and it is not well lit, and they identified it as a dark zone and unsafe place for them. They worked out proposals in which they converted this into a lively public space, including community center, places for children to play with enough lighting. So this is what they envisioned and created plans for this. Can we have the video of Manisha, please?
यहाँ पे जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और यहाँ सेफ जोन से रिलेटेड इश्यूज भी हैं। जो वेस्टलैंड है उसके एक साइड में लाइटिंग वगैरह नहीं है। मैं 10 बजे तक एक्स्ट्रा कोचिंग लेता हूँ। जब आता हूँ ना तो यहाँ पे बहुत सारे दारू पी के खड़े रहते हैं तो उनसे थोड़ा अनसेफ फील होता है। पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन का जो पाइप है वो मोस्टली मतलब बहुत क्लोज डला हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कहीं पाइप में क्रैक वगैरह आ जाते हैं या टूट जाता है कहीं से भी, तो पानी मिक्स हो जाता है पीने के पानी में और सीवर लाइन पानी में। ये मैंने मेरा फ्यूचर हमारे जो कॉलोनी है उसका ड्राइंग बनाया था, जहाँ पे घर थोड़े से मतलब इतना ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है और ये रोड साफ हो जाए बिल्कुल अच्छे से और सीवर लाइन बढ़िया मजबूती से लग जाए। प्लस यहाँ पे जो वेस्ट लैंड था उसके पास में पार्क बनाया था मैंने, हॉस्पिटल है और डस्टबिन है रोड साइड्स पे। खड्डे वाली जगह ये साफ हो जाए बिल्कुल अच्छे से। साथ में मेरा एक ड्रीम है, मैं अपना एक बॉक्सिंग अकेडमी खोलूँगी। थैंक यू। Yeah, so summing up with the key findings, one of the key findings was that the children did exhibit a deep understanding of how climate challenges disproportionately impacted marginalized population, particularly trans people, women, as well as elderly and persons with disability. The second was they did recognize the need for incorporating gender and disability considerations in urban design and planning, and this was evident from the different proposals that they came up with. The next one, please. They also highlighted great enthusiasm. There were times when us as facilitators had to ask them to take breaks in between, but they were so engrossed in working on their plans and designs that they were very enthusiastic, and also very enthusiastic about expressing what they felt about their neighborhood. And yes, the recommendations. One, strengthening the network of trained young advocates who can act as a bridge between the government and the community and different partners and stakeholders. Second, creating opportunities for continued learning so that they are well equipped to tackle urban design and planning challenges and also contribute towards the policies and planning. Third, establish continuous learning platforms for these young people, ensuring that their voices are integrated in decision making. Fourth one, to foster multi-stakeholder partnerships with different sectors and creating platforms where more such discussions happen. And the final one, which is amplifying young voices, which is responsibly using social media, exhibitions, and other platforms so that their voices could be amplified and can reach to more people. So thank you. And we'll end with a final video which sums up the workshop. Thank you.
So yes, I'd like to open it up for our panelists and welcome Professor Vaidya and those who are online. Professor Tarush Chandra, Mr. Nanda, and Mr. Das, and two young girls from Jaipur. Welcome you all. And I'd like to start with Professor Vaidya. If you could share your views on the white paper, on the paper that you just published regarding mainstreaming climate change. Thank you. I think somebody didn't properly introduce Shruti. Me and Shruti have passed architecture from the same college in Baroda. मुझे आज ही पता चला कि हम एक ही कॉलेज से पढ़े, मुझे पता नहीं था। और दूसरा, शायद आप में से लोगों को पता नहीं होगा कि देश की जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है आज, बहुत बड़ी बेस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जिसको गिना जाता है, IIT गुवाहाटी, वहाँ से इन्होंने PhD किया हुआ है डिज़ाइन में। मेरा थोड़ा कुछ रोल था उनकी PhD में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैं उनको जानता हूँ। आज मुझे पता चला कि हम दोनों एक कॉलेज से आर्किटेक्चर किया। बहुत ही सुंदर आपने काम किया है और इस काम को हर एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में ले जाना चाहिए और ये जो वीडियो हैं वो शायद आपको उनको बताना चाहिए। और ऑल्सो आपने कहा कि बच्चों को हम किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं डिज़ाइन में, तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ बच्चों को एम्बेसडर बनाया है टू लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द म्यूनसिपल काउंसिल। दे वर्क एट म्यूनसिपल। दिस कुड बी एन आइडिया वेयर यू कुड कुछ बच्चों को उस शहर में एम्बेसडर, डिज़ाइन एम्बेसडर तक करें, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। ऑफ कोर्स आई नीड टू थैंक CFAR for inviting me, Akila ji, ma'am, for you, and of course Shruti and Joy ji for this invitation. I have to speak on three very different things: planning, design, and governance. But basically today's study we are talking of 3x3 matrix. On one side we have climate, wash, and gender on one part of the matrix, and the other part we have national, we have state, and we have city, and of course then communities. National level, much has been talked in the morning about national programs, and all the lessons, not only this particular thing, but all the lessons which we have learned needs to be incorporated in our mainstreaming WASH projects, all kinds of WASH projects. We at the state level, somebody mentioned there is केरला में कुदमश्री का काम चल रहा है, वुमेन्स हेल्प ग्रुप का बहुत अच्छा काम वो लोग करते हैं। उसमें पानी की समस्या, सैनिटेशन के ऊपर भी वो लोग काम करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी है। उड़ीसा में, जिसमें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, उड़ीसा टॉप टैप ड्रिंक फ्रॉम टैप है। कम्युनिटी लेवल पे भी देश में अलग अलग काफ़ी कुछ काम हो रहा है। जहाँ जैसे साथ है वो अहमदाबाद में इंटीग्रेटेड एरिया प्लान पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह महिलाओं को, बच्चों को, उनके डिज़ाइन, वो ओपन स्पेसिस पे काम करते हैं, जो खुली जगहें हैं उनको किस तरह हम सेफ और सस्टेनेबल कर सके, इसके ऊपर वो काम करते हैं। और ये आपके जो आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी काम लगेगा। एक पूना में शेल्टर एसोसिएट्स करके हैं, प्रतिमा जोशी जी आर्किटेक्ट है, वो डेटा के ऊपर बहुत बहुत काम करती हैं। वो हर घर को GIS मैप पे ले जाना चाहती हैं, उसके बाद हर घर में टॉयलेट का बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल, शी वर्क्स ऑन इंडिविजुअल टॉयलेट मोस्टली। एंड ऑफ कोर्स देश में अलग अलग जगह कूल रूफ भी अभी बहुत चल रहा है, ठंडा छत, ठंडी छत, जो इसलिए हाइट की बात हो रही थी पहले सेशन में, उसके बारे में वो काम कर रहे हैं। हम किस तरह इनको मेन स्ट्रीम करें? आई एम टॉकिंग इन अ मच ब्रॉडर सेंस देन लिमिटिंग टू just design, just broader, much broader sense. I think you should, I'll request Joey for you to look at this. Submit applications for awards. मैं काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ जहाँ पे जूरी की तरह के, जब भी कोई एप्लीकेशन आती है फॉर एन अवार्ड, उसके दो फायदे होते हैं। You force yourself to put it in that format, and secondly it gives you dissemination.
अवार्ड मिले या ना मिले वो दूसरी बात, उसकी बुकलेट छपेगी, हम हटकों में हम 100 हमारे पास आते हैं, हम सारी एंट्री प्रिंट नहीं, हम अवार्ड 11 जनों को देते हैं, लेकिन 30 से 40 जनों को बुकलेट में उनके नाम हम लिखते हैं। तो एक जरा आप इंक्लूडिंग योर वर्क है ना, इसको किस तरह अलग अलग अवार्ड्स में हम करें। इंडिया सैनिटेशन कोलिशन का भी निकला हुआ है उनकी रिक्वेस्ट, बट नॉट एवरीथिंग अवार्ड, हर बहुत सारे, जैसे पहले सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड हुआ करते थे, अब बहुत तरह के फिल्म अवार्ड हैं, उसी तरह हमारे सैनिटेशन डेवलप बहुत अवार्ड्स हैं, वुमेन के लिए अलग है, तो उसके पार्टिसिपेट, इट मेक्स यू राइट इन देयर फॉर्मेट, देयर इज वन एंड इट gives you dissemination automatically without any cost. Other is Debolina ji mentioned it, she invited you to submit for so this has to be turned into e-governing, e-learning thing. So they have two things in there, national national urban learning platform. There are two things. One is they do courses, training courses, e-training courses, which anybody can do at any time. And secondly, they also push best practices. So in both the cases, some of your work will go in best practices, some of your work will go as as your training material. So both could be very important. Then there are some specific state level urban institute like Killa in Kerala, SIUD in Pune and Mysore, and Assam has recently set up an Assam Institute for Urban Development. If you need, I can put you in touch with these people. And that would be useful for them as training material, this thing. They are looking for this work. And then recently Ministry has identified 4 centers of excellence for training. One of my own institute in SPA Delhi, IIT Kharagpur, CEPT and NITC, that is Kochi इनके पास जो है NIT है उसमें है, and they have a lot of money, so they are looking for getting training material and making disseminate and all. That would be a very great thing to do. Also, some communities and cities would will need technical assistance. You know, it was mentioned by, I think Jagan mentioned it, that there is now this urban challenge fund to under this budget to develop specific projects. You can't expect cities and communities to develop projects. There may be a challenge fund, maybe 10,000 crores, 100,000 crores, doesn't matter. How do you expect cities? Maybe 10, 15, 20 शहर जो है हमारे देश के, वो जिनके पास ऑलरेडी ज्ञान है वो कर सकते हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास पैसे, उनको एक्चुअली पैसे की जरूरत है, पर जिसको जरूरत है उसके पास लोग नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उनको अगर हम कुछ मदद करें इस चैलेंज फंड को और इस तरह के एक्टिविटीज़ को, वो बहुत उपयोगी होगा। और फाइनली शायद ये आपको ऑलरेडी मालूम, काफ़ी अब ऐसी अर्बन कोलैबोरेशन कहते हैं, different NGOs are coming into groups for climate change. One is there in Pune. We are also trying to set up in Saath one urban collaboration working on climate change and informal sector. So I think all this could become a very good material for that. Shruti, you'll have to excuse me, I'll not speak about my paper. मैंने अभी एक पेपर लिखा है जिस तरह क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे अर्बन डेवलपमेंट में मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। Unfortunately, I must excuse myself, sorry for this, हमने इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में उस पेपर में ज़्यादा बात नहीं की है, तो इसलिए मैं वो बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जब भी ये पेपर रिवाइज होगा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय NIUA एंड मिनिस्ट्री, जब ये रिवाइज होगा तो इनफॉर्मल के सेक्शन के लिए, सेक्टर के लिए अलग से इस पेपर में हम इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। Thank you, Professor Veti, for your wonderful suggestions. We've penned it down and we'll look into it definitely. Can we have Tarush Chandra, Professor Tarush Chandra here? My question to you, sir, would be how can academia contribute to climate change challenges and involving the aspirations and needs of young people? Good afternoon, members on the dais, off the dais,
the dignitaries and the team which has made this day wonderfully organized. And thank you, Dr. Shruti and Dr. Jain, for inviting me and giving me the opportunity to be here and share the dais with Professor Chetan Vaidya. Sir, it's in my honor. I have been listening to some of the wonderful deliberations since this morning, Dr. Shruti, in which the learned experts shared their views. And some facts that I could gather from there were regarding this wonderful work which CFIR has taken up. And where very right in the beginning, Mr. Amod Khanna, while he was presenting his views on the project, he said, what once when the project concludes? As the project has been very successful, so, but what thereafter? And then he said some way forward. So those were very encouraging. Then the First Lady from the Australian High Commission also made her pledge very clear that the government of Australia is very much in for safe water and hygiene throughout the project, and that is what is the aim of the project. So with all due appreciations and acknowledgement to whatever the contributions have come from the Australian government. And this project has been seen that success till date. And as Professor Vaidya also quoted Mr. Jagan Shah and of his words about the Urban Challenge Fund, I do agree, sir, that this fund may be used well, and organizations like CFAR and other planning schools and Center for Excellence, which have been established by Government of India, can also help in capacity building of these organizations to do more and to do better. So, but one thing which Mr. Shah very rightly pointed out, that the thrust should be on infrastructure development as it has been. So these centers should look more in terms of developing infrastructure. And our area which was proposed by Ms. Natasha Patel was about what they were considering from their perspective was the rivers joining the holy towns as their condition. She mentioned about River Gomti. So there were some really good deliberations coming through. Now, I would take up from here, as we are talking in terms of climate resilience and where can academia pitch in into helping the masses. See, as a part of our program, we keep doing academic exercises and we take up some good research, both at doctoral and at master's level, in which we pitch in the projects which are of contextual importance, and also many a times, as to quote very last, recent one was an entry which was much appreciated. There is a Reimagining Rivers project which is coming up through NIUA, and there were about 18 to 19 entries which were selected across the country. So that was one of the major initiatives where organizations like NIUA promoted people, students to do some good work, come out with recommendations from the young masses. And I'm proud to say that one of my students from MNIT who presented there was also shortlisted, and work was very much appreciated, considering Mithi as Mumbai as a case. And the judges said that you are really a braveheart to take up such an issue which has always been seeing the vendetta of the people and the public and the politicians at mass. So the contributions from academia have been coming through now with Amrut centers coming up, and MNIT being one of those as also an attached institute with that. So we look forward where public's participation can be enhanced to take care of these towns and cities to make them more resilient with respect to their infrastructure, with respect to their position in on the cultural and the human landscape.
and also at the same time make some important interventions which can help the young leaders and the young minds to work more and produce something which is more reliable and dependable that way. I would also like to bring here a case from the heritage when we are talking in terms of our wash project, and especially with health and hygiene respect to water. Maybe a little off track, but I'll try to join the dots when I say that not every place and places of religious or cultural importance have been lined up along the rivers, but they have been having major water bodies of different nature. And wherever water has been a problem, especially with Rajasthan as a state, there have been water conservation or water harvesting structures. The video which you showed of that little girl, if she also stressed upon the importance of conserving rainwater. So traditionally, we have been having these rainwater harvesting structures as bawdis, something which has today converted, unfortunately, as garbage dump yards. It is very unfortunate that we are getting civilized, but we are doing the most uncivilized and most unrational way of treating our heritage and resources as in terms of water conservation structures. I'm happy to say that an NGO or from Save Our City in Jaipur, Shruti, you may be knowing about it. And in the very recent conclusion of one meet, which was there in Rajasthan International Convention Center, there was an impetus by Wiki chapter of Rajasthan, which said that this is the time when we should intervene and we should lay more strength and new life into these structures. So maybe along with the rivers, the organizations like CIFAR can also look into these old and forgotten structures of bodies, and we can together make water a revolution with traditional structures, cultural ethos, and purity and holiness to prevail all through the landscape. Thank you. Yes. Sure. Thank you, Professor Tarush Chandra, and thank you, Professor Vaidya. Professor Vaidya need to leave because he has his flight. Sure, please. Thank you, Professor Tarush Chandra, and your point very well taken, particularly about our ancient knowledge and traditional knowledge about water conservation and protecting and reviving those structures and involving community in taking pride and continuing to maintain those structures as well. Now, can I please ask Dr. M.N. Roy to please share his thoughts on the topic, please. Yes, good afternoon, everyone. Let me beg apology that I could not be physically present. I'm in Bangalore right now, running around between different meetings. So, I would like to have my feedback, my understanding of this climate resilience in urban areas. That is what I guess is the topic that you want to discuss. And my understanding of working in this area for quite long is that while on the one side you have academic institution, you have research organization, a big organization who are really helping in the generation of knowledge, but one critical point is on the demand side about the people, the urban people who are more affected by
climatic disasters, how they perceive this thing, how are their risk perception can be enhanced, and how they can influence, they can really come forward to tell about their plight during climate change, be it flood or be it heat wave related issues or be it cyclone. And all towns have pockets where the impact of climate change is extremely high. And unfortunately or incidentally, the people who suffer the most, they have the least voice. They really are not organized or really come forward with their problem. So they can be empowered so that they can remain engaged with the policymaker, with the town planner, with the urban administrator, to highlight their problem, and then the solution comes both in terms of infrastructure development as well as acquiring soft skill by the people. So that is one aspect. Regarding hard component, many of these areas which are sometimes trough floodwater remain stagnant there for long or easily. There are other type of climatic problem which hits them fast and the most. So how the urban administration can be sensitized so that they come down to the need of the people. So first problem is the people should be able to and be empowered, which is the key area of focus that CFAR worked so far, what you have seen. So second part is very critical, how the urban policy maker, decision maker, and the top management who are engaged in the urban administration, their governance, how those can be made more responsive to the need of the people who are affected the most. So they do not have much resources, they are unorganized, and they have little voice. So it's very difficult to make both the ends meet, where the policymaker, the urban planner, they come down to that area and really start searching for what can be done and how to go about within the given budget and things like that. And third component that we like to emphasize on, that triggering the responsiveness of urban governance, the system of urban administrators who are there, will be basically driven by acquiring good knowledge of what has happened elsewhere. So we are just now discussing in the previous speakers that how we can disseminate the knowledge that some things can happen. In many areas, you will find that they are fait accompli, the people who are living in such areas, and the urban administration does not have any compulsion to really go and solve their problem fast. They are more busier with those who have the voice, who have influence, and who can come down to them and be with them regularly. So sensitizing them with good practices elsewhere and getting them engaged with maybe exposure visit or maybe sharing of knowledge or dissemination of good practices through whatever channels is possible, that will certainly help them to be tuned to the need of the climate change related disaster that hits the urban area. So far, our experience shows that busier in doing the relief and that type of operation, but planning for disaster risk reduction, community engagement in disaster risk reduction, and taking both mitigation and adaptive measures so that both climate change impact can be mitigated to a good extent. We found in a small hamlet, in a small pocket in Bhubaneswar, where the community says that they are planting trees of their own. They have not sought for any support. So that's the type of community mobilization we found in Bhubaneswar in part of CFAR. But that needs to be scaled up to every pocket. Second is that sensitization of the urban managers, how they will be able to really change their strategy apart from managing the relief and rescue operation to disaster risk reduction after assessing the climate risk, after assessing the vulnerable community, the nature of vulnerability, and how they can join together with the local community to reduce the risk through appropriate adaptation measures, as well as motivating the entire town to join in their effort to mitigate also. We are talking of cool roof. The entire urban households can be made to have their roofs cooled, then probably the impact on the whole town will be much better. So these are the three components I thought I have to mention right now. Thank you very much for giving the opportunity on an online thing, because I could not reach Delhi.
Thank you very much. Thank you, Dr. Roy, and thank you for your three-pronged approach to take this forward. I'd like to call Mr. Nanda to please share his views from the point of smart city mission, please. Madam, sorry, due to some emergency situation, you have gone, madam. Not available now. All right. So we move on to hear the voices from the ground. Manisha and Mano, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि शहरों में युवाओं को लेके जो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को लेके जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ है और जेटसी के बारे में जो हमने बातचीत करी थी, डिस्कशंस हुए थे, वो सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि सबसे चैलेंजिंग इशू क्या है ग्राउंड में और अपने आइडियाज़ और जो भी थॉट्स है उनको आगे ले जाने में? So, good afternoon, everyone. This is Manisha here. So, as you asked that कि सबसे ज़्यादा challenging हमें क्या लगता है? Firstly, I would like to talk about on the ground level that the vision we saw, anything which we have to work on that. So we have to keep all the community peoples in that. We have to include all of them just because like we have to take care of their benefits as well. So they can also participate. They can also give their hand with us for the development or for the fulfill that vision. So we have to take care of all the all the community members, male, female, LGBT plus and all. And also we have to take care of the government, like we have to take support from the government to just do the work. We have to give our ideas to the governments and ask them politely for the any policies or that they can help us, support us for that. Thank you. So you're saying that that we need more collaborative platforms where everyone come together and these discussions can happen and ideas and views can be shared. Yes, of course. Like if we have 2 days of workshop, we got the idea to saw a vision for a community. Before that, I never thought about the idea like this, that much powerful idea that I can transform my community, I can transform my locality with my own vision, which is so useful, safe and effective for the community peoples. Very good, thank you. नमस्ते सभी को। जब पहले हमारे यहाँ जो मैम आई थी, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मुझे मतलब सबके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह खाली है, वहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपने बारे में ही सोचती थी कि हाँ, मेरे माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें। बट जब हम लोग ऐसे मीटिंग हमारी हुई तो फिर काफ़ी लोगों के आइडियाज़ वहाँ से निकल के आए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर अपना कुछ भी मतलब कर सकें। जैसे पार्क, बच्चों के लिए खेलने की जगह, और जैसे भवन वगैरह होते हैं, जैसे शादी रिसेप्शन, कुछ भी हम अपना प्रोग्राम करना चाहें, ऐसा कोई नहीं। हमारे यहाँ ऐसी एक जगह खाली है जहाँ पे बस मैं सोचती थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन वगैरह कई बार उसमें हमने दी तो कुछ हुआ नहीं उसका। फिर हमने जब मैडम ने बताया तो हमें आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उसमें पता चला कि हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें ऐड हो सकती है ना। काफ़ी सारे लोगों से मिल करके पता चला। फिर बाद में जब हमने वो डिस्कशन हुआ तो उसके अंदर हमें काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हम, जैसे मैंने बताया स्कूल हो सकती है गवर्नमेंट, काफ़ी ने ये बताया कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको लेकर के। फिर एक बार हम जब मीटिंग्स में मिले, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को हेजिटेशंस होती है लोगों को देख के, तो वैसे सबको ये मतलब कहने का मीन्स मेरा ये है, जैसे जीडीसी का मतलब ये है कि जेंडर,
इक्वलिटी, डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। तो वही सब चीज़ें ऐड करके मैडम ने हमें सजेशन दिया कि सभी लोगों का एक साथ लेकर के सपोर्ट लेकर के हम अपने इन फ्यूचर चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं और सभी के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें किसी ना किसी का, जैसे मान के चलो मैं अकेली में कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे आप ही जैसे लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। तो आने वाले टाइम में जैसे हमारा जो इंडिया है वो चेंजेस हो जाए। थैंक यू, मैं इतना ही बोल पाऊँगी। थैंक यू। I think we have had some very insightful inputs from the panelists, and thank you very much. We also have two young people from Jaipur. Do we have them? We have Ginny and Choti. Ginny and Choti were participants at the workshop, and Ginny, आप हो? यस मैम, नमस्ते बोलो। नमस्ते। आपका वीडियो ऑन है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हेलो। आ गया। यस। हाँ बोल। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते छोटी एंड गिन्नी। नमस्ते मैम। अच्छा, आप अपने ये जो आपने वर्कशॉप किया अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग, तो उसके अंतर्गत आप कुछ बातें करना चाहोगे? हमारे जो आज मौजूद है ऑडियंस, उनके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? यस मैम। यस मैम। छोटी गिन्नी, आप में से एक शुरू कीजिए। गिन्नी, आप शुरू कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने जो वर्कशॉप किया था ना, तो उसके अंदर ये था कि पहले जो हमारी बस्ती है वो किस तरीके की है, कहाँ से नाला जा रहा है, कौन नेटवर्क। हमने ये भी फ्यूचर वाला भी हमने देखा था कि हमारा जो शहर है, हमारी जो बस्ती है, उसका फ्यूचर क्या हो। तो उसमें हमने ना बहुत सी वो बनाई थी कि ना सड़कें कैसी होनी चाहिए, और सड़कें भी जो जैसे जो बारिश का पानी आता है, अगर अपन पक्की सड़कें बना देंगे तो फिर तो मतलब जो बारिश का पानी है वो मिट्टी में कैसे जाएगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमने वहाँ बताया था। बहुत बढ़िया। छोटी, आप कुछ ऐड करेंगे? दी जैसे हमारी बस्ती में अब हमने क्या नाम है, हमारी बस्ती में हमारे यहाँ पर कचरा मतलब ऐसी फेंक जाते हैं लोग बाग, और जैसे कि रोड कच्ची है, अब जाकर वो थोड़ी बहुत पक्की हुई है, जैसे आगे हमने एप्लीकेशन दिया। और ये सीवर लाइन जैसे बारिश के टाइम, जैसे बारिश के टाइम में क्या नाम है, लोग सीवर लाइन खोल देते हैं, मतलब चैम्बर खोल देते हैं, तो पानी यूं ही जाने लगता है। बहुत दिक्कतें होती हैं, कोई टाइम पे मतलब पानी 2-2 3-3 4-4 दिन नहीं आता, उसमें दिक्कत होती है। तो मतलब हमने सोचा कि क्या नाम है, हमारे यहाँ पर भी जैसे कि 4 बजे 5 बजे पानी तो देते हैं, पर वो पानी का मतलब कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन पानी नहीं आता है, हमें बहुत परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा परेशानी पानी की होती है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो फिर घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पानी से ही होते हैं सारे काम, और जब पानी नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा। इस वजह से हमने ही सोचा था कि क्या नाम है, हमारे यहाँ पर भी पानी रेगुलर आए, रोज आए, एक टाइम की जगह 2 टाइम भी दे। और पानी जितना अपन बचाएंगे ना उतना ही अच्छा है। और अब हम ये सोचते हैं कि नाम है, अब हमारी बस्ती में कई लोग ऐसे हैं जो मतलब मतलब ऐसे होते हैं जैसे कि है ना, किसी से बात नहीं करते। अब हमारे यहाँ पर हमने आते जाते लोग, मतलब हमारे यहाँ पर हमने
एक वो बनवाया सुलभ शौचालय, आगे मतलब उसके बारे में बात करी, एप्लीकेशन दिया हमारे यहाँ पर सुलभ शौचालय के मतलब हमने वो बनवाया, वहां पर हमने आगे एप्लीकेशन दिया। हमारे यहाँ पर जो नेता थे उनसे हमने बात करी, उनके पास जाकर हमने मतलब कई लेडीजों को, कई हमारी जैसी बहनों को, सबको लेकर गए। मतलब हमें परेशानी होती है और भी हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें भी परेशानी होती है। अब हमारे यहाँ पर जो रोड है ना, मतलब सीधा रोड था, वहां पर ऐसे सुलभ शौचालय ये नहीं था, तो उस वजह से हमने वहां पर, वो खाली जगह पड़ी थी तो वहां पर सुलभ शौचालय बनवाया। अब वहां पर जैसे हमारे लिए भी बहुत सुविधा है, और विकलांगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, सबके लिए सब सुविधा है। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्या नाम है, मैं हूँ और मेरे जैसे कई लोग हैं, मतलब उन्हें आते जाते परेशानी होती है। अब हमारे यहाँ पर शादी वादी भी होती है, कोई भी फंक्शन होता है ना, मतलब वहां पर सुलभ शौचालय में जाते हैं, आते हैं, और सारे मतलब सब चीज की सुविधा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और जैसे और जैसे सुलभ शौचालय जो बनाया गया था ना, तो उसमें ये है कि जो लड़कियां औरतें जब पीरियड से होती है ना, तो वो जो उनका कचरा होता है ना, वो वैसे सड़क पे डाल जाती है। तो उनसे ये होता है कि कई गंदगी होती है, जो कचरा उठाने वाला होता है उसको भी गंदगी होती है, मतलब उसमें ना बीमारियां हो जाती है। और कई बार होता है कि जानवर खा लेते हैं तो उनको भी बहुत सी बीमारी होती है। तो जो सुलभ शौचालय है ना, वहाँ पे एक्सीलेटर मशीन भी लगाया गया है, ताकि जो पैड होता है उसको वहां जलाया जा सके, और जो उसको जो क्या कहते हैं, राख होती है ना, तो वो भी क्या होती है, यूज में होती है। थैंक यू छोटी और गिन्नी। इवन एट द वर्कशॉप पे भी गिन्नी और छोटी उनके वहाँ बने हुए कम्युनिटी टॉयलेट को बहुत प्राइडली डिस्क्राइब कर रहे थे, विथ अ लॉट ऑफ प्राइड। इट वाज एन इंक्लूसिव टॉयलेट कंसिडरिंग ऑल जेंडर्स, और उसमें डिसेबिलिटी एक्सेस भी है। और इन लोगों इनके ग्रुप ने बहुत सारे आइडियाज़ पे भी काम किया था वर्कशॉप पे, taking inclusive toilets further into design और universal design को integrate करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you. So I'd like to close this session, thanking everyone in the audience as well as the panelists. And thank you all for being here and giving great inputs and insights. Thank you. We will start with, it will be an interactive session, not a session where we invite panel. Yes. ठीक है, देख लिया। हाँ, वो करेगा। ठीक है, I'll keep that time. So thank you, Shruti. Thank you very much, and thank you, Manu, and thank you, Manisha, and thank you, Choti and Ginny. And लेट मी टेल यू, मानू, तुम्हारा वीडियो मैंने देखा है, उस वीडियो में तुमने बहुत सुंदर बोला है। वक्त नहीं था इसलिए हमने आज दिखाया नहीं अभी, पर हम उसको ज़रूर बाकी लोगों को दिखाएंगे। संजय जी को हम इसलिए ये छोटा सा एक पेड़ दे रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ बहुत मुश्किल होती है चीज़ें करने में, वहाँ संजय जी जो नेशनल बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर ठीक उसी तरह काम किया जैसे बाकी शहरों में हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो संजय जी, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ सीफार। क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो हमारा ये सुझाव था कि हम जो अगला सेशन है हमारा, जो कम्युनिटी रेडियो पे है और जिसमें हम लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम अगला सेशन जो हमारा जेंडर, डिसेबिलिटी और सोशल इंक्लूजन में है, जो रवि, अंकिता और मैं मिलके कर रहे हैं, और लंच के बाद का सेशन है तो थोड़ी थकान भी हो रही है, उसको इंटरैक्टिव बनाते हुए हम उन दोनों सेशंस को एक साथ करेंगे। और इस सेशन की एक बहुत ख़ास बात है कि सुबह से जो लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं और बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे सुनेंगे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो शायद आप इन तस्वीरों के ज़रिए थोड़ा देख पाए होंगे, लेकिन वैसे आपने नहीं सुनी है। और हम जेंडर, डिसेबिलिटी और सोशल इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो तकलीफ़ों की बात करते हैं,
और परेशानियों की बात करते हैं, बेचारगी लाचारी की बात करते हैं और सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा तो करेंगे, डिसेबिलिटी से जो जुड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, महिलाएं तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगी, वो घर में रहेंगी और झाड़ू पोछा करेंगी। लेकिन यहाँ पे हम जैसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, परेशानियाँ तो हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कदम रख के आज तक यहाँ पहुँचे हैं उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पूरी महफिल में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो लाइवलीहुड पे काम करते हैं, सामने सबीना है, इधर अमिता जी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, अंबिका है, सुजाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं या बच्चों के साथ काम करते हैं, उर्वशी है, या आप जैसे लोग जो वर्कर्स के साथ काम करते हैं, राधेश्याम जी हैं जो डिज़ास्टर पे काम करते हैं, और सीफार का जनहित वाणी और जयपुर वाणी जैसा जो एक मंच है उसको बहुत सहयोग दिया है, पीछे अशोक जहांगीर जी हैं, प्लस और भी बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं। तो अंकिता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आ जाएं, रवि आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आ जाएं, और हम लोग इस सेशन को थोड़ा सा जीवंत बना दें जिससे थकान भी मिटे और हम सेलिब्रेट भी कर पाएँ। आइए, इसमें बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, उसको आप ही लोग बुलाइए और आप ही लोग इंट्रोड्यूस करिए। आइए, आ जाओ ऊपर डिस्कस कर लेना। ये लो। और मैं हिंदी में मैं थोड़ा इसीलिए बात कर रही हूँ कि सुबह से इंग्लिश बोल बोल के थक गए हैं, थोड़ा सा अब हम लोगों की आवाज़ में बात करेंगे और उन्हीं से सुनेंगे। A very good afternoon. I know sessions after lunch is very difficult, so I'll try and make it more interactive, as Jui ma'am has said, and we'll talk to the community members, the community leaders, and everyone who is present here, and our distinguished speakers. And we'll definitely, like from the morning you have heard what the project has done, what are the achievements and everything. Now we'll hear the insights from the field, like what actual transformations that have taken place in the field. So that is very important, because if we do not hear from the horse's mouth that what has happened, we won't be able to gauge like what are the things that we still need to do and what are the takeaways from this essential project that has been running for 7 years. So we know that when we talk about WASH, especially in this aspect, we do not only talk about just sanitation, water, hygiene. We talk about empowerment, equity, ownership, livelihood, innovation and technology, and like the Sani Climate Wall is there, and then the community radio is there, and resilience in the face of climate change. So in this aspect, I would like to welcome Dr. Radheshyam Sharma ji from Jaipur. He is the director of IMD. Okay. A very warm welcome, sir. Dr. Manorama Mohanty, Director of IMD, Bhubaneswar. I think she has joined online. Okay, great. Mr. Ashok Jangir, Additional Director, Social Justice Empowerment Department, Jaipur. Yeah, he's joined. Okay, he has also joined online. Thank you so much. Mr. Sultan Ahmed, Director, Gramvani, Delhi. Is he online? Is he online? Sultan. Okay. Please welcome Mr. Sultan. Mr. Sachinanand Patti, Coordinator OSDMA, virtual. He'll be probably joining virtually. Is he here? Yeah. Okay. Thank you so much. And Ms. Michelle Mohan, Manager Program Implementation, Sphere India. Is she here? Thank you so much. Please. I would also like to welcome our speakers from the other session which we have just merged. So Dr. Mukta Arora, State of Head UN Jaipur, UN Women Jaipur. Okay, maybe she'll be joining in some. Yeah. So we'll wait for other speakers to join and then we'll maybe introduce them? Yes. Okay, that would be nice.
So Ravi, you please take on. Yeah. So the session covers two different aspects here. यहाँ पे हम दो मुद्दे के ऊपर हम ध्यान दे के बात करेंगे। एक तो है जो हम सुबह से जो सुन रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो जो जनहित वाणी है जयपुर वाणी के तहत जो दोनों सिटीज़ में जो काम हो रहे हैं उसको I think we should start from that and then we can leverage, we can scale it up. So जनहित वाणी जो जयपुर वाणी के ऊपर जो काम हो रहे हैं हमने शुरुआत किया है 2022 में जो एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो जो वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन के मुद्दे के ऊपर जो कम्युनिटी के फीडबैक रिस्पॉन्स सिस्टम है, ग्रीवेंस सिस्टम ही नहीं है, ये एक फीडबैक रिस्पॉन्स सिस्टम है ताकि जनता को अपनी वाणी को वहाँ पे रिकॉर्ड करके जो सर्विस प्रोवाइडर के तक पहुँच सकते हैं, साथ साथ उनके रिस्पॉन्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक IVR सिस्टम है। मंच पे हमारे अतिथिगण हैं, साथ साथ मैं हमारे कम्युनिटी से भी कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करें। मैं कन्निका भाई कनक है, हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय से हमारा पार्टनर है, सिफार जयपुर सिफार से है। प्लीज़ कनक आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मुस्कान है, मुस्कान जो है हमारा किशोरी समूह से है जो सिफार से लगभग 2-3 साल से काम कर रहे हैं IVRS को लेके। इसके बाद ऊपर बोलने के लिए मुस्कान को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। आ जाओ बेट मुस्कान। आई थिंक सनातना ओझा सर हैं, भुवनेश्वर से हैं, आई थिंक ऑनलाइन जुड़े हैं। सो सनातना जी आप और सदभीश तराई और मिस तारिणी किन्नर, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट हमारे भुवनेश्वर टीम टू रेस्पॉन्ड। तो सर माय रिक्वेस्ट टू द पैनल एज वेल, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन जुड़े हैं तो समय को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी है जो IMD डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप मल्टी स्टेक होल्डर फोरम मेंबर भी हैं राजस्थान में। इन्होंने बहुत मल्टीपल मीटिंग्स और कंसल्टेशंस पिछले 3 साल से जुड़े होकर कम्युनिटी के साथ काम किया है। हालांकि इनकी जो डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है ऐसी कि कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली काम नहीं करते ग्राउंड में, बट उनकी एक्सपर्टीज़ के साथ कैसे उस जयपुर वाणी के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्लाइमेट रिस्क के ऊपर कैसे जुड़ के काम किए हैं। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। Thank you very much. Good afternoon, everyone. So first of all, I'm very thankful to the CFAR for giving me such an opportunity to interact with you. Special thanks to Ravi ji and Jaipur CFAR Jaipur team. Basically, I will not take much time and I will simply want to mention here that nowadays or we can say under the warming scenario, the intensity and frequency of the extreme weather events are increasing nowadays across the globe, and the same impact is also visible in our surroundings also, whether it is western part of India, whether it is eastern part or everywhere. So in recent few years, if we talk about this last year monsoon, it was exceptionally excess rainfall kind of monsoon in the western part of Rajasthan, where it was more rain than the Bihar state. So there is some changing pattern is observed, and on the other hand, the extreme weather events, as I have already mentioned, that is increasing nowadays, whether it is heat wave, whether it is cold wave, or intensity of thunderstorms, or if we talk about the heavy rainfall. So in this changing climate scenario, we also need to mention about the early warning services and its impact of the extreme weather over a particular community. So last 3-4 years back, when Ravi ji and his team visited our IMD Jaipur office, and they talk about that we are dealing especially in the slum areas where this community is highly vulnerable to the extreme weather events.
So although our department or our day-to-day operational activities, we used to disseminate our regular weather forecast, bulletin and warnings through social media platforms, through websites, email, all kinds of possible ways we are disseminating nowadays. And the important thing is for last 2 years, we have been incorporated the impact-based early warning system. सो जब इनके सीफार से मैं मिला और इन्होंने मुझे बताया कि जो स्लम एरियाज है वहाँ पे बेसिकली जो अर्ली वार्निंग सर्विसेज का जो आउटरीच है वो बहुत कम है, बिकॉज दे हैव लेस रिसोर्सेज ऑफ द स्मार्टफोन, they less availability of newspaper, TV, news channel. So in this way, they do not get on real-time basis weather forecast, early warning systems. So they have a very good technology-based dissemination system like Jaipur Vani. So, so their team is directly connected to the slum areas or less kind of a special community. So whenever we used to expect some extreme weather, let's suppose it is heat wave conditions we are expecting in the next week, or above normal temperature conditions we are expecting. So so those kind of informations in plain language along with the impact, what kind of impact can be expected. So if those kind of information is reached to this community also, so that they can take their preparations, so that they can take some measures to mitigate the impact of the extreme weather, whether it is any kind of extreme weather. So जयपुर वानी के साथ में हमारे विभाग का द्वारा जो नियमित रूप से वार्निंग बुलेटिन्स और जो एडवाइजरी इशू की जा रही है वो डायरेक्टली स्पेशली जो स्लम एरियाज के लिए जहाँ पे आउटरीच कम है और जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक साइड जहाँ क्लाइमेट चेंज से वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज हो रही है, ऑन दी अदर साइड द इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इज इंक्रीजिंग और इज हाई in the slum areas because they have less developed, they have less resources, they have their infrastructure or their houses are not well structured. So in all types of weather events, even if it is thunderstorm, if it is strong winds, or if it is lightning, if it is heavy rain, so waterlogging kind of issues also will be there. So to reduce the impact of these extreme weather, this Jaipur Vani is playing really a wonderful job, and they are disseminating all kinds of weather information, and by this way I think we can in future also will collaborate or will way forward in much more better way. And finally our object is to make a weather ready climate smart society. So I think in future also we will work together, and definitely the benefit of the climate and early warning services will be continue for all kind of society. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. In fact, your expertise actually made extreme what you call Indian Meteorological Department a climate and community centric department intervention. I think that was the change which was brought because of your support. I would अभी मैं डॉक्टर मनोरमा मोहंती जी हैं, डायरेक्टर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भुवनेश्वर. आप ऑनलाइन से जुड़े हैं. मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मंच को उद्देश्य में आप अपनी शब्द रखें. थैंक यू. नमस्कार. Am I audible? जी मैम. यस. नमस्कार. अगर हम देखें, उड़ीसा एक स्टेट है जहाँ की थ्रू आउट द ईयर हमारा डिजास्टर इवेंट चलता रहता है. जिससे हमारा मार्च से शुरू हो जाता है lightning, thunderstorm activity, then cyclone, then monsoon, flood, heavy rainfall, extremely heavy rainfall, then post monsoon also cyclone, then heat wave. So many things. Most of the time in the year disaster event occurs, due to which lot of death happens due to heat wave, lightning, thunderstorm. Though there is very less death due to the cyclone,
but still we are somewhere we are lacking to save the life due to the other extreme weather events like the lightning, thunderstorm activity, and heat wave. And for that we have been trying in different social media to reach the community, to reach each and everybody through internet, through WhatsApp, through this Instagram, Facebook, website, and with the help of the state government and also some NGOs like this if your organization. And it is yes, we are giving our forecast by using Sachet app and CAP Common Alert Protocol, and also Satark in association with the state government disaster management authority. But in addition to that, this is also not sufficient. What I believe, still we have to reach to the each and everybody of the community. And also we are also sending the messages like in Odia language, but still in Odisha, if we see each district have some different language, we have to reach to them. And some communities, some rural community, remote areas, they don't even understand the normal Odia language. So what my suggestion is this: through your channel we can reach to the people by using their language, by converting our forecast in their language. Even if Odia, in addition to the Odia, they are typical that village language, what the way they speak. Now also some people are there, even they have little less knowledge in perfect Odia language. So for that also we have to work a lot. And here our these things your organization is helping us a lot, and sending our message. We have the WhatsApp link, we are providing continuously our forecast to them, and they are making it in some communicable language, and they are disseminating. So my suggestion is there in our each and every district, some rural area, they should know our forecast, what the meaning of this forecast is. And also like it should reach to them, like our DG has launched one slogan like Har Ghar Mausam, Ghar Ghar Mausam. We want to reach to that level, and we alone cannot without your help. So this the benefit of mobile community radio, it is with the help of it we can access to reach the people in the most remote areas. We can empower the communities by giving them a voice, what they want exactly. It is not coming to us, we are giving the forecast, we are satisfied, whatever language we are giving they are understanding 100%. No, they should understand also, and exactly what they want, before what time they require the informations. And it will definitely, it will spread awareness on the critical issues like heavy rainfall, extremely heavy rainfall, heat wave, and what they should do, what they should not do, what could be the impact of extreme weather events, and what kind of precaution one need to take. So all these things can be possible by working together. So what I would like to suggest, so let us work together to reach our voice, or to bring out their voice to us, to each and everybody's house. I hope, thank you, and I wish to thank you all, and thank you if your organization by inviting me to speak and to share my experience or knowledge with you. Thank you so much. Wow, wonderful, ma'am. Thank you so much, ma'am. Definitely, there is a lot more work to do. We need to work together and bridge and also strengthen the linkages as well. And to reach, our motto is also to strengthen the community engagement and participation and their partnership also. So definitely we would work on that, and we would seek your support and help and collaboration in the future as well. Thank you, Dr. Mohanty. With that, I would like to invite Shri Ashok Jangir Sahab हैं, एडिशनल डायरेक्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जयपुर. सर, आपसे एक आपसे
हमने लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। आप समाज कल्याण विभाग से हैं, सो आपके लिए एक अलग प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि ताकि हमारे यहाँ पे जो बहुत हमारे साथी हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज साथी हैं, हम जयपुर से भी हैं और ऑनलाइन में भुवनेश्वर से भी हैं। सर, आप इस कम्युनिटी रेडियो को IVRS रेडियो के जरिए या द्वारा क्या बदलाव ला पाए हैं और क्या आगे बढ़ के हमको क्या करना चाहिए? इसमें विभाग का क्या सहयोग होगा, कम्युनिटी से क्या उम्मीद है? सर, आपसे ये प्रश्न है सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। आवाज़ नहीं आ रही सर। आप आई थिंक आप म्यूटेड है सर। म्यूट कर दिया आपने। सीफार के जो टीम मेंबर है वहाँ पे प्लीज़ सर, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हम लोग। सर, क्या आप हमारी आवाज़ आ रही है ना सर आपको? जी, थैंक यू सर। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। जयपुर वाणी का जो VR टेक्निक से जो मोबाइल कम्युनिटी रेडियो का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सीफार द्वारा, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, विशेषकर जो डिसेबल्ड हैं, ट्रांस पर्सन्स हैं और जो एकल नारी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, दात्री महिलाएं हैं और दूसरे जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, इनके लिए उनकी एक आवाज़ बना हुआ है, उनके लिए एक साझा मंच है और इस मंच के माध्यम से वो अपनी समस्याएं हमें बताते हैं और ये समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण इस माध्यम से होता है। यदि ये मंच उनको ये अवसर देता है उनकी समाधान का, इसके साथ साथ हमें उनके विषय समझने का भी, उनके मुद्दे समझने का भी अवसर देता है। कई वर्षों से सीफार जो स्लम एरिया है उसमें काम कर रही है और स्लम एरिया में जो काम जो किया जा रहा है उसमें वल्नरेबल ग्रुप के लोग रहते हैं, डिसेबल्ड रहते हैं, उनको सरकारी सिस्टम से, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वे उनकी भागीदारी बढ़ती है, उनकी जन भागीदारी बढ़ती है, साथ साथ एक सामाजिक क्षमता का मंच उनको मिला हुआ है। आगे भी इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं जो सीफार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं समय समय पर, उनसे जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको सहायता की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति जिनको एक गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ने की जरूरत है, जैसे हमारा विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसमें एक अलग से डिसेबिलिटी डायरेक्टरेट काम कर रहा है और जो ये जो संस्था है सीफार, सेंटर फॉर एडुकेशन रिसर्च, ये सीधे सीधे हमारे से डायरेक्टली जुड़ के काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा सहयोग ले रही हैं और साथ के साथ आगे भी मैं एक ये सुझाव दूंगा या पहले भी हम इस पे काम कर रहे हैं तो उसको हम एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लेके आएंगे। एक सिंगल विंडो सिस्टम जो इनके हेल्पिंग डेस्क के रूप में काम करेगा, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही वो भी एक रिजल्ट के रूप में आएगा और एक हेल्पलाइन का इनका जो सिंगल विंडो सिस्टम है डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो भी शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा। विभाग का उसमें जितना सहयोग विभाग द्वारा ये चाहेंगे संस्था द्वारा, वो विभाग सहयोग देने के लिए तैयार है। और ये दोनों जो हमारा जयपुर वाणी का जो प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी रेडियो का प्लेटफॉर्म है, साथ ही जो हेल्पिंग डेस्क जो होगी, इनकी सिंगल विंडो सिस्टम होगी, ये दोनों मिलके काम करेंगी
तो वल्नरेबल ग्रुप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब सहयोगी होगा, साथ ही उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने में, सर्विस प्रोवाइड कराने में हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे उनको सर्विसेज। और आज इस प्रोग्राम में मुझे बोलने का अवसर मिला या मुझे मेरे एक्सपीरियंस को साझा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं सिफार संस्था का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जहांगीर साहब। बिल्कुल हम आगे समाज कल्याण के द्वारा हम बहुत काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो के द्वारा हो या डायरेक्ट इंटरवेंशन से है। बहुत सारे मुद्दे हैं और हमको आगे बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सच्चिदानंद पाती जी, जो कोऑर्डिनेटर है उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो ऑनलाइन में हमसे जुड़े हैं। सर अगर आप, हाँ, हमारी आवाज़ आ रही है सर आपको श्री पाती? हाँ, आ रहा है सर। एक प्रश्न आपसे है सर, जैसे हम अभी टेक्नोलॉजी के बात कर रहे हैं, IVRS के बारे में हम बात कर रहे हैं, जयपुर वाणी या जनहित वाणी भुवनेश्वर के बारे में हम बात करें कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लगभग 25 साल की एक्सपीरियंस है सर, आप हमको बता सकते कि कैसे हम आगे इसको लेकर जाएं कि लोगों की डिज़ास्टर में जो रिस्क है वो रिड्यूस कर सके और लोगों को अच्छे सुविधाएं मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेसिकली मुझे थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा, आगे आने के लिए थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। जब हमारा यहाँ पर सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहे सर। अच्छा, actually when we have faced the super cyclone in the year 1999, at that point of time we were very much uh, unable to manage our disaster properly. At that point of time, we have used ham radio, that is a community radio, and which was helped us to connect to the rest of the world at that point of time. Okay, so now also we are also working in a very rapidly, we are growing in the field of disaster management, and we have also developed ourselves in a different way and also incorporated the technology in disaster management. Particularly, as Manora Mahathi Madam said, we are also providing informations, planning dissemination through these apps, different apps. There is an app called Satar, which is being available in Google Play, so that we are using that app, and it also helps us to provide data for a particular position in right time. Okay, so we are also incorporating so many things in our disaster management. Similarly, in Bhubaneswar also, in the meantime we have conducted training. Actually, disaster management we have cost 25 years. At that point of time, we are unable to manage the disasters. Now we are managing disaster in a very well, because national as well as international firms also appreciating our effort because of our effort in different activities like capacity building for government officials, capacity building of community, and also we are having our state disaster response force, which is called ODRAF, Odisha Disaster Rapid Action Force. So they're also on fire service also. So we are also providing technique as well as equipment to improve for improvised disaster management. Similarly, we are also taking steps for this warning dissemination. Basically, warning comes to us. In the year 99 also, we got the warning, but we are unable to release the last mile connectivity because of this road connectivity, because of this network connectivity, because of so many issues were there, due to which we have lost 10,000 valuable lives. Now, cyclone, as Madam said, cyclone, we are not losing lives due to cyclone, but there are so many other disasters like snake bite, lightning, and drowning. So these are some of the disasters, localized disasters, which also uh, creating problem for all of us, because human loss is very much in these disasters. So both way, we are also providing capacity building as well as we are also incorporating technology, new technologies in this. So we are also having this EWDS, early warning dissemination system, in our villages, in our coastal villages. As you know, Odisha is having 480 kilometers of coastline, and if you will see that Odisha is prone to multiple disasters. In the meantime, we have identified 325 villages which are prone to tsunami also. So in those villages, we have introduced this yearly warning dissemination system, in which we are also using that DMR, disaster
disaster digital mobile radio. Digital mobile radio, in which we are also sending voice messages as well as text messages. So community radio, at that point of time, when in the year 1999, ham radio, we have used ham radio, and also trained so many volunteers from the field on that ham radio, and also information broadcasting department provided them that certificates. So uh, to excel in disaster management, we need this awareness, this communication, this technology. So all are equally important for all of us. So this is the main thing I want to say. Also, CFAR in the meantime, CFAR has joined hands with BMC, and also we have trained 50 odd volunteers in disaster risk reduction, which is basically for substandard school first aid, and these are the things right now going on, and we need more and more number of NGOs to keep our the people of the community in various types of disaster, and their role and responsibilities in during disaster period. Also, I would like to mention here that there are 2 to 3 community radios also running in Odisha. One is Radio Hirakand, another is Radio Kisan, and another is Radio Namaskar. So they are also doing some awareness activities in their way. Okay. So this much I want to say. Thank you. Thank you so much, sir. So with the experience which you have working with on disasters and all, and CFAR has the platform which is existing and working on different aspects, and we would definitely hope and collaborate to improve and do the services better through a community engagement model, and we will definitely look forward to work with you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. एंड अभी मैं सनातना ओझा जी हैं जो हमारे IVRS स्कॉलर क्लब के सदस्य हैं, जो हमारे सिफा भुवनेश्वर से जुड़े हैं। सनातना जी नमस्ते। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि समय थोड़ा सा कम है, तो हमारी थोड़ा समय को देख के हम थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्ते। भुवनेश्वर हमारा वासस्थान है, जैसे स्मॉल बोलते, जो बोलता है बस्ती व शाही, हम बस्ती में शाही में रहता, फायर स्टेशन शाही, और भुवनेश्वर में हम भी काम करता है। साधारणतः हम जानता नहीं था, हम बस्ती वासी में काम करता था। उसके बाद हमको जो जनहितवाणी जाकर सीफायर एक दिन हमारा बस्ती में हमारा शाही में जाकर के मीटिंग करता था। हम उधर से बस्ती से आता था, एक जगह घर भागता था, झोपड़पट्टी भागता था, हम उधर से आता था। फिरने टाइम पर हम देखा सीफायर मीटिंग करता था। क्या मीटिंग, कौन विषय कैसे कर रहा था, हम तो वो चीज जानता नहीं था। जैसे हम बोले कि थोड़ा बैठो, हम मूसा बोल के हम बुलाया, हम वहां पर बैठने से हम समझा भी, निज अनुभव किया कि देखो सीफायर एक जनहितवाणी, जो सब जनता का हित के लिए जो काम करता, बस हमें उसमें शामिल हो गया। हम जानता जनता का काम हो रहा था, इसीलिए हम बोला ठीक है, हम तो जनता का काम करता, बस्ती बचना काम करता, ये तो और अच्छा हुआ, इसमें भी काम करेगा, थोड़ा हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम सीफायर में जोड़ लिया। और जनहितवाणी में हम विशेष काम करता, जब काम करता हम जनहित, जैसे खाली हमारा एक साई है नहीं, पूरा भुवनेश्वर में 536 की 500-600 साई होगा बस्ती, और सभी साई से कैसे हमारा जनहित माने जन का प्रभाव पड़े, माने सीफायर का प्रभाव पड़े, जनता को उपकार हो, लोगों का उपकार हो, माँ बहन को उपकार हो, इसलिए हम सोचा कि नहीं, इसमें थोड़ा काम करने से भी अच्छा हमको लगा, इसमें हम काम किया। एक में प्रॉब्लम में हमको था, जिसको बोलते हम रेडियो वार्ता, जो इसमें हमको बहुत प्रॉब्लम था। कोई चीज का दिक्कत होता तो थोड़ा नाला जाम हो गया, कि पानी का दिक्कत हो गया, कि कोई वर्षा हो गया, वर्षा में नाला ये हो गया, कि हवा पवन आया, उसमें हमको बड़ा हितर बानी आया। जनहित बानी में हमको घर में बैठे हुए एक तो नंबर इसमें रहता है, 1 थारू 9 पर्यंत लास्ट 0 रहता, उसमें हमें नंबर टिपने से, एक नंबर हम टिपने से वो नंबर चला जाता है, वहां पर सीफायर में ऑफिस में चला जाता। वहां पर जाने पर वो लोग जो बोलेगा हम पहले इसको सुनेगा, सुनने के बाद फिर डबल नंबर हम मारेगा। उसके बाद हमारा जो समाधान माने समस्या है, वो समस्या के बारे में हमें इसको
दे देने के बाद वो लोग उसका समाधान, जो हमको 8 दिन 10 दिन लगता था, कोई चीज तो एप्लीकेशन लिखने में टाइम लगता था, सब चीज, किन्तु घर में बैठे हुए हमारा माँ बहन लोग हो कि बेटी लोग हो, माने घरे बैठे बैठे जनहित बानी में माने बैठे बैठे समाधान हो जाता। जैसे नाल में गंदगी हो जाता, नाल में पानी नहीं रहता, कचरा भूजता, भल मंद करता, इधर पब्लिक माने बस्ती बहुत छोटा गली गली है, रास्ता पानी जम जाता, घर में इधर उधर पड़ जाता। ये गली में पानी जिसे समाधान होता, वो बीएमसी से कनेक्शन रहता, बीएमसी वाला आकर के नाला वाला सफा भी कर लेता। उसके बाद ये पानी नाला पर धर पानी ना पाइप गया, उसमें भी पानी गंदा पानी का लिए भूज जाता है। उसका लिए हमारा बस्ती में ऐसे भी हुआ था, जहाँ कि हमारा सिर्फ माध्यम रे कि हमारा जनहित बानी द्वारा ये नाला भी हमारा अच्छा पानी आया। फिर भी पानी का दिक्कत है, माने जिसको हमको सरकार, तो हमारा सरकार हो कोई भी बोलते पानी बोलते देते, फिर भी हमारा कम कम पानी आता, जिसमें दिन भर आना चाहिए, इसके लिए हमको 2 घंटा आता बस। ये सब उन्नत बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सनातना ओझा सर। आपसे हमेशा हम बहुत सीखने को मिलते हैं। दरअसल आपसे हम भुवनेश्वर में बहुत बार मिले हैं, जो IURS को लेके हमने आपसे बहुत बहुत चीज़ें सीखे हैं, और आगे सीखने की मौका भी आप दीजिए। ऐसे ही आप कम्युनिटी समुदाय के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने साथी कर्णिका भाई हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, आप अपना अनुभव मंच से पेश कीजिए। आप इधर भी आ सकते हैं, थोड़ा समय इधर आ जाइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कर्णिका बाई है और मैं प्रोफेशनली एक म्यूरल आर्टिस्ट हूँ। मैं वॉल पेंटिंग्स करती हूँ, साथ ही जयपुर नगर निगम हेरिटेज में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की ब्रांड एम्बेसडर हूँ हेरिटेज में। तो लगभग 4 साल हो गया है मुझे सीफार से जुड़े हुए, और इनके साथ काम करते हुए मैं इनके वॉल पेंटिंग्स पेंट करती हूँ, जहाँ वॉश के ऊपर पेंट करती हूँ, जो पीरियड्स के मुद्दे उनके ऊपर बात करती हूँ, जाके जेंडर के ऊपर जाके स्कूलों में और कच्ची बस्तियों में बात करती हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे ये जो इनका रेडियो चैनल है इसके बारे में मुझे पता चला, और मुझे लगता है कि हमारी जो मेन कम्युनिटी है, मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ है, वो सिर्फ जो हमारी जनता है, जो जितनी भी मार्वलाइज कम्युनिटी है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो सब कच्ची बस्ती के अलावा और कहीं रहते नहीं हैं। उनकी भीड़ सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया जाता है और उनकी बात कभी सुनी नहीं जाती है। जब भी जनता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है, क्योंकि वो उस जगह में रहती है जहाँ सुविधाएं भी कम है लेकिन वोट भी ज़्यादा है। ऐसी जगह रह के उनको उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो जो इन्होंने रेडियो स्टार्ट किया जयपुर वाणी, इसमें बहुत इजीली बस आप फ़ोन करके अपनी बात को रख सकते हो, और रख के जो भी आपका दिक्कत है आप बता सकते हैं। तो इसमें जो सीफार है, सीफार का रोल वो रहता है कि वो जो ऑथराइज्ड जो सरकार की जो उनके ब्रांच है वहाँ से कनेक्ट कराती है, और हमारी जो समस्या होती है वो निपटारा कराती है। और बीइंग ए ट्रांस वुमेन, मुझे लगता है, मैं भी कच्ची बस्ती में रहती हूँ जयपुर में एक, क्योंकि मुझे पॉश कॉलोनी में घर कोई देना नहीं चाहता कि आप ट्रांसजेंडर हो, आप क्यों पॉश कॉलोनी में रहोगे, आपको जगह नहीं है आपके लिए। तो कचरा और सबसे ज़्यादा पानी, और बरसात के टाइम हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और हम अपने पार्षद को बोल बोल के थक जाते हैं। तो पार्षद भी यही बोलता है कि अब हम क्या करें, हमारा आगे से ऑर्डर नहीं आया तो हम कैसे ठीक करें। तो ये जो जयपुर वाणी है, इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ईजी टू एक्सेस कर दिया, क्योंकि हम बस एक फ़ोन पे अपनी समस्या बता सकते हैं, अपना बिना नाम बताए, अपनी जानकारी की नहीं देकर, बस खाली हमें किस वार्ड में रहते हैं और किस इलाके से आए हैं वो बताकर, और क्या समस्या है वो बताने से हमारे समस्याओं का निपटारण हो जाता है। थैंक यू सो मच, सबने मुझे सुना, एंड सीफार को भी धन्यवाद जो मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। ज़्यादा वक्त नहीं लिया आपका मैंने, थैंक यू। धन्यवाद। हमको बोलना चाहिए कनक आपको, हम आपके साथ काम करने के मौका हमको दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। कनक एक ब्रांड एम्बेसडर है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के हैं, कि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं
जो बहुत अच्छे अरवानी प्रोजेक्ट के साथ साथ वो बहुत जयपुर शहर के साथ साथ देश के हर कोने में अपने पेंटिंग के द्वारा अपनी भावों को वहाँ पे प्रकट करती है। हमने उनके पेंटिंग्स देखे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू यू। साथ हमारी साथी है सतीश तराई, हमारे सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सतीश तराई है, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑफ कोर्स यू आर। जी, तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जियोग्राफी ऑनर्स में, फाइनल ईयर है अभी मेरा। तो जनहित वाणी और IVRS एक ऐसा मतलब टोल फ्री नंबर है जिससे कि हमें सब कुछ जो मीडिया है ना, तो वो आपको तो पता होगा उड़ीसा में कितने हर साल कितने सारे साइक्लोन्स और डिजास्टर्स जैसे आते हैं, लेकिन जनहित वाणी नहीं तो और IVRS के माध्यम से हम पहले ही मतलब मीडिया से पहले हम सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कि एक्चुअल में मीडिया ना सब चीज को ज्यादा करके दिखाता है। अगर कोई छोटा सा भी साइक्लोन आने वाला हो तो वो इतना बड़ा करके दिखाता है कि लोग डर ही जाते हैं। मतलब घर में 10 दिन पहले ही रुक जाते हैं यार, मतलब खाना वगैरह ला के रख लेते हैं, लेकिन वो इतना मतलब भास्टली नहीं होने वाला होता है। तो जनहित वाणी के माध्यम से हमें पहले से सब कुछ पता चल जाता है, और ये 2022 में स्टार्ट हुआ था, जिससे कि हमें फोन के माध्यम पे घर बैठे बैठे सब कुछ चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन से लेकर सब कुछ पता चल जाता है। और इसमें हमारा BMC बहुत ही योगदान देता है हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके। और मुझे भी सी फार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक ट्रांस होने के माध्यम से भी मैं आपके सामने बैठ के यहाँ पे अपना फीलिंग्स और जो भी है बता पा रहा हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ कि सी फार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर देखता है कि सभी को सेम इक्वालिटी मिलना चाहिए अपना आवाज उठाने के लिए। और IVRS एक अच्छा टोल फ्री नंबर है जिससे कि हमें परफेक्ट और रियल ट्रू इंफॉर्मेशन मिलता है, और IMD जो कि राइट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं हमारा स्पीकर मुस्कान है। मुस्कान, आप अपने अनुभव IVRS की संक्षिप्त में हाँ आप शेयर कर सकते हो, यहाँ अभी आ सकते हैं। नमस्ते, मैं जयपुर वाणी कॉलर क्लब मेंबर हूँ और मैं 3 साल से कॉलर क्लब मेंबर हूँ। और जयपुर वाणी जब स्टार्ट हुआ था 2022 में, जब ये शुरू हुआ था, तो इसमें वॉश से रिलेटेड और सैनिटेशन हो गया, वाटर से रिलेटेड इशू बोले जाते थे और उनका समाधान किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर इसके साथ अदर डिपार्टमेंट्स भी जुड़े, जैसे IMD जुड़ा है, तो इसके ज़रिए जो भी हाई रिस्क एरिया है उनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो आगे से आती है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए हम उनको पहले से दे देते हैं, जिससे कंटेंट बना के देते हैं, जिससे उनकी भी मतलब मदद हो जाती है। और इसके अलावा जयपुर वाणी के ज़रिए जो वीकर कम्युनिटी मेंबर्स है, जैसे डिसेबल्स हो गए या ट्रांस पर्सन हो गए या फिर एल्डर्स हो गए, उनको भी है ना इजीली उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे वो अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं और उनकी समस्याओं का हल भी होता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी जयपुर वाणी के ज़रिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मतलब मैं जो मुद्दे पहले से भी जानती थी उनको और डीपली मैंने जाना है और एक विज़न चेंज हो जाता है जब आप भी उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और मुझे दूसरों की मदद करके भी इसके ज़रिए बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मुस्कान। मुस्कान की स्टोरी अब हम सुबह से भी आई थिंक श्रुति के वीडियोस में और स्टोरीज में देखे। हमारे यहाँ पे तो एग्जीबिशन में हम बहुत देख सकते हैं ये बच्चों ने कैसे मिलके वहाँ पे कम्युनिटी के साथ काम किया है IVRS को लेके। थैंक यू सो मच मुस्कान आपके लिए। अब हमारे 10 बिफोर क्लोजिंग दिस पैनल आई हैव 2 important speakers, Miss Michelle Mohan, Manager Program Implementation Sphere India, and she actually is a climate researcher and analyst with a strong focus on climate adaptation and disaster governance, including risk reduction and resilience. And we also have Mr. Sultan Ahmed. He's the director of Gram Vani Delhi. He's a seasoned development communications professional with over 15 years of experience in strategic communications and project design. So my question to you, and not a question, my request to both of you. So having heard so many voices from the ground, how they actually implemented
the whole Jaipur Vani or Janhit Vani processes, and involving and integrating climate risk resilience and reduction in that, starting from WASH, then social inclusion, then climate resilience and gender, and also hearing from the voices from the departments, how it actually took a shape in both the cities. And Sultanji, when we started IVRS, we were very skeptical, like how can we actually scale this to the communities in the vulnerable, marginalized sections and also in the slums. So now we can see it took a huge shape, which a convergence model, I can say. So having heard that, I would like to hear from you, your opinions, your insights on this. I would request first Sultanji to respond on that, and then to Michelle. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं सीफार को थैंक यू कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने बहुत जल्दी बहुत अचीव किया। सबसे पहली चीज़ ये होती है जो सुबह से हम लोग सुन रहे हैं कि कैसी टेक्नोलॉजी बनाए। क्या आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़ोर है, हर चीज़ की सॉल्यूशन शायद टेक्नोलॉजी में ढूंढा जाता है और ये माना जाता है कि हम कुछ मोबाइल ऐप बना लेंगे तो टेक्नोलॉजी ऐसा होगा जिससे हमारा कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा और उसके ज़रिए हम सब तरह के, जो चाहे डिजिटल गैप की बात करें या उसको रिड्यूस करने की बात करें, या हम इक्वलिटी लाने की बात करें, या पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात करें, या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करें, तो और ये बहुत सुपरफिशियल तरीके से सोचा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो हम लोगों ने जब कम्युनिटी के साथ में काम करना शुरू किया तो ये देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोग अपनी पहचान भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। बहुत बार ऐसे थ्रेट्स भी होते हैं जिसकी जो पहचान की वजह से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास में है, हम बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमें वो अलाउ नहीं करता कि हम अपने जो हम सोच रहे हैं उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ। और हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे लोग बोलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें मीडिया का रोल, तो वो वन साइडेड है। एक तरह से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग को सुनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने कहा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो रिस्पॉन्सिव हो, पब्लिक जो है वो सेंटर्ड में हो और पार्टिसिपेटरी बने, कंटेंट के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, कम्युनिटी खुद अपनी कंटेंट बनाए, रिसर्च में कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेटरी रिसर्च हो, और फिर उसके बेसिस पे कैंपेन डिज़ाइन हो, वो भी पार्टिसिपेटरी हो, और फिर जाकर के कम्युनिटी जब वो उनको लगता है कि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, मेरी इसमें आवाज़ें हैं, मैं इसमें चेंज ला सकता हूँ, तो वो जो सजेशंस आते हैं, कॉल टू एक्शंस आते हैं, वो कम्युनिटी के अराउंड होता है, सेंटर्ड होता है, जिसमें एडॉप्शंस काफ़ी इजी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोगों ने ये, अब IVR का नाम सुन रहे हैं, जयपुर वानी या जनहित वानी भुवनेश्वर में, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी बहुत सीधी थी, टेक्नोलॉजी में हमने कुछ बहुत नया ज़्यादा कुछ ईजाद नहीं किया, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम्युनिटी सेंटर्ड कैसे होना चाहिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सके, कम्युनिटी को कैसे ट्रेंड किया जा सके कि वो अपने लिए कंटेंट खुद बना सकें, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। और फिर ये देखा कि जब हम ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी ट्रेनिंग की जब हम इंश्योर करते हैं तो बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शंस होता है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि बहुत कम समय में ये जो पूरा IVR सिस्टम देखते हैं, तो ये तो हमने 2 जगह पे किया, लेकिन ग्रामवानी अपने तकरीबन 115 जिलों में इसको संचालित करता है। और हमने ये देखा कि तकरीबन 10 सालों में 40 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी बातें रिकॉर्ड की हैं। तो पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करने की बात को अगर देखें, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे डिपार्टमेंट के साथ में ग्रीवांस रिड्रेशल के लिए शेयर करें, उसके ऊपर जब हम लोगों ने काम किया, तो उसका मतलब कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां से कम्युनिटी खुद एडवोकेसी करे दूसरे और एडॉप्शंस के लिए, दूसरे और लोगों के यूज़ के लिए। तो बहुत जल्दी इतने 40 लाख लोगों ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया, और इतने सारे वॉइसेस आते हैं, और जब आपके पास में वॉइसेस आते हैं कम्युनिटी से, जो एक एविडेंस है किसी भी
स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपके पास में सरकार के साथ में काम करने के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट में के साथ में काम करने के लिए उससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता, जहाँ पे कम्युनिटी खुद अपनी बात बोल रही है। तो इसी के तहत हम लोगों ने ये डिज़ाइन सोचा और अभी हम लोग बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो वॉइस है उसमें बहुत कंफर्टेबल होती है कम्युनिटी, और वो अपनी बात को किसी भी मीडियम से, वो चाहे ऐप लेकर के आए, चाहे व्हाट्सएप लेकर के आए, चाहे IVRS हो, लेकिन अगर वॉइस होगा तो बहुत आसानी से एडॉप्शन होगा, और जब एडॉप्शन होता है तो वो कोई भी प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो ही सकता है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Very well said, Sultan ji. I request Michelle to respond on the whole panel discussion and what Sultan ji ended saying that. Thank you so much. Thank you once again, CFAR and the organizing team for having us here. This has been a very insightful event and of course panel. तो मेरे से पहले जो पैनलिस्ट आए, काफ़ी बातचीत हुई है कि कम्युनिटी रेडियो सिस्टम्स जो है वो हमारी चेतना प्रणाली में कैसे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। बट मोर देन दैट, हम जो आपदा प्रबंधन में काम करते हैं उसमें हम इंटरनेशनल तौर पे क्योंकि जलवायु परिवर्तन के वजह से जो आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति जो बढ़ रही है, उसके वजह से जो कैपेसिटीज़ कम हो रहे हैं लोगों को, उनको कम्युनिटीज़ को सक्षम बनाने की बात करते हैं, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर रिस्क रिडक्शन या डिसास्टर मैनेजमेंट, यानी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की जो बात करते हैं, उसका एक मैनिफेस्टेशन है जो जयपुर वाणी जैसे इनिशिएटिव्स, एज फार एज आई कैन सी एंड एज फार एज आई हैव हर्ड फ्रॉम द पैनलिस्ट एंड अदर practitioners here. So it's very interesting to see how when we talk about डिसास्टर्स एंड आपदा में जो सिर्फ चेतावनी ही नहीं, उससे पहले, आपदा से पहले जो हम कार्यक्रम करते हैं, अवेयरनेस जनरेशन, अलर्ट्स जो गवर्नमेंट से आते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में जो काम करते हैं वो उसमें इन्वॉल्व है। व्हेन वी टॉक अबाउट आपदा के दौरान जो ट्रेडिशनल हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स जो फेल होते हैं, उस टाइम पे कम्युनिटी रेडियो मैकेनिज्म्स आर वेरी हेल्पफुल इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिलीफ मटीरियल, camps, locations, what is exactly happening. So this we have seen in the case of Indian Ocean tsunami in 2004, very recently during COVID-19, where community awareness was mostly done through these community radio mechanisms. And in terms of जो आपदा हो जाने के बाद जो रिकवरी में हमारे पास ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि आपदा तो हो गई है, अब सिस्टम्स चल रहे हैं हमारे, कब से चलने लग गए हैं, कहाँ पे कमी रह गई है। तो इसमें भी जो प्रोएक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि जयपुर वाणी जैसे इनिशिएटिव्स में है, इसमें लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वो रजिस्टर हो रहे, दीज आर गेटिंग एड्रेस। सो इन टर्म्स ऑफ recovery, easier and like earlier recovery and building resilience, that's also happening through these community radio mechanism. And also localized reporting, I believe, is also something that we can look at when talking about this specific initiative, because हर आपदा जो है वो न्यूज़ में नहीं आती है और हर आपदा हर जगह के लिए जायज़ नहीं है when we talk about alerts. So very specific localized events जो कि उस समुदाय के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ऐसे माध्यमों से हम ज़्यादा उसके बारे में जान सकते हैं और हम इसके लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई बिलीव it's once again, like I said, it's the manifestation of what we talk at global platforms and frameworks on building capacities of communities and also garnering the capacities we already have existing within communities, as someone mentioned earlier. Thank you so much. Thank you so much, Michelle. Wonderful insights. Definitely, there is a lot more work to do, actually, in fact, of understanding the climate and the risks also. We are actually in the early point, understanding climate and risk and all. And I think this is the time we just moved from understanding disaster to understanding climate risk, resilient mitigation and preparedness. I think a lot more work to do, and we've definitely
counting on the community management and community engagement to take this forward. Thank you so much, Michelle. With that, I think this panel discussion, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए. मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सम्मानित करें मंच पे जो हमारे वक्ता हैं. उसके बाद मैं अंकिता को हैंड ओवर कर रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत लेट हो चुकी है तो मैं कोशिश करूँगी जितने जल्दी अच्छा हाँ पहले आप लोग कर लीजिए. Thank you. Okay. थोड़ी देर बाद में करते हैं, ये हो जाए उसके बाद. ओके. सो जैसे कि हम लोग ने अभी सुने हैं कम्युनिटी रेडियो के बारे में, पर हमारे एक और प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन जो है कि जेडसी अप्रोच है, जो कि जेंडर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूशन. इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जेंडर जो है वो सिर्फ एक वुमेन इशू नहीं है. वो हम लोग जब बोलते हैं कि वुमेन इशू है तो हम लोग एक ग्रुप पे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है. हम लोगों को ये बाइनरी से ब्रेकआउट करना है और देखना है कि कैसे हम लोग सेक्सुअल जेंडर माइनॉरिटीज़, इवन मेन हु आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग. सो बेसिकली जैसे कि सीफा ने जो काम किया है, आप सबको पता है कि सॉरी इट्स ओके. सो 7 years का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हैज़ resulted into some very good practices, rather best practices in Bhubaneswar and Jaipur, and that have brought together things like multi-stakeholder synergy, bringing the periphery to the core. जो marginalized community है उनको core में लाने का जो ज़ीरो से शुरू किया गया है वो एक अभी जर्नी शुरू हुआ है, वो चल रहा है और शायद कंटिन्यू भी करेंगे. और फिर स्ट्रेंथनिंग द एसएचजीज इन अर्बन एरिया, जो कि कई जगह पे हम लोग रूरल एसएचजीज के बारे में बहुत सुनते हैं, पर अर्बन एरिया में एसएचजीज को वॉश में इन्वॉल्व करने का जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो सब हमने देखा है कि इस दोनों सिटीज़ में ही हुआ है. तो और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और जो डेमोग्राफिकली टेलर्ड सॉल्यूशंस मिला है कि एक जो हम सब सुबह से सुन रहे हैं कि वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन, वैसा नहीं है. जो प्रॉब्लम है उसका एक स्पेसिफिक चैलेंजेस को देख के सोल्यूशंस निकाला गया है. तो बेसिकली टुडे आई एम इनवाइटिंग ऑल द प्रिविलेज्ड डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू द स्टेज. एंड जैसे कि टाइम कम है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि स्पीकर्स प्लीज़ 3 मिनट ही अपना टाइम लीजिएगा, और ऑब्वियसली हम लोग फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे उसके बाद. So I would like to welcome just a minute, okay? I would like to welcome Dr. Mukta Arora, State Head UN Women Jaipur. Is she joining online? Okay. Mr. Rushabh Himani, Wash Specialist, UNICEF, Jaipur. Hello. Hello, am I audible? Miss Elisa Patnaik, ENY, Bhubaneswar. Okay. Mukta, are you audible? Can you hear us?
Your voice is breaking, Mukta. Okay. Meanwhile, I would like to invite the community leaders to the stage. फूलवती देवी जी, प्लीज आ जाइए स्टेज पे. रानी किन्नर. अच्छा अच्छा, रानी जी आप ऑनलाइन हो? ओके. सीमा जी, रामेश्वर जी. नमस्ते. नमस्ते रानी हेलो. जी. हेलो. नमस्ते रानी जी. नमस्ते. नमस्ते. हेलो. जी मैं नमस्ते. गंगा दीदी बोल रही हूँ भुवनेश्वर से. गंगा गंगा जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. नमस्ते. अच्छा, मेरा नाम था गंगा है. मैं भुवनेश्वर से बीएमसी का वाटकर से बहुत काम कर रहे हो. 2 साल हो गंगा जी गया. 1 मिनट, हम अभी शुरू करेंगे चर्चा, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप बात हाँ. कीजिए. मीरा जी. मीरा जी. अच्छा. संगीता पात्र जी ऑनलाइन. ओके. संगीता Yes, जी ma'am. आप ऑनलाइन? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ग्रेट. मिस जानकी बिस्वाल आ जाइए स्टेज पे. मिस संतारा. संतरा. यहाँ पे लिखा है संतारा. ओके. मिस्टर सुभाष. मिस ज्योत्सना नायक. Yes, ma'am. ओके. मिस नफीसा. नफीसा जी आ जाइए. और मिस्टर लीलाधर जी. ओके ओके. Thank you so much, Ankita. I'm sorry to interrupt. I think Rushabh is online. We can see him. Ma'am Mukta ji, आप online है? Mukta Arora ji. Yeah, we can start and Okay. we might. Okay. So shall we start with Rishabh ji? Okay. So a very warm welcome, Rishabh ji. So I have like a very specific question. In the case like UNICEF has been working with gender-friendly and child-friendly practices throughout India. So is there any successful models or case studies that you have conducted where UNICEF has helped to integrate the gender, disability and social inclusion, the JETSI aspect basically, into climate resilient WASH programs? And to support Ankita, Rishabh, we have one more question Okay. to you, because with UNICEF we've been working with the safety and dignity of the sanitary workers. Okay. In this phase. So we have collaborated with different organizations as a consortium. So UNICEF is leading this in Jaipur. So I would request Rishabh also throw some light on that, and also the common minimum commitment which actually taken place on this. Thank you. Thank you. Yes, and also we would like your comments on how to take this idea forward. Sure. You're able to hear me well? Yes. Okay. So before I begin, just wanted to check, should I continue in English or in Hindi or a mix? Mixed, Rishabh. Mix would be better. Okay. So सबसे पहले सीफार को और यहाँ पे जो भी सारे प्रतिभागी हैं उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आज जो डिसेमिनेशन मीट है, मैं कुछ समय से सुन रहा था यहाँ पे जो वार्ता हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, तो आपका जो आखिरी प्रश्न था कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो ये एक तरह से एक माइलस्टोन है. आज की जो मीटिंग है वो आगे की दिशा दर्शाएगी. So this will show a pathway as to know what are the new steps or next steps that needs to be taken based on the work that CFAR has done so far with community for community. So couple of things. There are three basically questions, and I know time is short, so I'll be very brief.
but then we can build on it. The first one about gender and climate, gender and child friendly, initiatives that UNICEF has taken. On that, particularly UNICEF's large majority of work has remained in rural domain, but with CFAR, particularly in Rajasthan, we have worked in Jaipur, in the urban spaces as well. तो मेरा जो ये रिस्पॉन्स है वो खास तौर पे रूरल क्षेत्र में जो विद्यालयों में, स्कूल में जो हमने काम किया है, बाड़मेर जो कि डेजर्ट प्रदेश है, मीन जो डेजर्ट है और जहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत है, वहाँ पे हमने चाइल्ड फ्रेंडली और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जिसमें कुछ मॉडल्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किए कि लोकली सूटेड कॉन्टेक्स्ट में कैसे वॉश फैसिलिटीज़ हो कि बच्चे भी उसका प्रयोग कर सके। बहुत बारी आंगनवाड़ी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रेग्नेंट विमेन, महिलाएं भी आती है, तो वो भी उसका कैसे प्रयोग कर सके, और क्लाइमेट की जो ये हमारी चैलेंज है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए कम पानी वाले जो टॉयलेट है वो डिजाइन्स को कैसे प्रमोट किया जाए वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में। तो ये कुछ नवाचार हमने इनिशिएट किया था, और इसको हमने सरकारी सिस्टम के साथ, जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं जैसे कायाकल्प हेल्थ के लिए, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है स्कूल्स के लिए, और वैसी आंगनवाड़ी के लिए हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा ही बेंचमार्क हो। तो ये करने से एक जो हमें इसका एक एडवांटेज मिलता है वो स्केल का है, कि हम प्रयत्न तो कुछ छोटी जगह पे कर सकते हैं, कुछ स्कूलों में कर सकते हैं, कुछ आंगनवाड़ी में, पर अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम के साथ अगर इसको जोड़े, उसके लिए हम ओरिएंट करें, और ये मॉडल एक हमारी लिए एक एविडेंस का रूप बन सकती है, तो ये एक हमारा नवाचार रहा है, और ये सिर्फ राजस्थान नहीं और राज्यों में भी इसके ऊपर काम हुआ है। सो दिस इज अ वेरी क्विक आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके ऊपर हमारा डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर हमारी फिल्म्स वो सब बनी हुई है, तो वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे प्रतिभागी उनसे भी शेयर कर सकते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा और ये कैसे इसको आगे ले जाना चाहिए। सो दैट इज वन। जो दूसरा मुद्दा जो रवि ने रखा, वो मुझे लग रहा है कि आज की इस वर्कशॉप के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें यूनिसेफ और सीफार ने साथ में मिलकर बहुत काम किया है। पिछले 2 वर्ष में सैनिटेशन वर्कर्स को लेके जो एक मुहिम चली, जिसमें सेफ्टी, स्किल एंड डिग्निटी के ऊपर काम हुआ, ये पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में हुआ, पर राजस्थान में जो एक विशेष तौर पे जो एक नया अभिगम हमने लिया, वो था अ, एक तरीके से कॉमन मिनिमम कमिटमेंट की, जिसमें हमारी साथी संस्थाएं जो अलग अलग विषयों में काम कर रही है वो साथ में जुड़े और एक कॉमन मिनिमम कमिटमेंट दे अपने काम को लेके, जिसमें सैनिटेशन वर्कर्स की स्किल्स की बढ़ोतरी हो, उनकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए, जिसमें सेफ्टी गेयर्स और सेफ्टी किट्स किस किस तरह की होती है, किस किस काम के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्निटी। तो उसके लिए एक हमने रोड मैप भी तैयार किया था, जो 2023 से लेकर 2026 तक 3 वर्ष का है, और जिसके ऊपर हम रेगुलरली रिफ्लेक्शन और रिव्यू मीटिंग भी करते रहते हैं, जिसमें यहाँ के जो हमारे पंचायती राज विभाग के मंत्री है, वो भी जुड़े हैं, उन्होंने भी अपना कमिटमेंट दिया है, गवर्नमेंट के जो साथी है वो भी हमारे साथ है, बाकी सारी साथी संस्थाओं भी इसमें जुड़ी है। तो एक तरह से इसने एक बल दिया है कि ये काम को कैसे हम सिर्फ एक छोटे प्रोजेक्ट के स्वरूप में नहीं, छोटे समय अंतराल के लिए नहीं, पर एक बड़े मिशन के तौर पे। तो ये एक बड़ा लीप, दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अ बिग लीप इन नेक्स्ट 2 years। सो इसमें डेफिनेटली एज अ वे फॉरवर्ड आज का जो डिसेमिनेशन है, और उसमें जो आपने जेटसी अप्रोच की बात करी, जिसमें सीफार ने जो वैल्यू एड लेके आए, सबसे पहले इसमें सिर्फ महिला और पुरुष नहीं, पर उसमें ट्रांसजेंडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो सीफार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अर्बन स्पेस में इनफॉर्मल सेटलमेंट में जो पूरा काम हुआ, इसमें सैनिटेशन वर्कर्स का प्रशिक्षण और उसको लेके एंगेजमेंट, वो जो इशू है, उसमें भी एक मुझे लग रहा है एक टेंडम में हमने साथ में मिलके काम किया। तो ये डेफिनेटली एज अ वे फॉरवर्ड इट्स अ बिग इशू। अब तक स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण चला, दूसरा चरण चला, पर कब कहीं ना कहीं सैनिटेशन वर्कर्स इक्विटी फोकस से इसमें छूटे रहे, तो ये फोकस इस कार्यक्रम और इस अभिगम से हमें मिला। सो दिस अप्रोच हैज played a very pivotal role in bringing
equity centered and equity focused approach. This is something, these are only few steps. अभी हमने पहले कुछ कदम लिए हैं, हमें और आगे बढ़ना है इसमें. तो इसके हमने डॉक्यूमेंटेशन की भी शुरुआत करी है, इसके ऊपर हमने अलग अलग जगह पे चर्चाएं भी करी है. इसके लिए और रिसोर्सेस और समय की भी आवश्यकता होगी. तो इसके ऊपर डेफिनेटली एज अ वे फॉरवर्ड जो अभी तक का काम रहा है उसमें हमें आगे बढ़ना होगा. फाइनली टू क्लोज, मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रखा था क्योंकि समय कम था, तो इसको मैं 3 शब्दों से कंक्लूड करना चाहूंगा. स्केल, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी. अभी तक का जो काम रहा है, चाहे वो भुवनेश्वर में हो चाहे वो जयपुर में हो, और इसमें एक जॉइनिंग द डॉट्स का काम सीफार में और उसमें आपके जो साथी संस्था आपके साथ जो जुड़े समुदाय है उसने किया है. तो अगर हमें स्केल चाहिए तो हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा इसमें, और साथी संस्थाएं और साथी जो हमारे, चाहे वो सरकारी हो बिन सरकारी हो, उन सबको इसमें जोड़ना पड़ेगा. उस अभिगम के साथ जुड़ेंगे. इसमें अभी कुछ समय पहले प्रेजेंटेशन में कम्युनिटी रेडियो की बात चल रही थी उसमें. तो ये सारे अभिगम जो है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ज करना पड़ेगा. अगर हमें ये समस्या काफी बड़ी है और अगर हम इसको थोड़ा सा स्पीड इसमें लाना चाहे तो हमें कैटेलिटिक रोल की आवश्यकता होगी. तो वो कैटेलाइज करने के लिए हम कैसे इसमें ऐसी हम चीजों को जोड़े, जैसे फॉर एग्जांपल सीफार का सिंगल विंडो फोरम एक बहुत बड़ा अच्छा अभिगम था आपके पास्ट वर्क में. तो वो अप्रोच को इसमें या ऐसे और भी अप्रोचेस को इसमें कैसे जोड़े. और आखिरी जो है वो है सस्टेनेबिलिटी, कि अगर हमारा काम है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा तो शायद ये एक कुछ नंबर तक सीमित रहेगा. और सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें कन्वीन करना पड़ेगा, और इसमें कॉमन मिनिमम कमिटमेंट का जो अभिगम हमने सैनिटेशन वर्कर्स का लिया है, दैट इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इन माय व्यू it is scale, speed and sustainability that should be the way forward for this initiative. Thank you once again, and all the best to CFAR and all the participants here. Thank you. Thank you so much, sir. That was very engaging. We will keep in mind your 3S, your suggestions, and we'll note it down. Thank you so much. Okay. Dr. Mukta Arora, are you there? Okay. Can you please check whether she's there? Okay. Okay. But ma'am, can you please ma'am, are you there? Ma'am, could you please unmute yourself and turn on the camera? Ma'am, I think is there a problem, ma'am, if we can call you? I think we take it forward when she... Okay. If you have some problem, you can also write. Is there a chat box option there? Okay, then you can also like inform us what problem you're facing. Okay, moving on, we go to Miss Elisa Patnaik from EY, Bhubaneswar. Okay, a very warm welcome, ma'am. So you have worked on the QR code sanitation dislodging facility in Bhubaneswar. Can you please give an introduction of what the service is for our audience, and how can we scale up this innovation and adapt it for different vulnerable groups? If you have any ideas on that, it would be really great if you share those. Thank you. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah, okay. Good evening, everyone. सबको मेरा नमस्कार. My name is Elisa. I work with Ernst & Young, एक ऑर्गेनाइजेशन है. हम उड़ीसा में काम करते हैं. और ये जो सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं उड़ीसा में, ये है जो टॉयलेट वेस्ट है, जो हम फीकल स्लज बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट है. सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन इन उड़ीसा फॉर मोर देन 5 years. एंड मैं थोड़ा ये प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये एक यूनिक प्रोग्राम है उड़ीसा में. फीकल स्लज मैनेजमेंट तो देश भर में हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में ये जो इसकी यूनिकनेस ये है
कि ये सारे 115 सिटीज में हमारे FSTP जो फीकल स्लज एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए हैं. So there all cities have these plants now. All the entire state is covered, and these plants are managed by women and transgender SHGs. So this is a very unique initiative, and all the plants, 115 plants, are managed, and including a physically challenged group also in one of the ULBs. So ये जो fecal sludge and septage management उड़ीसा में किया गया है, ये it is a very community led and inclusive FSSM, which has set a very big example not only in the country but also in the region. So इसमें ये पूरा FSSM value chain में SHG is involved है, right from management of toilets, subsidized desludging, transportation of fecal sludge to management itself. सो और ये थोड़ा मैं प्लांट के बारे में बताना चाहूंगी. ये जो हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो ये जो प्लांट्स बने हैं ये है, इट इज़ ए लो टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल डिवॉट्स टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें बहुत आपको कम पानी और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. सो ये इसमें सोलार पैनल्स लगे हैं. इसमें जो पानी यूज होता है, वो जो ट्रीटेड वाटर टॉयलेट वेस्ट का, वो सब पानी वो प्लांट में ही रीयूज होता है. सो दिस इज अ वेरी क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड ये जो मैनेज हो रहा है लोकल कम्युनिटी विमेन और ट्रांसजेंडर ग्रुप से, सो देर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप एज वेल इन दिस infrastructure and services. And because of this fecal sludge management program in Odisha, so according to Pollution Control Board results, the river quality has improved a lot. So, just a year back, according to the data, so out of the 19 major rivers जो ये fecal sludge से pollute हो रहे थे toilet waste से, so out of the 19 rivers, 12 rivers में पानी की बहुत सारी improvement देखी गई है. So this is also, involvement, how a inclusive wash program can result in such, significant outcomes also. So this is one. And we are very proud and happy to have partnered with CFAR on inclusive FSSM, especially in the urban slums of Cuttack and Bhubaneswar, in strengthening local community groups and building the skills to make ULB is more accountable for FSSM services. So आपने ये QR कोड की बात की है, और एक subsidized desludging. So in Bhubaneswar was the first ULB जहाँ पे हमने CFAR के साथ partnership किया था. CFAR helped a lot in community mobilization, building the awareness, and building the skills of the community in mapping their own problems and finding solutions. We were just facilitating them. So Bhubaneswar was the first place where ये subsidized desludging की गई है, जहाँ पे community themselves mapped, कब किसी के कहाँ, किसके घर cesspool vehicle जाएगी, and किसको चाहिए ये service. And the Bhubaneswar Municipal Corporation was also a partner in this, and they also helped in subsidizing the services, which really helped us in taking this intervention ahead. And basis the work in Bhubaneswar and Cuttack, so it was also replicated in a few other ULBs, this model. So if you just think, how can all these efforts be scaled up, or how can this be taken up for the future? Since morning we have been hearing, हम इतनी fantastic stories सब सुन रहे हैं from community members themselves, and how they have taken this ahead. All these initiatives which have been taken up in communication, in empowerment, in messaging, so many efforts. So I feel that one of the best ways to go ahead is institutionalizing this intervention and efforts. इतनी काम हुआ है, so बहुत ज़रूरी है अभी हमें इसको scale up करने के लिए, और scale up करने के लिए हमें इसको institutionalize करना चाहिए, both at community level, the urban local body level, and also at the state level. So जैसे मैं मेरे previous panelists ने बताया कि ये इसमें partnership की बहुत ज़रूरत है. So all partners, as partners, we all have different skills. So partners from the NGO sector, from the private sector, from the government, community तो हिस्सा है ही है.
academics, whoever, this partnership is very important to document these initiatives, build evidence on the power of community, and also, establishing these replicable models. Of course, हम उसको tailor करेंगे, customize करेंगे, but these things, how the guidelines, what is the process through which this was done. So this will become very good advocacy tool with the government, because government, they do not want to spend a lot of time in, this community engagement, because it is very time and resource intensive. So it is very important that we go with these evidences, with these advocacy tools, and institutionalize with the help of the government. And working together in a very collaborative way with partners who have their own expertise is very important. And advocating with the government that participation of these marginalized communities is essential for inclusive and resilient WASH, as it's closely related to water supply, sanitation, infrastructure, services, and especially in extreme weather conditions like rising temperature, cyclones, heavy rain, urban flooding. So मेरे previous speakers ने बताया how places more and more, Odisha is very vulnerable to climate change and very vulnerable to disasters. So it is very important that community itself is a part of it, because they are the first to be first hit. उनको ही सबसे पहले तकलीफ होती है जब कुछ ऐसा होता है, because everything is, water supply is hit, sanitation is hit, everything. So making them a part of the journey is like a non-negotiable, and this we should all advocate with the government, because building their knowledge, capacity, skill is very, very important. And lastly, disseminating these best practices. CFAR has done such wonderful work along with collaboration with, so many partners. So it's very important that, this workshop is an important step towards that. But along with it, we should disseminate as much, because there are such few resources when it comes to these kind of tools. Okay, how to do it, how was this QR code done, so, and how is this community radio disseminating messages. So these are the processes. This will really help other organizations in taking this up, and also help the government. See, without government support, without the government being a part of it, it's very impossible for us to do this in isolation. So all stakeholders need to be a part of this, and uh, community is of course the core. Okay, so everybody together, building evidence, working together, institutionalizes. This would be my, main suggestions to take this ahead. Thank you very much for giving me an opportunity. And so it was really inspiring listening to so many people, especially from the community members. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Can we move on to the next speaker, Dr. Mukta Arora? Okay, I think there is some technical issue. So we'll move on to the community members now, community leaders who have been the main people who have changed the gender relations, the power relations, and brought this transformation, and we'll hear stories from them. So Rani ji hai na? Rani ji nahi, Ganga ji hai na? Online? हाँ, गंगा जी आपको सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो गंगा दीदी नहीं मैम, अभी अभी संगीता दीदी और ज्योत्सना दीदी है। अच्छा, ठीक है। तो उनसे बाद में बात करेंगे, हम एक एक करके जाएंगे फिर। फूलवती जी नमस्ते, आपसे तो मुलाकात हुआ था पहले, तो आप थोड़ा सा बताइए आपके एसएचजीज जो आप बहुत सारे काम के साथ जुड़े हुए हो, तो थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे हुआ है ये, और अभी क्या स्थिति है, और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम फूलवती है और मैं जयपुर से हूँ। एसएचजी व एरिया लेवल फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं सुरक्षा सखी हूँ, पुलिस के साथ मिलकर के मैं काम करती हूँ जो कच्ची बस्तियाँ हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग बहुत सारी बातें सुबह से भी सुन रहे थे कि पानी है, पानी के लिए भी, मौसम बदलाव के लिए भी बहुत सारी है, लेकिन हमारा जो एसएचजी है
क्योंकि हम एक कच्ची बस्ती में रहते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। और रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि अगर पैसा है तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो हमारे पास कुछ नहीं हो पाता है। तो पैसे से हम पानी भी खरीद सकते हैं, खाना भी खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। तो हमारा ये एसएचजी जो है वो हमारा एक रोज़गार से जुड़ने का है। तो यहाँ पर हमारे जो एसएचजी है, एरिया लेवल फेडरेशन जो बना हुआ है, वो एक तो अपने आप में एक सशक्त हो रहा है, क्योंकि वो एसएचजी से जुड़ करके वो अपनी ही एक जो बैंक बना रहे हैं जो हमारे एसएचजी हैं। और एरिया लेवल फेडरेशन के साथ में मिलकर के भी हम विभाग के साथ भी मिल रहे हैं। और हमने 2020 में हम लोगों ने एसएचजीओ ने मिलकर के हम लोगों ने लोन ले करके इसमें हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन यूनिट का भी निर्माण किया था। तो वहाँ पर भी हमने नगर निगम के साथ में 90,000 का एक ऑर्डर मिला था हमको, जिन्होंने हमसे सैनिटरी नैपकिन खरीदे हैं। और उसके साथ में हम जो हमारा आगे बढ़ रहा है काम। दूसरा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने नगर निगम के साथ ही मिलकर के हमने बहुत सारी इसमें प्रयास भी करे हैं, जैसे महापौर से के साथ में भी, कमिश्नर के साथ में भी, क्योंकि हम एसएचजी तो बन गए हैं पर इसको रोज़गार से हमें कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने फिर हमें अभी अमृत 2 मित्रा के तहत एक योजना आई है, उसमें हम लोगों को एक पार्क टेंडर भी दिया जा रहा है। उसमें भी हमारा काम चल रहा है। जो 3,48,000 रुपये का जो अभी टेंडर मिला है और उसमें काम चल रहा है। अभी हमें एक सुलभ शौचालय का भी टेंडर मिला है, तो अभी वो जारी है काम। तो इस तरीके से हमारे जो एसएचजी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं निगम के साथ मिलकर के। और दूसरा, पीएचडी ऑफिस से भी हमको अभी फ़ोन करके बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि एसएचजीओ से ही हम लोग आगे अपने काम को बढ़ाया जाए। और दूसरा, कचरे की गाड़ी निगम खुद अब आगे एसएचजीओ को क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमारा जो काम है एसएचजी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक जागरूकता का काम, जैसे कचरे पर अलग अलग किया जाए, कचरे की गाड़ी के साथ साथ लोगों को अवेयर किया जाए डोर टू डोर जाकर, इस तरीके से हमारे एसएचजीओ को भी ये काम दे रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से एसएचजी जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एसएचजी और एरिया लेवल फेडरेशन जो बहुत आगे बढ़ रहा है। और भी जिस तरीके से वो मेहनत लग के काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उनको मांग भी हो रही है विभाग के साथ मिल कर के भी। तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। थैंक यू। अभी सीमा जी है और रामेश्वर जी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले मैं रामेश्वर जी से पूछती हूँ, थोड़ा सा माइक दे दीजिएगा। हाँ, आप जैसे एमएचएम का जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन का एक पार्ट हो, तो इस ग्रुप में आप जैसे कि एक आपको कोई दिक्कतें आए थे, कुछ चैलेंजेस, कुछ बाधाएं आपको फेस करना पड़ेगा, और कैसे आप उससे बाहर आए और क्या क्या बदलाव लाए हैं? मैम, चैलेंज तो बहुत करना पड़ता है, उसका हर चीज़ का समाधान तो निकलता ही है एंड में। और हमने जो है एक सीबीओ भी बनाया है जिसमें आत्मनिर्भर सशक्त जीवन नाम दिया है। और हमारे को जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से वो एकल विंडो भी मिली है, उसमें ई मित्र का काम हमारे साथी कर रहे हैं। और जो दिव्यांग भाई हैं उनकी जो भी योजनाएं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचा रहे हैं हम ये। और वहीं पर हमने जो है ना ये पेड बैंक का भी काम शुरू कर रखा है, जो किशोरियों और महिलाओं को जो है वहाँ उनके आसपास से ही वो पेड मिल सके। तो जैसे यंग लोग हैं ना, तो उसमें लड़का लड़की सब है, तो आप कैसे प्रभावित करते हो कि लड़के लोग भी आके ज्वाइन करें ग्रुप में? मतलब आप कोई प्रोग्राम या फिर कोई मीटिंग वगैरह जो भी होता है वो आप बताइए। मीटिंगों में लेके जाते हैं हम,
और उनको समझाया जाता है अब भाई जो बुज़ुर्गों के लिए तो ये सरकार की तरफ से ये फैसिलिटियाँ मिलती है, ये योजनाएं हैं, इसका आप इस तरीके से लाभ उठा सकते हो, हमारे ग्रुप से जुड़ो, हमारे जो एकल खिड़की बनी हुई है वहाँ पे सारा समाधान एक ही जगह पे हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। सीमा जी, आप ऑनलाइन हो क्या? सीमा जी, ओ सॉरी। ओके, तो आप यंग लोगों को कैसे इस ग्रुप में, कैसे मीटिंग्स में लाते हो, और क्या मतलब कैसे वो लोग प्रभावित होते हैं? जैसे कि मैंने देखा कि स्कूल में भी बहुत आप लोगों का यंग कुछ एडोलेसेंट क्लब है ना, तो उस क्लब के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या करते हैं क्लब और कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम सीमा बेनीवाल है, मैं जयपुर से हूँ और मैं किशोरी ग्रुप की सदस्य हूँ और मैं पैड बैंक ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। तो क्या है कि पीरियड्स के बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता, तो इसका ये है कि पहले तो हम जब किशोरी ग्रुप से जुड़े सिफार संस्था की तरफ से, जब हमारी मीटिंग्स हुई हमारी बस्तियों में आके, तो हमें ये पता चला कि पीरियड्स क्या है, हमें किस बारे में इसकी जानकारी कितनी हद तक हमें चाहिए और क्यों चाहिए। तो हमें पता चला कि ये हमारे लिए ही जानकारी ज़्यादा बेस्ट है, क्यों हम जब तक हमें पीरियड्स के बारे में प्रॉपर नहीं पता चलेगा हम दूसरों को कैसे समझाएंगे कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। तो हमने इसके बारे में जानकारी ली और लोगों को भी दी, यहाँ तक कि हम समुदाय में जाके इस चीज़ की जानकारी भी देते हैं और स्कूल्स वगैरह में भी हम कई बार जाते हैं और नुक्कड़ नाटक के तहत हम लोग इस चीज़ की जानकारी देते हैं। नुक्कड़ नाटक के तहत ये होता है कि हम हमारे साथ ग्रुप्स में मिलके, कई लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर नुक्कड़ नाटक करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कई क्लब्स में जाते हैं, या कोई गार्डन होता है बस्तियों में, कॉलोनीज़ में, हम नुक्कड़ नाटक करके उन सब लोगों को पीरियड्स के बारे में बताते हैं कि पीरियड्स क्या है क्या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों की उनको नॉलेज देते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि हम अगर समुदाय में जाते हैं तो कई लोग हमसे बातचीत नहीं करते हैं। पहले तो जैसे कि हम ग्रुप्स बना के जाते हैं या सिंगल भी पर्सन एक लड़की से अगर हम बात करते हैं तो घर के बाहर निकल के वो बात करती ही नहीं है कि हाँ कि ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई आप अंदर चले जाओ या बाहर चले जाओ। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि जब तक इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता चलेगी आगे जाके ये लोग क्या करेंगे, उनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि पीरियड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो हम लोग सब मिलके उनके सामने बात करते हैं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन सब लोगों के सामने बात करते हैं, उनको इंक्रेज करते हैं कि नहीं पीरियड्स के टाइम पे आपको ये करना चाहिए, पैड्स यूज़ करना चाहिए, कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग बस्ती में जानकारी देते जाते हैं। लेकिन जब हम ये लोग जानकारी देते थे तो ये जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो कोरोना के टाइम में 2019 के अंदर कोविड लग गया था और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, प्रॉपर एकदम चक्का जाम हो गया था कि हाँ चलो ठीक है प्रॉपर बंद हो गया है, कोई दुकानें नहीं खुली है, कुछ नहीं है। काफ़ी टाइम तक ये था कि कोविड चल रहा था कि हमें लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, हमारे पास जो स्टॉक था वो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद में जब ख़त्म हो गया तो क्या। तो हमें दिमाग में आया कि हम शॉप पे जाते, वो लोग नीचे से हम लोगों को देते, कई बार ये होता था कि उनके पास ख़त्म हो जाते थे तो हम क्या करें। उस टाइम पे कई लड़कियां होती थी कि एडजस्ट भी करती थी, लेकिन हम लोगों को जब हमारी जूम पे मीटिंग हुई तो हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात रखी कि हमें पेड्स की बहुत ज़्यादा नीड्स है, तो हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे लिए, एक ऐसा जरिया होना चाहिए कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर हम डिपेंड नहीं होंगे, खुद के ऊपर अगर सक्षम होंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा या किसी से इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या करा, बात करी, हमारे पैड बैंक बने, हमारे 33 वार्ड में 33 ग्रुप्स बने हुए हैं, पैड बैंक बने हुए हैं जिनके अंदर हमारे 10 सदस्य जुड़े हुए हैं। उसके अंदर हमारे हैं किशोर किशोरियाँ, महिला पुरुष, ट्रांसजेंडर एंड विकलांगजन, हम सब लोग मिलके इन पैड बैंक को चलाते हैं, जिनसे कि क्या है कि कई लड़कियां हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उन लोगों को फ्री में भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और जो लोग ले सकते हैं चाहे वो 1 ले 2 ले, उनके पास जितना पैसे होते हैं वो 3 रुपये का एक पेड जाता है हमारा, तो हम लोग उनको वो चीज़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग पैड बैंक पे आके ही आप लोगों को वो पैड प्रोवाइड होंगे, नहीं, हम लोग क्या करते हैं जैसे कॉलोनीज़ में या बस्ती के अंदर 4-4 घर या 5-5 घर छोड़ के वो पैड्स वहाँ रख देते हैं 10-10 या 20-20 के स्टॉक में, जिनको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो ना कि पैड बैंक में जाए, वो किसी के भी घर जाके वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और जाना पड़े, अगर दुकान पे नहीं है तो हमारा पैड बैंक है जो कि लड़कियों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू। Thank you so much.
that was a very powerful story for like changing decision making and autonomy from for the younger person. मतलब आप लोगों को पास जो अभी changes हो रहा है वो बहुत ही सीखने लायक है. थैंक यू सो मच. तो अभी हम लोग जाएंगे मीरा जी के पास और संगीता जी के पास. संगीता जी आप ऑनलाइन हो क्या? अच्छा मीरा जी नमस्ते. नमस्ते सभी को. आप थोड़ा सा बताइए आपने कैसे जुड़े हैं इस कम्युनिटी से और क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या बदलाव लाए हैं आपने? मैं जयपुर से हूँ और मेरा नाम मीरा देवी है. और हमारे यहाँ जब मैं स्लम एरिया से हूँ और हमारे यहाँ है ना जो पानी बोरिंग का पानी आता था तो वो बहुत गंदा गंदा पानी आता था. और जब बाल्टी के अंदर भरते थे, मटके के अंदर भरते थे तो उसमें है ना जैसे वाइट वाइट हाथ से देखते तो वो पीने लायक नहीं था. तो हमने सोचा कि अब फिर हम ये सीफार मैडम से सर से मिले, इनको इनका सहयोग लेके और पार्षद जी के पास गए. पार्षद जी फिर हम वहाँ पे वाटर वर्क से वहाँ पे गए. फिर बोले भाई तुम्हारे जो पानी है उसका सैंपल लेकर, हम सैंपल लेके गए. सैंपल से फिर हमारे जो उस पानी के अंदर वो पीने लायक पानी नहीं था तो उसमें फोरनाइट वो क्या नाइट्रोजन वगैरह वो ज़्यादा थी. फिर हम सिर्फ और की तरफ से हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन लगाया गया है और उस फिल्ट्रेशन में अब हम कम से कम 300 परिवार पानी भरते हैं और अब पीने लायक पानी है और बिल्कुल शुद्ध पानी है. पहले हमारे घुटनों में दर्द और पेट में दर्द, पीलिया वगैरह रहता था और अब है ना ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले हम जब सब्जी वगैरह दाल वगैरह बनाते थे तो ऐसे बाकले की तरह पड़ी रहती थी, बनती नहीं थी. कुकर में कितनी सीटियां लगा लेते थे पर नहीं बनती. पर अभी अब है तो उस पानी से हमारी दाल भी पक जाती है बिल्कुल सही से. और घुटनों में दर्द वगैरह ये पीलिया वगैरह इनसे हमको निजात मिली है. हमको रोगों से निजात मिली है. नहीं तो आए दिन हम डॉक्टर के भागते थे. हमारे एरिया में हम वैसे ही गरीब थे फिर भी हम कभी वहाँ पे हॉस्पिटल जाते थे और अब इससे हमको निजात मिली है. मैं यही चाहती हूँ कि सीफर का धन्यवाद जो हमारे को हम गरीब बस्ती वालों को क्या नाम से हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन लगाया. क्योंकि हम घर घर में तो हम तो गरीब हैं, हम घर घर में तो हम मशीन नहीं लगा सकते थे पर इन्होंने हमारे गरीबों के लिए हमारे फिल्ट्रेशन लगाया है. और उसका है ना जो क्या नाम से हम बस्ती वाले सारे हम पानी भरते हैं और हमारा ना स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. और आगे भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं सीफार वालों से कि हमारा मतलब ऐसा ही हम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हमारा ही नहीं औरों का भी सभी का जो भी है सभी का ध्यान रखे. और सिफार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो मतलब हम तो ऐसा सोचते थे कि 20 रुपए की बोतल आती है पानी की, इसमें कैसा पानी होगा, क्या नाम से लेते थे तो ऐसे थोड़ा वो अब गरीब आदमी कहाँ से खरीदता. पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन लगाया और उसका मैनेजमेंट मैं खुद ही हम 4 लोग करते हैं. उसके लिए हमारे को है ना जो सर ने जो महाराष्ट्र से सर आए थे उन्होंने ट्रेनिंग दी थी कि कैसे इसको मतलब मैनेजमेंट करना है. तो उसका मैनेजमेंट हम खुद 4 जने करते हैं वहीं से. अब जैसे मैं यहाँ आ गई तो 3 जने वहाँ पे है और रोजाना पानी खोलते हैं 3 घंटे में. 3 घंटे के अंदर हम सब 200-250 घर पानी लेते हैं. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. संगीता जी आई थिंक शी इज ऑनलाइन. संगीता जी नमस्कार मैम. नमस्ते. आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ. तो आप थोड़ा बताइए कि ये जलवायु परिवर्तन के वजह से भुवनेश्वर में अभी क्या क्या समस्याएं हो रहे हैं और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो इस मतलब कुछ सल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या करना चाहते हो आप? नमस्ते. संगीता पात्र नाकागढ़ चल सहित 23 नंबर वार्ड भुवनेश्वर. मु सीभर सहित 2019 मसीह सीभर सहित जड़ित अच्छी. सीभर गोटे सिंगल विंडो फोर मेंबर हिसाब से काम करुच्ची. सबू एरिया रे साही रे बस्ती रे
टॉयलेट ऊपर काम करुच्ची सानिटेशन ऊपर काम करुच्छु आमर हूँ लाट्रिन केमती सफा हम आम तो जानी नथिलु टांकी केमती सफा हम जानी नथिलु माने बाहर को पदा को जाउतलु माने टॉयलेट करिया पई जेतेबेले आमे सीभार सहित जड़ित हलु तापरे आमे लैट्रिन कलु आम सीभार आमको बहुत सचेतन करेले कि आमे लैट्रिन तैयारी करिवु ता सहित लोकन को भी सचेतन करेबु लोकन को सचेतन करेलु माने 40 रु ऊर्ध्व आमे लैट्रिन साई बस्ती आमे तैयारी करैछु बीएमसी तरफरु से टॉयलेट केमती व्यवहार करेंगे ता उपरे भी सचेतन देचु तापरे बीएमसी रे भी जाइके आमे बसिचु बीएमसी मु बसिची बीएमसी रे बसला परे भुवनेश्वर विभिन्न प्रकार जगार विभिन्न प्रकार केस आसे ताकू भी समाधान करया पई गाड़ी पठाया पई आमे चेष्टा करिचु या परे भी आमे बीएमसी रो जहाँ जहाँ बेनिफिट होचो सीभार माध्यम रे आमे ताकू समाधान करिचु ता मो वार्ड मो साही छाड़ी की मो अलगा साही रे भी 23 नंबर वार्ड रो बहुत साही रे भी ए सैनिटेशन ऊपर जो लैट्रिन टैंकी ऊपर काम करिछि क्यूआर कोड माध्यम रे आमे स्कैन करिकी केमती कोन स्कैन करबो केमती नंबर फोन ये करबो ताकू भी गाड़ी केमती आसीबो से सब ऊपर आमे काम करूछु ओके धन्यवाद ठीक है, संगीता धन्यवाद। दीदी। अभी संगीता पात्र है वो भुवनेश्वर से बोल रहे थे वो सिंगल विंडो फोरम मेंबर। अभी वो उनका कहना है कि था ये क्लाइमेट रिजिलेंट के लिए क्या क्या उन लोग काम किए हैं। तो एक चीज़ को उनका एक्सपीरियंस के बारे में वो बता रहे थे जे वो सिंगल विंडो फोरम मेंबर हर हाउस होल्ड को कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि ना ये जो भुवनेश्वर अर्बन एरिया में अर्बन फ्लडिंग होता है तो ये फ्लडिंग में उनका अगर टॉयलेट टैंकी और सेफ्टी टैंक अगर सही ढंग से नहीं है तो अर्बन फ्लडिंग वाटर वहाँ पे घुस जाता है और वो इवन रिवर्स भी आ जाता है। ऐसे वजह से उन लोग टॉयलेट को यूज भी नहीं कर पाते और ऐसे भी एनवायरनमेंट पूरा कंटामिनेटेड होता है। तो इसके वजह से उन लोग घर घर जाके काउंसलिंग करते कैंपेन करते। तो इसी हिसाब से अभी वो खुद 40 हाउस होल्ड को मोबिलाइज किए हैं क्लाइमेट रिजिलेंट टॉयलेट बनाने के लिए। और वो वार्ड में जो काम करते हैं ना वार्ड नंबर 23 अभी वो वार्ड नंबर 23 के बाद भी दूसरा वार्ड को जाके वो काम करते हैं और इसको वो हाउस होल्ड को मोबिलाइज करते हैं। देखिए ये तो अर्बन एरिया और फ्लडिंग जो होता है ना तो इसलिए जो आपका टंकी होता है सेफ्टी पिट होता है तो आप क्यूआर कोड यूज़ करके जो मानसून के पहले आप क्लीन करेंगे तो ये फ्लडिंग में आपको बचा जाता है। तो इसी हिसाब से उनका वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। थैंक यू। जानकी जी नमस्ते। आप थोड़ा सा भुवनेश्वर में सानी क्लाइमी वॉल के बारे में बताइए कैसे शुरुआत हुआ था और अभी कैसे हर रिव्यू मीटिंग में वो अपडेट होता है ना तो वो थोड़ा सा बताइए कि अभी आगे क्या करना है। पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैं उड़ीसा का भुवनेश्वर से आई हूँ। मेरा नाम जानकी बिस्वाल है और हमारा सीफार का टीम भी हमारे साथ मौजूद अभी है यहाँ पर। और ज़्यादा लोग आ सकते थे कम्युनिटी में लेकिन ट्रेन का प्रॉब्लम से कोई नहीं आ पाए हैं। हम 3 लोग आए हैं और हमारे जो समीर सर वहाँ पर है वो ज़्यादा हमको हर बार में हर तकलीफ़ में साथ देते हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं बोलने के लिए। और जो सानीवाल है वो पहले हमारा वार्ड में जो बस्ती अंचल है वहाँ पर कम्युनिटी में डिस्कशन होता है कितना हाउस होल्ड है, कितना पॉपुलेशन है, कितना हैंडीकैप्ड लोग हैं और कितना जो बच्चे लोग हैं किशोरी बल के, ऐसे सबको मिलाकर हमारा मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद 1 महीने में वार्ड ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हमारा सीफार के टीम, स्वच्छ साथी, जल साथी और हमारा जो एसएजी एलएफ का लीडर होते हैं, एरिया लेवल फेडरेशन है, वो मिलकर हमारे बैठक होता है। बैठक में बातचीत होता है कि क्या करना चाहिए, कितने घर को टॉयलेट चाहिए, कितने पानी चाहिए, क्या तकलीफ है, सब बातचीत होती है। बातचीत के सुझाव होता है वहाँ पर और जो भी तकलीफ हो वो वहाँ पर बातचीत के तुरंत सब खत्म हो जाता है। क्या करना चाहिए वो सीफार के टीम के माध्यम से हमको, जैसे कि पानी का प्रॉब्लम है तो हमको
एक डेट फिक्स करके हमारा टीम सीफर की टीम के साथ हम लोग जाते हैं वाटको ऑफिस, वो कंप्लेन देते हैं। सीफर के जो लेटर पैड है उस पर हम लिख के दे जाते हैं सीफर की टीम के साथ। वहाँ पर कंप्लेन देने के बाद एक हमको भी वो देते हैं सॉल्यूशन के लिए। हम उससे लेके आते हैं, एक जो रिसीव करके कॉपी लाते हैं, और कॉपी लाने के बाद सीफर के माध्यम से जो हम जाते हैं वो खुद हमको फॉलोअप करके हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। संतरा जी, ओके, आप थोड़ा सा बताइए कि आप सानी क्लाइमी वॉल में कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ चेंजेस कैसे आगे ले जाते हो इसको? मेरा नाम संतरा महावर है, मैं जयपुर से हूँ और मैं इसे कच्ची बस्तियों में काम करती हूँ, जैसे सैनी बॉल उस पर स्वच्छता दीवार पे काम करती हूँ। मैं घर घर जाके, जैसे हमारे बस्ती में पहले टॉयलेट भी नहीं थे और पानी भी नहीं था, इन दोनों की समस्या ज़्यादा थी। फिर हम विभाग में गए, नगर निगम में गए, वाटर वर्क्स में गए। फिर उन्होंने बोला कि मैम ऐसे तो आपका समाधान नहीं निकलेगा, आप ऐसा करो एक नक्शा बनाओ आपकी बस्ती का। फिर हमने एक नक्शा बनाया, 10 लेडीज़ों का ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के हमने एक नक्शा तैयार किया। फिर वो नक्शा ले जाके नगर निगम में दिया कि सर इस लाइन में तो सीवर जा सकता है, इस लाइन में नहीं जा सकता है, इस गली में लाइन जा सकती है पानी की, तो आप देख लो। तो उन लोगों ने हमारे साथ आके विजिट करी बस्तियों में विजिट करके उन्होंने सीवर लाइन भी डलवा दी। और जहाँ पानी की समस्या थी वो पानी की समस्या, जैसे मशीन से लाइन डल गई वहाँ तो डल गई, और जो छोटी गली थी वहाँ लाइन नहीं डली। तो उन्होंने सोचा भी यहाँ इतनी भारी लाइन नहीं डलेगी तो 1-2 गली आपकी रह सकती है। तो फिर हमें बोले कि सर ये ऐसा तो नहीं हो सकता, 2-3 गली कहाँ से पानी लाएगी, रोज़ रोज़ तो पानी नहीं भरने देंगे ये लोग। फिर वो बोले कि हम मेरे पास 2-3 इंच का पाइप है, आप ले जा सकते हो और आप अपनी गली में ये डलवा सकते हो 2-3 गली में। तो हमने वाटर वर्क से वो लेके आए पाइप और हमारी गलियों में हम ही डाल लिए, और आज सारी गलियों में हमारे बढ़िया पानी है। सीवर लाइन भी है, और जिस गलियों में सीवर नहीं है और वहाँ मशीनें नहीं लग सकी और वो गड्ढा भी नहीं, जिसके घर में एक ही घर है वहाँ नहाने का, खाने का, सोने का एक ही घर है, गरीब लोग हैं, तो उनके वो लेटरिन बाथरूम नहीं बन सकते। तो उनके लिए हम फिर एक बैठक रखी। फिर उन्होंने बोला कि सर हमारे 2-3 गली है वहाँ सीवर नहीं जा सकती, तो हम इसके लिए क्या करें। फिर उन्होंने बोला कि देखो आप बताओ। फिर हमने एक CTC भी रखवाए, और CTC वो बोले कि ये समस्या आपकी हल हो सकती है। तो अब उनकी सफाई के लिए ये हम परेशान होते थे, फ़ोन पे बात करते थे तो वो लोग नहीं आते थे। फिर हमने एक जैसे पार्षद होता था, पार्षद के पास एक दीवार बनाई, स्वच्छता दीवार बनाई। उस पर हम डेटा डाले कि इतने घर में सफाई होती है, इतने घर में अच्छा पानी आता है, इतने घर में विकलांग है, इतने घर पहाड़ के नीचे है, इनमें गर्मी में पानी नहीं पहुंचता। तो वो डेटा हम स्वच्छता दीवार पे डालते थे, तो वहाँ भी सुनाई नहीं। फिर हमें निगम से मीटिंग की और ये वाटर वर्क्स वालों से मीटिंग करी कि सर ये हमारा सुनाई नहीं हो रही, तो हम क्या करें। फिर ये हमने एक नगर निगम में दीवार बनवा के और वहाँ एक डेटा बनाया। फिर हर महीने हम बस्तियों में एक मीटिंग करते थे, एक तारीख फिक्स कर लेते थे और फिर वहाँ जाके वो डेटा डालते थे, भाई इतने घर में पानी साफ आता है, इतने घर में पानी गंदा आता है। अब तो खैर साफ आने लग गया, नहीं ये पहले की बात थी। तो और इतने घर में ऊंचाई में पानी नहीं चढ़ता है, तो वो डेटा देख के वो लोग अपने आप आके और हमारा काम करते थे। और एक जलवायु दीवार भी हम उसमें 2020 में ऐड कर दी। और हमारा काम जैसे फॉगिंग का काम होता है, अब तो ये जयपुर वाणी पे कॉल कर देते हैं, तो वो कॉल के जरिए हमारा काम बहुत बढ़िया हो जाता है। थैंक यू। सुभाष जी है यहाँ पे। हाँ
सुभाष जी, आप बोलिए कि अभी भी क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी काम करने में, कुछ दिक्कतें आते हैं और क्या आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुभाष आरवान है, मैं जयपुर से हूँ। मैं जो रिसोर्सफुल मेंबर हूँ और जिसका नाम है स्वच्छता कर्मी संगठन, और मैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर दोनों के साथ मिलकर काम करता हूँ। और जो जीरो ग्राउंड पे जो पहले समस्या आती थी, जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनको, जैसे कि उनको पहले जैसे कि किट नहीं मिलता था, बिना किट के काम करते थे। अभी जो अभी उनको ये सब समस्या जो समाधान हुआ है, क्योंकि ये संगठन जुड़ा ना, तब से उनको ये समस्या निजात मिला है। पहले लेडीज़ कर्मचारी को जैसे कि किसी के घर में वो काम करती थी है साफ सफाई का, बट लेकिन उनको प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जैसे उनको वॉशरूम यूज करना है तो उनके साथ एक हीन भावना रखना, घृणा रखना, वो प्रॉब्लम अब शायद अवेयरनेस के चलते, जैसा कि ये संगठन जुड़ा, उनको अवेयरनेस लेके आए हैं, तो अब बहुत उस समस्या से निजात उनको मिलती जा रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पहले से जैसे आप लोगों का सपोर्ट बना है, अगर आगे भी ऐसा रहा तो जो भी समस्याएं जो चलती आ रही है वो उससे निजात पा ही लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ज्योत्सना जी ऑनलाइन है शायद। ज्योत्सना जी, थोड़ा सा बताइए अभी भी क्या क्या दिक्कतें आते हैं और आगे आप क्या करना चाहते हो। थोड़ा सा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट में कुछ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। सभी को जय भीम। मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ और सैनिटेशन लोगों के ऊपर मैं 15 से 16 साल से काम कर रही हूँ। और हम यहाँ पे बहुत सारा लोग सैनिटेशन ही काम कर रहे हैं, महिला और पुरुष। तो उन लोगों के साथ में जो भी दिक्कत हो रहा है, पहले से तो सभी को जानकारी है कि वो लोग जो मैला उठाने का काम कर रहे थे, पहले से जो लोग मैला उठाने के काम कर रहे थे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था और जात पात का भेदभाव भी रहता था। समाज में बैठने उठने के लिए भी दिक्कत हो रहा था, उनके साथ कोई भी अच्छा से व्यवहार नहीं कर रही थी। और उन लोगों को जो काम करने का तरीका, क्योंकि हम सुबह भी सुने थे कि जो लोग मैला उठाने के लिए काम कर रहे थे उनके सर पे भी मैला गिरता था, शरीर में आ जाता था। और उन लोगों को जो काम करने के बाद उनको पैसा मिल रहा था, वो अभी हम लोग को कुछ लोग काम करने के बाद उनको मंथली पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले से तो पुराना वाला कपड़ा और बासी जो जूठा खाना जो बच जाता है रात का, वो उन लोगों को सुबह काम करने के बाद दे रहे थे। ये बहुत सारा दिक्कत हो रहा था पहले से। तो अभी उनका सुधार हुआ, क्योंकि जिस समय हम लोग जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं अभी, पहले से उन लोग को नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। और बहुत सारा चीज जो वो लोग नहीं जानते थे, लोगों के पास जाकर हर चीज को जानने लगे। और कम्युनिटी में पहले अवेयरनेस नहीं था। हम लोग सिर्फ काम करने के बाद सब मिलकर सफाई कर्मचारी और सैनिटेशन का जो महिला पुरुष उन लोग का ग्रुप बनाए हैं, और वो ग्रुप में उन लोगों को बहुत चीज समझाने के लिए मिला और वो लोग सचेतन हुए। जैसे काम कर रहे थे, काम खत्म होने के बाद वो लोग घर आएंगे। काम खत्म करने के बाद घर आ रहे थे, यहाँ पे पानी नहीं थी उन लोगों का। ऐसे भी वो लोग खाना बनाएंगे, नहाते थे, लेकिन सीफार की माध्यम से हम लोग वहाँ पानी कैसे आप लोगों को सुविधा से मिल पाएगी, और आप लोग काम करने के बाद फिर अच्छे से कैसे साफ सुथरा होके आप लोग का घर में छोटे छोटे बच्चे को आप केयर ले सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। अभी उन लोग का हैंड वॉश का ट्रेनिंग भी दिया गया, कैसे आप लोग काम करके आएंगे, हाथ को साफ करेंगे कम पानी में भी, और
कम पानी में भी हम लोग कैसे उन लोगों के साथ हाथ धो के आप लोग साफ सुथरा होके आप लोग का बच्चों को भी आप अच्छे से केयर ले सकते हैं। ऐसे करके उन लोगों के साथ बहुत सारा ट्रेनिंग दिए हैं। बच्चों को एजुकेशन के बारे में भी ट्रेनिंग दिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ा लिखा नहीं करते हैं, जब उनका पेरेंट्स सुबह काम पर चले जाते हैं वो लोग घूमते हैं, तो घूमने के बाद उन लोगों को बहुत सारा खराब चीज वो लोग सीखते हैं, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे बच्चे से भी शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ऐसे उन लोग का कैरियर पूरी बर्बाद हो जाता है। तो अभी फ्री एजुकेशन भी बनाए हैं, जो पढ़े लिखे कम्युनिटी के बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और बहुत सारा महिला है, उनका हक कुछ नहीं जानते थे कि हम लोग कैसे राशन कार्ड बनाएंगे, लेबर कार्ड बनाएंगे, और लेबर कार्ड का क्या बेनिफिट मिलेगा, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट भी के बारे में भी इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो वो लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए, क्योंकि एक हेल्प डेस्क बनाए हैं जिसके माध्यम से हर महीना हम लोग हेल्प डेस्क के माध्यम से मीटिंग करते हैं, और कम्युनिटी के महिला लोगों को लेके भी मीटिंग करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जैसे उन लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। वहां पे 20 ग्रुप बना हुआ है। गवर्नमेंट के थ्रू से भी 20 ग्रुप को 3 लाख करके उनको लोन भी दिए हैं। कैसे रोजगार उनको बढ़ पाएगी, क्योंकि वो लोग तो पिछली वर्ग जाति होने के बाद कोई भी बिजनेस कर नहीं सकते, कि उन लोग का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई नहीं है। तो अपना कम्युनिटी में वो लोग छोटा मोटा ग्रोसरी का शॉप बना के सेलिंग करते हैं, का टिफिन का स्टॉल बनाते हैं, वो लोग सेलिंग करते हैं। लेकिन जो रोजगार होता है सुबह का टाइम पर वो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, आएंगे 10-11 बजे तक। वहां पे आने के बाद फ्री टाइम बैठते हैं, और कम पैसा में उनका घर नहीं चल सकता है। हस्बैंड काम करेगा तो उसका पैसा वो लोग शराब पी लेते हैं। तो ये रोजगार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सीफार के माध्यम से उन लोगों को हम लोग स्किल के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए प्लानिंग किए हैं। बहुत सारा महिला जो बैठे हैं घर पर, वो लोग टेलरिंग का ट्रेनिंग लेके कुछ काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारा लोग हैं जो शाम के समय पर काम करने के लिए जाते हैं, शौचालय में काम करते हैं या किसी के घर में काम करते हैं, और सेकेंड हाफ में भी वो लोग काम करते हैं। बहुत महिला जो जाते हैं स्वीपर का काम करते हैं, उन लोग को मंथली पीरियड से होता है, तो वो वहां पे घर नहीं है, कहाँ से वो लोग उनका मेंस पीरियड से जो एक्सचेंज करने के लिए अभी सीफार के माध्यम से हम लोग वहां पे बीएमसी भी साथ में है। पीएम्स के माध्यम से सीफार के माध्यम से मिलके उन लोगों का कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अभी चेंज चेंज करने के लिए भी रूम दिया है। और बहुत महिला जो लोग काम कर रही हैं, और उन लोगों को ऐसे दिक्कत में उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल रहा है, बीएम्स के माध्यम से भी बातचीत करके उन लोगों को 2 छुट्टी मिल रहे हैं हर महीना, इस मंथली पीरियड के समय पर। उसके बाद उन लोगों को सैलरी भी बढ़ रहा है, और हर महीना वो लोग कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, उनका सेफ्टी किट के बारे में भी जानकारी मिला। क्योंकि वो लोग जो मैला उठाने के लिए काम कर रहे थे, ये 2013 में जो एक्शन हुआ है कि कोई डायरेक्ट टांकी के अंदर में जाके काम नहीं कर पाएगी, तो उसको रोकने के लिए सीफार के माध्यम से सैनिटेशन लोगों को सेफ्टी किट पहना के कैसे काम किया जाएगा। और बहुत सारा 750 सैनिटेशन वर्कर को भुवनेश्वर में आइडेंटिफाई किया गया। उन लोगों को पहचान के लिए उनका एक गरिमा कार्ड मिला है, एक सैनिटेशन लोग हैं, और सेफ्टी किट पहन के आप लोग काम करेंगे। तो ये ट्रेनिंग सीफार के माध्यम से दिया गया है, और वो लोग सेफ्टी किट पहन के भी एक काम कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग पहले से जो काम कर रहे थे उन लोग को दिक्कत हो रहा था, वो ड्रिंक करके काम करेंगे, बिना सेफ्टी किट पहन के काम करेंगे, तो उनका शरीर में घाव बन जाता था और इन्फेक्शन होता था। कभी सीवर लाइन टूटने के वजह से वो लोग कम उम्र में डेथ भी कर रहे थे। अभी ये दिक्कत वो था, लेकिन अभी जो हर चैलेंजेस हैं वो लोग सेफ्टी किट पहनने से काम करने से उनको अच्छा सुविधा हुआ है, और बीमारी जो होता था उनसे भी वो लोग बच रहे हैं। थैंक यू ज्योत्सना जी। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अपने में भी अभी भी और मेंबर हूँ। उसके बाद वो लोग जो अभी हम लोग को जो लोग सैनिटेशन वर्कर काम कर रहे थे, उन लोगों को हेल्थ के ऊपर में ज्यादा
प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग कम उम्र में डेथ हो रहे हैं। सीफार के माध्यम से हर महीना हेल्थ केयर बनाते हैं और हेल्थ में उन लोगों को हर महीना ट्रीटमेंट होता है, तो उनसे भी बहुत सारा बीमारी से वो लोग बच रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी बस हमारे पास 2 ही स्पीकर्स बचे हुए हैं, हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नफीसा जी, आप थोड़ा बताइए। माइक, कैन वी हैव द मैं माइक? दे रहा हूँ माइक। ओके। टाइम कम है, बट प्रॉब्लम टाइम की बात नहीं है, जो बोलना है हाँ। आप अपनी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम नफीसा है, मैं जयपुर से हूँ। मैंने पानी के ऊपर बहुत काम किया है अपनी बस्ती को लेकर, और दूसरी बस्तियों से जुड़कर मैंने फाउंडेशन लेवल पे काम किया है। उस काम से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और मेरी गली से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे भी। और कोविड के टाइम भी मैंने बहुत काम किया है लोगों को लेके। मेरी बस्ती में बहुत परेशानियाँ थी कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने अपनी हिम्मत से काम किया बस्ती में खड़े होके सिफार के साथ में। और दूसरी ये कि मेरी बस्ती में बहुत जैसे शौचालय नहीं होते हैं ना, तो गंदगी बहुत होती थी हमारे यहाँ, और जगह इतनी थी कि कूड़े का अंबार बना हुआ था। तो हमने जब हिम्मत बंधी, हमने जब कोविड पे काम किया और हमारी बस्तियों से पानी को लेके काम किया, तो हमने इस पर भी काम किया कि इस सफाई को मतलब अच्छे से सफाई करवा के यहाँ पे एक सुलभ शौचालय बनाया जाए। और वो कैसे बनाया जाए, वो हमारे यहाँ पे एक सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात करके बड़े लोगों से, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम तो छोटे, इनसे और भी बड़ी बड़ी उम्र की हैं हमारे यहाँ लेडीज़ें हैं, उनसे बात करके बोले कैसे करें। फिर सिफार से बात की, फिर नगर निगम से बात की। उन्होंने कहा अपने एरिया का एक नक्शा बनाओ, हमें बताओ, वो एरिया हमें बताओ। हमने वो एरिया बनाया, तो आज वहाँ सुलभ शौचालय बना हुआ है। और जो लोग बाहर जाते थे ना, वो उसी में जाते हैं। आज हम उसकी ना मॉनिटरिंग भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, हमारे यहाँ शादियाँ रोड पे होती हैं और बहुत गंदगी फैल जाती है, उसके लिए हमारे यहाँ पे ना एक शादी हॉल भी बना है। तो मैं जो काम कर रही हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ इस काम को आगे लेके जाऊँ और बस्तियों से लोगों से जुड़ूँ और इस काम को अच्छे से मजबूती से करूँ मैं, और उस काम का फ़ायदा सभी को मिले। और मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए सिफार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये सिफार हमारी हिम्मत बढ़ाता है, इस तरीके से हमें मीटिंग में ला करके, हमें हिम्मत नहीं है इस तरीके से बोलने की, मगर हमारी हिम्मत बढ़ाता है। थैंक यू सबको। थैंक यू, थैंक यू। लीलाधर जी, आप थोड़ा सा बड़ी बोलिए कि आगे क्या करना है। आपने जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रहे हैं। नमस्कार सभी पैनलिस्ट जो पैनल पे बैठे हैं और जो मेरे को सुन रहे हैं। एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ और हमारा एक सीबीओ बना है आत्मनिर्भर सशक्त जीवन। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ सीफार के वर्क को लेके, और मैं ये चाहता हूँ कि जो 86 to 100 लोग उस सीबीओ से जुड़े हैं, और जो राजस्थान सरकार ने हमें सिंगल विंडो दी है, उसके ऊपर आज भी एक आदमी वर्क कर रहा है, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, बट लैक ऑफ फंड इज़ द प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन भी वी कैन से लाइक दिस। एंड मेरा तो बस अंत में सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं अगले 3 साल में लगभग 86,000 दिव्यांगों में अगर सीफार खड़ा कर सका तो मैं कुछ कर सका, अदरवाइज मेरे कुछ करने का भी वो नहीं है। बिकॉज मैं इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि रियली मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे को पहले से भी बहुत कुछ आता था, ऐसा कुछ बात नहीं है, बट कुछ एक इशू ऐसे हैं जिनको वास्तव में मेरे को सीफार ने बताया, लाइक ट्रांसजेंडर, लाइक पीरियड। ये क्योंकि जब हमारी माँ या बहन ऐसे होती थी तो सब ये बोलते कि हमें कौवा छू गया, हमारे लिए तो वो कौवा ही छू गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक द सैनिटरी पैड इन दैट रूम, जो हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूम दिया गया है, उस रूम में
क्योंकि बिकॉज जब मैं बात करूं टारगेट मार्केट की, तो पास में ही एक महिलाओं का आश्रम है, उसके पास में ही एक किशोरियों की एक रहने की जगह है। तो आई थिंक 3000 के आसपास फीमेल हैं, दे आर माई टारगेट मार्केट। तो मैं अगर उसको रन करूंगा तो मैं उसको चला ही दूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि वास क्लाइमेट ये प्रॉब्लम्स तो है ही है, बट इससे ओवरकम, इससे आगे आने के लिए हमें रोजगार चाहिए। दैट इज द पॉइंट। रोजगार है तो हम किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। और सीबीओ इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तिनके से तो कभी कम रूम साफ नहीं होता, पर पूरी झाड़ू से तो कमरा साफ हो ही जाता है। तो अगर हम 86 आदमी कहीं पे गए तो हमारी बात को सुना ही जाएगा, इग्नोर तो नहीं किया जाएगा। हो सकता है एक बार कर दे, दूसरी बार चले जाएंगे, तीसरी बार चले जाएंगे, चौथी बार तो होगा ही होगा। तो बिकॉज मैं पॉजिटिव हूँ और फुल्ली मैं डेडिकेटेड भी हूँ अपने वर्क के लिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग थोड़ा सा बैठे रहिए क्योंकि हम लोग थोड़ा फ्लोर ओपन करेंगे कुछ डिस्कशंस के लिए, बाकी एक्सपर्ट से भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू द कम्युनिटी लीडर्स, यू आर वेलकम। सो आई विल आस्क। Okay, okay. Right. Okay. So we'll have a cross-learning session right now, and we'll ask our experts who is present in the auditorium today to shed some light on their respective work. Yeah. So having understood the discussions happened, आज हमने जो इतना सारा पैनल्स डिस्कशन में थे और बहुत सारे चीज़ें सुने हैं, हमारे सामने बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लाइवलीहुड से जुड़े हैं, जेंडर से जुड़े हैं, अलग अलग मुद्दे पे। डेटा पॉइंट में मैं राजीव को रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ रिस्पॉन्ड करें। अखिला मैम है हमारे सामने, रिस्पॉन्ड करें। और हमारे साथी हैं राजेश है, राजेश भी हैं, मैम भी हैं, आप भी हो, बहुत सारे हैं, सर भी हैं, सो मनूर जी हैं। तो मैं एक एक के पास आना चाहता हूं कि आप थोड़ा रिस्पॉन्ड कर सकें। मेरी तरफ से सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सबीना दीवान है और मैं एक संस्था जस्ट जॉब्स नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हूँ जो लाइवलीहुड्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहले मैं सीफार को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने ये इतना अच्छा काम किया है और कम्युनिटी से जो आपने लोगों को बुलाया है टेस्टिमोनी देने के लिए, और इससे हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगी, मेरे को इंग्लिश में थोड़ा आसान पड़ता है। मुझे ये लगता है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस के अलावा जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि एक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हम लाइवलीहुड पॉलिसीज़ की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब लोकल लेवल पे होता है। और ये लोकल लेवल पे कैसे होता है ये सब हमें आपसे सीखने को मिला। आई थिंक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रहते हैं। लोग जब लाइवलीहुड्स के बारे में बात करते हैं, अभी बजट भी निकला है, हम बहुत मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि इकोनॉमीज़ जॉब्स कैसे क्रिएट कर रही हैं, हाउ आर जॉब्स बीइंग क्रिएटेड एट द मैक्रो लेवल। बट लोकल लेवल्स पे कम्युनिटी रेडियो लेके लोकल लेवल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ओनरशिप SHG ग्रुप्स के थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप कैसे फॉस्टर किया जाता है और लोकल सॉल्यूशंस, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, उसी से लाइवलीहुड्स आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये लास्ट सेंटेंस मेरा होगा, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और लाइवलीहुड्स की बात करते हैं तो आई थिंक हमें ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस को कोडिफाई करना है कि ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। जो हमारे यूनिसेफ के स्पीकर थे उन्होंने स्केल के बारे में बात किया। स्केल पूरे भारत में एक पॉलिसी, एक इंटरवेंशन करके नहीं होता। स्केल होता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, बार बार लोकल कॉन्टेक्स्ट में रेप्लिकेट करने से हम कितने लोगों के पास लाइवलीहुड्स ला सकते हैं, बेटर क्लाइमेट रेजिलियंस, वॉश एंड आउटकम्स ला सकते हैं वनरेबल पॉपुलेशंस के लिए। सो इस तरफ मेरा दिमाग अब जा रहा है। और थैंक यू अखिला मैम और
जूही जी और बाकी आपके सीफार के साथियों। थैंक थैंक यू सो मच। राजेश। हाँ, बहुत छोटा। एक तो देखिए, आप सब लोगों ने कहा कि आप लोग सीएफआर का धन्यवाद कहते हैं, आप लोग सीएफआर का हिस्सा हैं। आप ये मत बोलिए कि हम सीएफआर को धन्यवाद कहते हैं। सीएफआर का आप हिस्सा हैं। ये प्रोजेक्ट हो ना हो, कम्युनिटी वहाँ है, तो सीएफआर वहाँ नहीं भी तब भी आप लोग हैं। मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आप सब लोगों से। आप सब लोगों ने कहा हम पानी टेस्ट कराते हैं और जाके बोलते हैं कि यहाँ पानी आता नहीं है, और वो लोग पानी आके चालू कर देते हैं। तो ये इतना आसान है क्या? मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि पांचों लोगों ने जो बोला कि आप आए सीएफआर के पास, आपने क्या रवि जी को बोला जयपुर में कि चलिए पानी चेक कीजिए, वहाँ चलते हैं और हो गया सबका। तो ये इतना आसान है क्या? ये मुझे जानना है थोड़ा सा, मतलब किसी से भी इतना आसान है क्या? नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है, मैं जयपुर से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है, मैं जयपुर से हूँ। हमें बहुत समस्या आई है। हम 2018 से जुड़े हुए हैं सीफार से। जैसे ये जो पानी है, शौचालय है, साफ़ सफाई का मुद्दा है, ये आसानी से बहुत नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमें बस्ती में भी जाते थे हम सर्वे करने के लिए, तो कई लोग तो बोलते थे हमें नहीं चाहिए, आप लोग तो ना खुद का काम बनाते हो और पैसे के लिए आप तो यहाँ पे आके हमारे को समझाते हो। ये हमें 10 बातें सुननी पड़ती थी, हमें मोहल्ले वालों से भी, और काफ़ी कोई लोग कुछ भी बोल देता था। जब हमने 2018 में सर्वे किया पहली बार स्वच्छता मिशन के तहत, तो हमें मतलब क्या है, जैसे ये हम गए वहाँ पे बस्तियों में, तो बहुत से मुद्दे निकल के भी आए वहाँ पे से। जैसे बोला लोगों ने कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, पहले हमारे पानी की समस्या को हल करवाइए, फिर हम आप लोगों की बात सुनेंगे। तो हमने ऐसा बोलो, हमें ना जो सीफार से सिंगल विंडो पे गए, तो हमने मधु मैडम से इनसे बात करी कि मैडम हमें ये समस्या आ रही है बस्तियों में। तो उन्होंने फिर हमें आ रही है ना जो मीटिंग में करवाई, नगर निगम को बुलवाया, पानी विभाग से वालों को बुलवाया, फिर हमने सब लोगों से बात करी, हमारी महिलाओं को बुलवाया, फिर हमने सारी समस्याओं का हल वहाँ पे जो रखा, तो फिर सारी समस्याओं का हल निकल के ये आया कि हम अब सब लोग मिलके और बस्ती में काम करेंगे। सर तो इसका जो जवाब है, सर पहले तो न जो पीएचडी ऑफिस है ऐसे ही नहीं, उन्होंने जो पानी न जांच कराई है, हम उसके एक तो मतलब हमारा हक है कि हमारा जो पानी है हम तक स्वच्छ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा हक है कि हम पीएचडी ऑफिस जाएं, और वहाँ जाएंगे तो वो भी मानेंगे कि पहले वो पूछते हैं कि आपका बिल है कि नहीं है, बिल आप पैसा जमा कराते हो कि नहीं कराते हो। अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो हमारा हक है वो ज़रूर करेंगे, वो मना नहीं कर सकते। अगर मना भी करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम बिल पैसा देते हैं पानी का, तो आप इसका टेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर गंदा पानी सीवर का पानी गंदा मिलके आ रहा है तो इसको टेस्ट कीजिए और इसको सफाई कराइए, उसका वहाँ पर सही कराइए उसके लाइन को। तो ये वहाँ पर ये काम होता है हमारा। अगर कहीं बोरिंग का पानी है तो ये भी कहीं ना कहीं जानकारी हमको होती है कि चाहे सीफार के माध्यम से हमको जानकारी है, तो हमको यहाँ जानकारी होती है कि हाँ जहाँ पर बोरिंग का पानी है वहाँ पर टेस्टिंग होना ही है। उन पीएचडी ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो पानी को टेस्ट करे। तो वहाँ पर भी हम, क्योंकि वो जो पानी है नाइट्रेट है, फ्लोराइड आ रहा है उसमें, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखिए ये पानी इस तरीके से है, आप इसका टेस्ट कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी उनकी हेल्प करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो जिस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो हम भी उनको साथ में कम्युनिटी में जाकर विजिट कराते हैं उनको, सर ऐसे नहीं इस काम को ऐसे कर सकते हैं, तो उनके भी समझ में आता है, तो वो हमारे साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे का जो तालमेल जो बैठता है, जब भी वो हमारी बात सुनते हैं, ऐसे तो कोई नहीं सुनता है सर।
आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, उसके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार सभी को। मैं मोहम्मद नूर आलम मार्ग एनजीओ से, और राजेश जी की बात और आपकी बात और आप लोगों की बातों को ही मैं बढ़ाते हुए कहूँगा। पहली बात तो ये कि आसान तो सर बिल्कुल नहीं होता है ये, और मैं बधाई दूंगा सीफार ऑर्गेनाइजेशन को कि इन्होंने 7 साल में इसे अचीव कर लिया। एक बार जोरदार तालियां तो इनके लिए बनती है। वो इसलिए कि हमने भी ऐसे ही सिमिलर एक प्रयास किया था, और हमें कम से कम मैम 10 से 12 साल लगे थे। तो आपने 7 साल में किया, 5 साल पहले किया। एक दूसरी चीज़ मुझे ताज्जुब होती तब जब आप कुछ और बात रखते, लेकिन लास्ट में जो सर लोगों ने बात रखी या सभी ने कहा कि लाइवलीहुड कॉम्युनिटी वर्क जब भी करेंगे, जो भी लोग करते आए हैं अब तक, उनका भी अनुभव शायद ऐसा ही रहा होगा कि जब उन्हें अपने अधिकार की जागृति हो जाती है, जब वो अपने अधिकार समझ लेते हैं और फिर प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करना आ जाता है, तो फिर उन्हें बेहतर ज़िंदगी जीने की आशा बनती है। और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए फिर तो भाई पैसे चाहिए, और पैसे सतत आने चाहिए, और वो लाइवलीहुड से ही आएगा। तो लाइवलीहुड का जो आपका सवाल आया है, ये इस परियोजना को सक्सेसफुल होने का एक इंडिकेटर है मैडम। हमने भी जहाँ पे एक सावदा खेड़ा स्लम रिसेटलमेंट कॉलोनी है, और वहाँ प्रयास किया, बहुत टफ सिचुएशन था वहाँ पे, तब इस तरह के हालात नहीं थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दे दी है, और उसको बस लागू करवाना है फॉलोअप करके, जैसा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे लगा था कि आपकी तरफ से इस जवाब नहीं आएगा, और आज जवाब आया। मुझे लगा था सीफा ने बहुत मेहनत की आप लोगों के पीछे। तो उसके बाद भी वहाँ पे भी अब महिलाओं का सवाल होता है कि लाइवलीहुड भैया, अगर लाइवलीहुड हो जाएगा फिर अपन दोनों काम करेंगे। मतलब पहले पानी नहीं था तो पानी का टैंकर पे पानी भर के घर लाती थी, हिंसा होता था, डोमेस्टिक वायलेंस भी था, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे थे, सफाई नहीं होती थी, यही था ना। पानी नहीं तो टॉयलेट में पानी कहाँ से यूज करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन अब चूंकि सॉल्व हो गया है, तो लाइवलीहुड का क्वेश्चन तो लेंगे। अब मैं इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई थिंक सबीना जी ने बहुत अच्छा मतलब उसको समअप किया कि बहुत सारे सरकारी योजनाएं तो हैं, स्किल इंडिया है और NULM है, बहुत कुछ है, सबने सुबह से बोला ही है, एक्सपर्ट लोगों ने कहा ही है। बट आपसे कैसे उसको सिनर्जाइज किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टफ टास्क है। ये जैसे होता है ना, जिन होता था उसको बोलते थे ये काम कर दो, वो कर देता था, लेकिन जब मैथमेटिक्स बनाने बोलते थे तो वो नहीं करता था, अगर याद हो ये कार्टून वगैरह में। तो उसी तरह से लाइवलीहुड है, इट इज़ रियली टफ चैलेंज। आई थिंक मैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा आपकी परमिशन से, कि आप इसको ऐसे सोचेंगे कि अब सीफार हट गया या सीफार वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होगा, तब कैसे, तब सस्टेन कैसे कराएंगे इसको। एक तो मंत्रा अगर लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ। एक तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इनका RTI पे ट्रेनिंग करा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूर किया होगा, और नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक इनका ऐड कराइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, समय समय पर सवाल पूछते रहिएगा। कुछ सवाल ऑलरेडी उनके वेबसाइट्स पे होते हैं, सेक्शन 4 के तहत कुछ सवाल जो है आप पूछिए। आपके सवाल पूछते रहने से जो सुविधा मिली है आपको वो बची रहेगी, और फिर सवाल आपको पूछना पड़ेगा जो आपके जनप्रतिनिधि आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, समय समय पर उनसे पूछते रहिएगा। जैसे प्रधान जो सुबह में कह रहे थे कि एक दीदी वहाँ बैठी थी, कह रही थी कि उन्होंने मेयर का जो वार्ड मेंबर होता है वो कह दिया अब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलने दीजिएगा उससे सवाल पूछिए, उसको RTI लगाइए। और प्रश्न पूछ करके करेंगे क्या, आप जब सवाल पूछेंगे तो उनके अंदर ये समझ तो ज़रूर रहेगी कि लोग हैं जो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सवाल अगर आंसर उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता, आप सीधे हाई कोर्ट लेके चले जाइएगा। आर्टिकल 226 है, हाई कोर्ट लेके जाइए, और आपको फ्री लीगल एड की जरूरत पड़ेगी तो मार्ग आपके साथ खड़ा होगा। हमारी कॉलोनी से 10 तो ये करके कम से कम इसे सस्टेन कराइए। और दूसरा लाइवलीहुड के लिए ये तो मेरे ख्याल से सबीना जी ऐसे एक्सपर्ट और राज जी ऐसे एक्सपर्ट लोग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी टाइम। विमला जी। नमस्कार सबको, मेरा नाम विमला कौर है, मैं जयपुर से हूँ। और अब बार बोलिया ने सर ने भाई कि मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, भाई इतना आसान कैसे है? आसान तो नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेगा तो ही होएगा, ऐसे कोई नहीं कर देगा। हमारे पानी का इतनी परेशानी है, हमारी बस्ती के महीने 1-1.5 किलोमीटर पानी बोरिंग है दूरदर्शन के पास। तो कितनी गर्भवती महिला भी है, बूढ़ी भी है,
मान लो कोई विकलांग भी है, पानी की बहुत परेशानी, तो जाए जाए उन्होंने जाता पानी भाग में, जल भाग में बटे जाता, कहता पार्षद साहब के पास जाता, भाई पार्षद साहब पानी की परेशानी है माँ के काई करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर भेज देता। टैंकर भेज देता तो टैंकर में भी लड़ाइयाँ होती, पाइप पटके पीने का पानी कौन रहता, कोई क्यान को पाइप पटके, कोई क्यान को पटके, तो वो पीने का तो रहता ही नहीं, मन ही नहीं मांगता, अपन क्या करे, पीना पड़ता। तो परेशानियां करता करता सिपार संस्था से मान लो हेमा मैडम मिली महाराज से, पहली ये यहाँ के ग्रुप गई ने मीटिंग करवाई तो मीटिंग में माँ ने समझाया, मैं क्यों मैडम माँ ने काय कौन सी काय की मीटिंग कराओ थे, वोट ले जावे लोग जा पर, अरे यार माँ ने तो वोट कौन लेना, मैं थाने वोट कौन लेना, नहीं तो माँ को एक ही वो पानी की परेशानी है आशा लेवे, नहीं तो माना मैं थाने, बोले ठीक है। तो ये लोग माने नंबर दिया, मीटिंग कराई, तो मीटिंग में मैं 80 हुएगा भाई नंबर, आज मेरे पास एन का, एक्शन का, जेन का, तीनों का नंबर है मेरे पास, संपर्क की ओर है और सबका नंबर है। और मैं एक बार 10 महिला लेके गई तो मैडम बोली यार बिमला जी आपको बोल तो दिया, अभी आपका लाइन डल जाएगी, आप क्यों बार बार में आओ। नहीं मैडम मेरे लाइन नहीं डलेगी जितना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। बोले कॉल कर दियो, और दोबारा गई तो 50 महिला ले गई एक साथ में, क्यों 10-20 रुपया किराए का है तो लागेला चलो। अरे वोट देने वाला इनसे ही काम नहीं होएगा तो यार क्या कर दोगे आपकी संस्था में, क्यों मेरी संस्था साथ है और चलो आप। हिम्मत करके गई, गया, फिर एन जैन हगलाई अलगा बोले गई या तो पाँचों कौन छोड़े, 4 बारी गया, आसान तो नहीं है, 4-5 बारी गया, फिर लाइन डली पानी की, लाइन डल गई तो कहीं वो पानी को ना आवे, जो ऊंचा एक मकान ऊंचा, एक मकान नीचा, एक मकान ऊंचा, एक गली ऊंची है, तो एक के तो फुल आ रहा है, 10 लोगों के तो 10 लोग ऐसे करता है खनखनाट, दूसरा के घर जाता है बांडा चरी लेके, अरे माका ही नहीं भरिया तो मैं थाको का दोबारा, अरे भाई एक पीबा को तो भरो, फिर भी सुविधा हुई पीबा जीती तो फिर टैंकर आता, फिर लड़ाई आती, एक जमेदार का पग कट गया टैंकर की वजह से, इतना रोड़ा आता पानी का, पूरा पग ही गया, जिंदगी बर्बाद भी की। फिर मैं क्यों काई करना मैडम, अबे बोले बिमला जी प्रेशर लाइन डलवा दूं, आप तो पाछा नहीं छोड़ोगे। मैं क्यों मैडम प्रेशर लाइन डालो चाहे 2 लाइन डालो, हमें पता नहीं, पानी चाहिए हमें, तो प्रेशर लाइन डलवा दी। अब प्रेशर तो आगे ही आगे भागे, और भी हंसका खाकर मोटर पानी चले, फिर भी पानी नहीं आयो। फिर मैं मैडम आप आपके अकॉर्डिंग काम मत करो, हम बस्ती वाला के वहाँ भी अकॉर्डिंग काम करो। कैसे? मैं क्यों गली गली में वॉल लगा दो, ब्रेक लगा दो, आगे जाके थोड़ी दूर आगे जाके ब्रेक लगा दो, एक गली का ब्रेक लगा दिया, अब वो एकदम 5 ठोकर का आवे नहीं पानी तो पानी आ जावे। फिर मैंने सर्वे किया गली गली में जाके, मैं कोई की टूंटी लागोड़ी नहीं है ना, उसकी कंप्लेन करूंगी, ध्यान कर लेना, पानी बहुत परेशानी आई है, टूंटी लगानी चाहिए, पानी को हिसाब से बरतना चाहिए, पानी बहुत मुश्किल से आई और आगे भी मैं यही उम्मीद करूं सबको कह रही हूँ, पानी ने इतना घी की तरह मारना चाहिए और पानी की इज्जत करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। Also, I would like to add one point. I think CFAR ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, कम्युनिटी ने उससे ज़्यादा टाइम CFAR को दिया है करने में. Exactly. So this is more important, and we can see that they have emerged as a partner in development. नहीं, आपके वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। एक बात मैं रखना चाहती हूँ, इसी वे अच्छा है कि उन्होंने पूरा कहानी आपको बता दिया। इतना मतलब सेटबैक, हर एक बार जाओ और दरवाजा पर बार बार जाओ, बार बार मतलब अपमान देते हैं, सब कुछ ह्यूमिलिएट देम, फिर उठो फिर जाओ। इसलिए ये वाला रिश्ता जो है ना सीफार और उनका, दरवाज़ा खोला दिया और एक मतलब रेस्पेक्ट के साथ बातचीत की। पहले वो नहीं होता था, करेक्ट, बंद कर देते थे कि नहीं मानना है, बात नहीं करना है, आपको जो है आप निकट में दे दो या उनके पास जाओ और उनके पास जाओ, मतलब उनको मतलब भटकना।
So I think that is the important lesson, you know, the role that the facilitating role that सिफारिश play, वो मतलब they are appreciating राजेश, they are not saying कि काम हमने किया है, कभी नहीं बोला है, correct? दरवाजा खुलाया, अंदर आने के लिए मतलब वो मिला, एक रास्ता मिला, that is all. बाकी सब काम आप लोग नहीं किया है. There's no question. It's only the facilitation. और सर ये बहुत सारी स्टोरियां हैं, अभी तो एक स्टोरी सुनाइए। जो 12 साल से एक्शन जिस निगम में रह रहा था, काम कर रहा था, महिलाओं से बोला क्या रोज रोज यहाँ आ जाते हो या पार्क समझ रखा है क्या, उसका ट्रांसफ़र करा दिया। हक है हमारा, हम आएंगे 10 बार आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरियाँ हैं सर। वेरी नाइस, ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा फेलिसिटेशन किया जाए हमारे कम्युनिटी लीडर्स को। थैंक यू सो मच। विमला जी आप भी आगे आप पधारिए, भी आ जाइए, आगे पधारो। यस यस। रोशनी जी इस तरफ आ जाओ। रोशनी, हाँ वो हमारे सर का है, 2 सर से भुवनेश्वर से। आज सर प्लीज़ आइए सर। एक और सर है बाहर बैठे हैं कियोस्क में। हाँ सर ये ए पे सर, आइए सर प्लीज़। सर आप आइए सर इस तरफ सर। ठीक है, प्लीज़ गो अहेड। आइए विमला जी। सर आइए सर। सर होगा क्या डकुआ सर, जो आंसर नहीं मिलता है उसको क्या। अरे सर कुछ नहीं कुछ नहीं, हम बात करें। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं जानता हूँ। ठीक है, प्लीज गो अहेड। या जोगल, आओ आप आ जाइए। नफीसा जी, हाँ, और सीमा, संतरा, It's okay, don't. जी हाँ, सो अभी क्या बोलूँ, सत्र के लास्ट अंक पे मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कैसे कहूँ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी कोशिश करूँगा। खाली नाम से मैं ऐसे बोलूँगा धन्यवाद, ये सब नहीं हो पाएगा। इतना सारा काम होने के जो मुख्य मूलभूत कारण है, जो हमारे कम्युनिटी, जो समुदाय है, जो अभी भी मैं उस बात में बात बोलना चाहता हूँ। आपके वजह से हम आज यहाँ हैं। भुवनेश्वर से, जयपुर से जो भी हमारे कम्युनिटी वहाँ से यहाँ आए, इतने दूर से, वहाँ से जो देख रहे हैं, उन सब को, हर एक कम्युनिटी लीडर को हम शत शत नमन करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो दिल्ली, हमारे जो दिल्ली टीम है, स्वीटी जी है, डैनियल है, नदीम है, मनीषा, अमृता, दिव्या पांडे, सबको हम बहुत बहुत, दीपांशु, राज सिंह, राजेश, कृष्णा जी, आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स टीम जो मेंबर्स है, वहाँ से राजेश जी बैठे हैं, दविंदर जी हैं, दविंदर जी की टीम से हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा हमारा जो मैडम है, उनके जिनके निशान निर्देश है हमारे जो काम होता है, हम बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं। अखिला मैम, thank you so much for bringing us here, for walking with us,
for guiding us, for actually being a torch bearer. I'm proudly say you always been a torch bearer for all of us. Thank you so much, ma'am. Daniel is here, and also our technical team, Narendra team and all, Pankaj, Vijay, Shivam, Narendra and his technical team. आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत मेल्स करके तंग कर दिया, लिस्ट बना दिया, प्रोफाइल्स करो, ये करो, वो करो, 24 घंटे काम कराया। जूही मैम कहाँ है जूही मैम? जूही मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी बहुत मेहनत किया है। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू दीपक, थैंक यू कुंदन, एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर किसी का नाम मैं भूल गया उसके लिए क्षमार्थी हूँ। सबके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक छोटा चीज़ है, आपका सबका फोल्डर में ऐसा एक स्लिप होगा, एक क्यूआर कोड होगा, 3 क्यूआर कोड होगा। उसको स्कैन किया तो फ़ोन पे भी कर सकते हो, पैसा नहीं जाएगा। उसमें एक लिंक जाएगा, उसमें एक सवाल आएगा, 3 सवाल होगा, उसमें एक चूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा 3 सवाल है, 3 क्यूआर कोड है, वो स्कैन करके आप प्लीज़ आपका फीडबैक दे दीजिए। सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना है। थैंक यू। तुम्हारा ही नाम ले दिया।